भाई डॉक्टर बना है, अच्छे से सेवा भी करनी है, अच्छा पैसा वैसा कमाएंगे, अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे, खर्चा वर्चा करेंगे और बस भाई डॉक्टर बना है, अच्छे से सेवा भी करनी है, अच्छा पैसा वैसा कमाएंगे, अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे, खर्चा वर्चा करेंगे और बस दैट इज लाइफ। आइडियल लाइफ क्या है? तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट, दैट वाज द मेंटालिटी। मेरे पापा ने मेरी दादी को बताया कि आज तू मेरे साथ चलता नेक्स्ट डे, और तू पूजा करती है भगवान की, शिव की पूजा करती है ना, तो मैं तुझे शिव से मिलाता हूँ, चल। There is some Baba and they are following him because Baba is God. My father-in-law used to say that Baba is God, and he was very much against the idea of imagining some Baba as God. व्यक्ति पूजा सबसे एक्सेप्ट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये जो कथा है सुनी है और ये सब, तो माइंडसेट होता ही है भगवान की बातें करेंगे, भगवान की लीला की बातें करेंगे, नॉट इज ऑल दैट। तो इसमें पता चला कि ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, एवरीथिंग लाइक प्रैक्टिकल टॉक, बाकी स्क्रिप्चर्स की बात ही नहीं आती है। तो स्पिरिचुअल प्रीचर इतना एग्जाम्पल दे के करे तो दैट वाज आल्सो सरप्राइजिंग फॉर। तो दिस वाज लाइक इट हिट ऑन योर माइंड कि भाई ये क्या था, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जो गुरु पूर्णिमा में पहली बार कदम रखा था और ये जो एक्सपीरियंस रहा था, मैं मन में एक बार तो मैं बोल गया था कि यार गलती कर दी इधर आके, जिंदगी में कभी भी अब इस आश्रम पे पाँव नहीं रखना है। He has spoken on that land and he is the trustee of that ashram now. कैसे आ गए, कहाँ से आ गए, वी डोंट, इस जन्म का तो नहीं है, इतना तो क्लियर पता है। स्वामी जी बोले कि हाँ मेरा भी देखो ना ऐसा ही है। मैंने क्या किया, ध्यान में बैठ के धीरे 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 मेरा ऑरा बड़ा किया, तो मेरा ऑरा है ना वो नींद के इंजेक्शन जैसा ही काम करता है। तो जैसे ही वो ऑरा जाके वो साधिका को टच हुआ और वो ऑरा के अंदर आ गई तो तुरंत शांत हो गई। और वो मैंने स्वामी जी को ये रिप्लाई किया कि गुरु कृपा से कोई तकलीफ नहीं है हुई है स्वामी जी, सब कुछ अच्छा है। तो तभी स्वामी जी ने रिप्लाई किया कि तुझे इसलिए तकलीफ नहीं हुई क्योंकि तकलीफ मुझे हुई। आई वॉज स्पीचलेस। क्लिनिक स्टार्ट किया हुआ मेरा बस साइड में इट वाज देयर, वो उल्टा हो गया था। तभी हम लोग बात भी करते थे कि भाई क्लिनिक स्वामी जी संभाल रहे और स्वामी जी के डॉक्टर शिविर में ये संभाल रहे हैं। उस वक्त जैसे कहते हैं ना पागल की तरह हम दौड़ रहे थे, पता नहीं कौन सी चीज हमें, कौन सा फोर्स हमें लग रहा था। Anyone is inviting us now that I told them that you organize one workshop or talk for professionals or anything, we will immediately come. Otherwise we will not be able to have any free time. Someone calls us for Gurukarya, we go dode. Yes, Jai Baba Samil. Let's play this trailer before we start. Thank you, Swamiji. Jai Baba Swami, Jai Atmeshwar.
On behalf of Global Samarpan family, we welcome all divine soul to today's session. This is Samarpan session. We are excited to bring you a very special guest couples, Dr. Munira and Dr. Dhaivat Mehta from Kutch, Gujarat, India. Let's enjoy the Guru Chaitanya consciousness flowing through this soulful conversation. But before we go further, a few house rules. Please put your phones on silent and WhatsApp calls on mute. Please turn off your audio video until the interview begins. We will announce and invite you to speak. If you get disconnected, please join back and please message one of our teammates personally. We will make you co-host so that you have privileges to mute and unmute. For our audience, we request you to please turn off your videos so we can have a better bandwidth to enjoy the program. And during this session, if you have any questions, please share them in the chat. We will collect the questions and address them at the end of the session. Please note that we are live on YouTube and the link for this is going to be already shared on the Zoom chat. Please share it with friends and family whom you think might benefit from it. Thank you very much. Now I would like to invite Surbi for the next part. Jai Baba Swami. The only objective of this is Samarpan is connecting all living beings of present times. The information and opinion shared here by anyone are personal view of the speaker and are not officially associated with any social, religious, cultural, political, educational, or other organization. We are here to be inspired on how to go back to our original nature of pure soul or Holy Spirit. By no means we intend to offend someone or hurt anyone's emotion. We support understanding of any subject based on one's own experience rather than relying on any second-hand online or bookish information that encourage baseless ideology or superstitious belief. Please accept our soulful love or atmiyata and disregard any information that you do not agree with. Jai Baba Swami. I would like to invite Zurika ji for the next. Jai Baba Swami. Himalayan Samarpan Meditation. This is the foundation of this beautiful program is Himalayan Samarpan Meditation. It is authentic and simple meditation practice based on Guru Sanskars or values of Guru. It has been practiced since last 800 years in the Himalayas by yogis, ascetics, sages, and was first brought into the society by Sri Shiv Kripananda Swamiji in 1994 for the benefit of the common people like us. By the grace of those Himalayan Gurus, today Himalayan Samarpan meditation is practiced by millions of people in more than 50 countries in the world. Surprisingly, Himalayan Samarpan meditation is offered totally free to anyone without any barriers of nationality, religion, race, gender, color, caste, and language. Himalayan Samarpan meditation is made of 3 words. Himalayan because it comes from Himalayan Gurus. Samarpan means letting go of negativity, of the ego, of thoughts, of the past or future, and of any expectation or attachment. Meditation is naturally allowing our self-consciousness to merge into the universal consciousness without any effort. HSM helps us to live life in a balanced state of mind with optimal body health to achieve overall progress while growing spiritually. You will also hear us saying Jai Baba Swami or Jai Atmeshwar. This reminds us all that we are connected with one unseen thread of our Master, Baba Swami, and we bow down to the soul inside you.
And Jai Baba Swami, so we are very fortunate and blessed to have today two beautiful soulmates who have been doing amazing Gurukarya. Let me introduce Dr. Dhaivat Mehta and Dr. Munira Mehta. Dr. Dhaivat was born in Vishnagar, Mehsana, North Gujarat, in a highly educated and spiritually focused family. Maternal grandparents were devotees of God Dattatreya, and paternal grandfather followed Pramukh Swami Maharaj. He completed his MBBS and post-graduation from Government Medical College, Rajkot. Currently, Dr. Dhaivatji is serving as consultant psychiatrist at Atmiya Hospital, Gandhidham, and he's also vice chairperson at Samarpan International Medical Group. Dr. Munira was born in a family of Swaminarayan followers, and she also has two elder brothers. She used to participate in extracurricular activities like singing and sports, and excelled in studies with the least effort. She did her MBBS from Government Medical College, Rajkot. Currently, she has her own lab and is also a visiting consultant microbiologist and infection control specialist at other private hospitals. They were introduced to Samarpan meditation through Dr. Dhaivatji's parents and visited Samarpan Meditation Center at Rajkot to please them. They also attended the 8-day video shibir where Dr. Munira had beautiful anubhutis. So to learn more about their spiritual journey, let me call Hitendraji to start the interview. Jai Baba Swami, Jai Atmeshwar. On behalf of our global Samarpan family and our Gurudev, Sri Shiv Krupanand Swamiji, I would like to invite Dr. Munira and Dr. Dhaivat Mehta to our This is Samarpan platform. Welcome. Very beautiful introduction, Zurika ji. Thank you very much. And I believe in Samarpan family, we are always bonded together with soulful love. That soulful love is nothing but what we call in Sanskrit Atmiyata. Atmiyata or soulful love is beyond what we know as love in the society or in the world, in the sense that when your love is totally unconditional, when your love is only for supporting each other in helping each other to progress spiritually, that is the Atmiyata, that is the soulful love, that is what creates the harmony on the earth, that is what has given the spiritual revolution on the earth from animal-like creatures to human-like creatures who we are. When that soulful love springs between two beautiful souls, these soulmates become reason for bringing love, joy, peace, harmony, not just in their own personal life, not just in their close family, but in the entire world. Today, we are going to meet such beautiful soulmates. ये प्रेमी पंछियों को मिलते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं कि यार ये इतना खुशी भरा मुस्कान भरा चेहरा आप कैसे बनाए रखते हो 24 घंटे के लिए। आइए दैवत भाई अपने ध्यान में से जागिए। कुछ बात करते हैं, कुछ मजा जय बाबा करते हैं। स्वामी, जय आत्मेश्वर, नमस्कार। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर, वेलकम। Thank you, So, thank you so much. थैंक यू। बहुत सारी बातें करनी है और क्योंकि इतनी सारी बातें हैं, इतना सारा गुरु कार्य है, इतना सारा प्यार है इन दोनों के पास, हमने सोचा कि ये तो जैसे
बाय वन गेट वन फ्री जैसी बात है। तो सैटरडे के टीआईएस को संडे में भी थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। ऐसी बहाने लोगों को आपके साथ बात करने का, आपको जानने का थोड़ा मौका भी मिलेगा। और इतना सुंदर कार्य हुआ है उनके हाथों से कि किसी को भी प्रेरणा मिल सकती है। क्योंकि समर्पण पंथ ऐसा है जहां पर गुरुदेव ने युवा साधक साधिकाओं को प्रेरित किया है। समर्पण ऐसा है जहां पर गुरुदेव ने युवा लोगों को ध्यान मार्ग में जोड़ा है, जो समाज में ऐसी मान्यता थी कि ये बूढ़े लोगों के लिए है। तो ऐसा एक युवा मेडिकल स्टूडेंट्स के माइंड में क्या चला, कैसे चला, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। धैवत भाई, क्या मैं आपसे शुरुआत कर सकता हूँ? यस। तो अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में, अपनी आध्यात्मिक जिंदगी के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। समर्पण ध्यान में आने से पहले आपके जीवन में सब कुछ कैसा था, आपका बचपन कैसा था, पढ़ाई कैसी थी, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। Yes. So, first of all, I would like to start by thanking our organizers, the team, Hitendraji, TIS team. You have conceptualized such a wonderful series, and you have invited us today as the guests. So we could actually like talk about our life with you. हम डिस्कस कर ही रहे थे, लाइक आई वाज टेलिंग हर कि इतने सारे सेशंस हुए, प्रोग्राम्स हुए, ऑनलाइन सेशन हुए, बट दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। प्रचार कार्य तो बहुत हुआ, लेकिन अपनी बात जो बताने की हुई, लाइक वी थिंक दैट यू हैव ऑनर्ड अस, दैट आवर लाइफ इज आल्सो वर्थ स्टडिंग, worth listening to, and it can be inspiring to other sadhaks and other people. So thank you once again. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Yes, your question, the personal life. So very beautiful introduction was given. I would like to add to it. I am the only child of my parents. I was born in my native Visnagar, Mehsana, which is in North Gujarat, a western province in India. So I was fortunate to be born in the motherland of spirituality in this birth. Or about the family, which I would say, actually I was born in Visnagar, but our home, our residential place was Gandhidham in Kutch district of Gujarat. How did we come to Kutch? That is a story about my grandfather. He migrated from our hometown. He was basically a teacher. He got promotion as a principal and he migrated to Kutch. Kutch is a barren land, a desert land. And since 3 generations, my grandfather, father, and I, we are in Kutch in Gandhidham. My childhood, I think you will have a good estimate about how it was by telling you about my family members and their vocations. My grandfather, a teacher and a principal, his subjects were English, literature, civics. My grandmother, she was a teacher and her subjects were mathematics. My father, a chemical engineer, and because he was an engineer, you can infer that he would teach me sciences. And my mother, she is also a teacher, and she taught the vernacular local languages, Hindi, Gujarati, and Sanskrit. So my home, it was a school in itself, I think, because everyone was a proficient teacher and everyone had different subjects. So most of my childhood, I was raised to be a good academically sound person. The only job, the only thing to be done was to study, to gather knowledge, to excel in the academics and pass out with flying colors. In India, here we have the system of examinations, the government board examinations in grade 10 and grade 12. So like every good student, they have only one dream, excelling in their board examinations and coming out with flying colors, getting admission in top-notch colleges, in top-notch courses, becoming either a doctor or an engineer or giving civil services, going in administration department. So this was the
atmosphere in the house where I grew up. I was basically a very shy person, very introverted, and because of the influence of everyone in the family, you could guess that I was an avid reader. Reading was considered to be the best pastime, and learning from the great people who have written down books their whole life. So, my grandfather and all the other people, they imbibed reading into me. All of them, they were good readers, good thinkers because they were educationalists. So, if you give me a choice to spend a day with books or with the people, I would naturally choose to spend the day alone with books. So that was me. And I used to, it's a very fortunate thing that I got the opportunity to actually learn in my school under my family members, also my mother, my grandfather. So it was like a very funny situation going to the school together and having your family member coming into your classroom as a teacher, learning from them. Uh, and I dare not ask anything, even if I had doubts. I used to come back and ask at home. I was a very sincere, very silent classroom student. You could never hear me in the class. So that was my schooling, and I enjoyed it definitely. Yes, because they were educationalists, the family members, they also promoted the co-curricular activities, like taking parts in elocution competitions, in extra examinations, in artistic craft work, drawing exams, in languages, essay writing competitions, and everything. And I have a very big, huge collection of participant certificates and achievement certificates. And the thing which I was proud of in my childhood was that a good compilation of my certificate. Even today, like it's good to see that with the help of my family members, I achieved so much in my life. They made me who I am because I see many people they are self-made, but I would like to add my family members as the most important people in my life for making the base. That was the base which further helped me to, like, after exploring Samarpan, also to progress in Samarpan, progress in Gurukarya, progress in my profession, and today sitting with you, a team of international experts, and talking with you. Yeah, so that was my childhood. That's a beautiful story to learn from. तो थोड़ा मैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों बहनों के लिए भी हिंदी में बात कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे सबको साथ में लेके चलना है, ये ग्लोबल परिवार है। सबसे पहले तो आपने टीआईएस टीम को इतना धन्यवाद दिया, लेकिन मैं ये कहता हूँ हम सिर्फ गुरुदेव के माध्यम हैं, और ये टीआईएस का प्रोग्राम किसी व्यक्ति का नहीं, लेकिन गुरु का दरबार है। तो यहाँ पर जो स्वामी जी का प्रवचन सुनते हैं, उनको एक बात सीखनी मिलती है कि गुरुदेव बार बार कहते हैं कि एक एक साधक के पास लंबी लंबी किताबें लिख सके उतनी अनुभूतियां हैं। और स्वामी जी कहते हैं कि जब तक हम सबके बीच में आत्मीयता नहीं होगी, तब तक सच्ची आध्यात्मिक क्रांति नहीं हो सकती, तब तक हमारी स्थिति एक व्यक्ति से आत्मा के स्तर पर नहीं पहुंच सकती। गुरुदेव कोई ऐसा धर्म या पंथ चलाने के लिए नहीं धरती पर अवतारित हुए हैं। गुरुदेव इसलिए जन्म लेकर आए हैं कि जो परमात्मा का स्वरूप उन्होंने 800 साल पहले अनुभव कर लिया था, वह अनुभूति वो समाज को देना चाहते थे, लेकिन उनके गुरु ने उस वक्त पे ये कहा था कि हाँ, तूने पा लिया, लेकिन यह कार्य को देने के लिए अभी तक 1 से 1 तक का ही मार्ग सही है। 1 से 1000 या लाखों तक पहुंचाने वाला मार्ग आने वाला है। उस समय की शुरुआत 2000 से शुरू हो गई है, और
जब हमें मिला है इतना सुंदर, इतना अमूल्य आत्म जागृति का बीज, जो सिर्फ हिमालय की वादियों में, उस गुफाओं में सीमित रहता था, और जो लोग वहां पर जाकर कभी वापस नहीं आते थे, और आते थे तो वह बीज उसी रूप में लोगों तक नहीं पहुंचता था। आज श्री शिव कृपानंद स्वामी जी की वजह से समाज में हमें वह बीज वैसे का वैसा ही मिला है, और एक सामान्य आदमी जो आप और मेरे जैसा हो, जिसने कई पाप किए हो, कई गुनाह किए हो, कई बुरी आदतों का शिकार बन चुका हो, वह इंसान भी ध्यान के मार्ग से अपनी आत्मा तक पहुंच सकता है। ये बाहर की यात्रा नहीं है, ये भीतर की यात्रा है। तो गुरुदेव ने हमें भीतर जाने का रास्ता सिखाया, और गुरुदेव ने हमें बाहर की ओर देखने की जगह पे भीतर देखने को सिखाया। जब मैं भीतर गया जब मैं भीतर गया तो मैं भी तर गया। When I went inside, I was able to cross the Bhavsagar. I was able to go across all the problems of my life. This is what Swamiji has blessed us with. But what happens is, when we are brought up in different life situation, different environment, different family, we absorb lot of information that program us to become who we are. And that system leads us to become a person with personality of that mindset. My personal objective of designing this program, as Swamiji says, अपना सब कुछ दाव पे लगाने वाला चाहिए. I see that kind of story in so many sadhaks' life who became guests of This is Samarpan. I feel that when we look at somebody's life from childhood till today, how they have been brought up by their family, how they have struggled to survive or educate themselves and be who they are today, then we can understand, oh, this was my problem too. Oh, this was my situation too. Oh, I can connect with this situation too. And because of that, we become connected at the soul to soul level, not on a logical, intellectual, or rational manner, the way society has taught us, but soul to soul level. I am going to emphasize more our today's conversation on soul to soul contact, because you too, when I talk to you, I felt that soulful bonding. I felt that soulful love between two beautiful souls. And if I can use your media, your story, to connect the heart and soul of each and every sadhak or non-sadhak who wants to progress spiritually, then it will be a beautiful thing. This is Samarpan platform. If you watch any of our program in last 4 years, you will see we are not teaching anything. We are not preaching anything. In fact, we are learning something. In fact, we are growing together. In fact, we are supporting each other. Who created this family? One person, one vision, one dream, Vasudhaiva Kutumbakam, that came from that person who lost his physical identity, who lost his name, and became only Sri Shiv Krupananda Swami, who became our beloved Gurudev, our Paramatma, Baba Swami. Baba Swami has blessed us. Baba Swami has taught us to see positive, to think positive, to hear positive, and to speak positive. तो क्यों ना हम पॉजिटिव बातें ही करें, क्यों ना हम पॉजिटिव बातें ही सीखें। और दैवत भाई और मुनिरा जी की स्टोरी में तो बहुत कुछ सुंदर सुंदर है। और जैसे हम कहते हैं ना कि भाई अच्छे माँ बाप के घर में जन्म लेना, ये भी बड़े पूर्व जन्म के कर्मों के सौभाग्य से हमें मिलता है। तो दैवत भाई की स्टोरी में हमने देखा वेरी वेल एजुकेटेड, वेरी वेल सेटल फैमिली, जिनके पास वैल्यू थी, जिनके पास एक गुरु का पंथ भी था। कैन वी गो बैक ऑन द फर्स्ट स्लाइड, विसनगर वाली। तो दैवत भाई थोड़ा हमें मम्मी पापा और परिवार में जो मान्यताएं थी, जो धार्मिक भाव
उसके बारे में भी Okay. बताइए, क्योंकि Yes. आपके परिवार में बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं। Yes. So हाँ, I talked about the academics, ठीक है, वो बातें करी। जो मान्यता की बात है या looking at the other aspects, तो जैसे बात हुई कि we are नागर ब्राह्मण by caste, क्योंकि that is the lineage from which we come. Caste is not that much significant, but that is the lineage. So Brahmin family, एक्चुअली ये कार्य था पहले कि हम स्पिरिचुअल नॉलेज ले और हम उसे बांटे। तो दिस इज व्हाट ब्राह्मण्स आर सपोज्ड टू डू। और द थिंग वाज दैट जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थी, तो इट वाज देयर इन आवर एंसेस्टर्स, लाइक माय ग्रैंडफादर्स एल्डर ब्रदर, एंड दे यूज्ड टू डू द कर्म कांड, and they used to like preside over the religious ceremonies, to conduct those ceremonies. जैसे घर पे जैसे कोई बच्चे का जन्म हुआ, शादी हुई, यज्ञोपवीत संस्कार, अलग अलग चीजें जो संस्कार रहते हैं, तो वो सारों में वी नो कि हम एक ब्राह्मण रहते हैं, मंत्रों का चैंटिंग करते हैं, संस्कृत मंत्र दे आर स्पोकन, एंड thus the ceremony is completed. So that was there in our ancestry, like from my grandfather, like professionally he came into this education field. तो वो एक था, but we didn't have experience of that in our family. लेकिन वो एक कह सकते हैं कि बीज था। एंड जो मेरे ग्रैंडफादर की लाइफ रही, लाइक ही वाज अ सेलिब्रिटी इन दिस डिस्ट्रिक्ट, he was a national award recipient from the president of India, and he was very proud of it, because he started SSC 10th board examination in this area district. Otherwise the student had to go to other district to give exams. So he was himself a very proud fellow, proud person, and he also taught us to be proud of our work. तो एक तरह से देखे तो जो समाज सेवा थी, समाज का कार्य था, उनकी प्रोफाइल उस तरह की थी। एंड मेनी पीपल दे यूज्ड टू कम टू हिम फॉर एजुकेशन। गरीब लोग थे, पैसे नहीं हुआ करते थे, तो he used to let them study even at concessional prices and everything. So he used to help them from his end. Like he used to believe कि education should be right to everyone. ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ के there is an like chaos, but he used to help in his own manner. जैसे उन्हें लगता था कि if a child is brilliant, they can achieve something, but money is the only factor that is hampering them to achieve education. He used to help that much which he could do. तो ऐसी कई कहानियां हैं, और उनके साथ जैसे कई बार हम घूमते थे, तो जैसे सिटी में निकले तो मोस्ट प्रोबेबली कोई भी शॉप पे जाओ, कोई भी दुकान पे जाओ, कोई भी आउटलेट पे जाओ, आई रिमेम्बर, तो एवरीवन वुड नो हिम, कि घर का परिवार का कोई एक आध बच्चा तो भले उनके पास पड़ा हुआ होगा, एंड ही यूज्ड टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीबॉडी प्रैक्टिकली। तो ही हैड दैट स्टेचर एंड ही इन्फ्लुएंस्ड आवर होल फैमिली, इवन मी। तो जो उनसे जो इंस्पिरेशन मिला था वो ये था कि हेल्पिंग पीपल, हेल्पिंग द सोसाइटी, अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल, दैट शुड बी द प्राइमरी धर्म जो हम सीखे, कि मानव सेवा वही प्रभु सेवा। तो उनकी प्रोफाइल वैसी थी कि he didn't get much time for the religious practices. हाँ, थोड़ा बहुत जो हमारे घर पे पूजा वगैरह होती है, हमारी दीपावली की एंड एवरीथिंग, तो वो करते थे पूजा पाठ, और वो चलता था, लेकिन इट वाज नॉट दैट मच प्रोमिनेंट। टिपिकल ब्राह्मण फैमिली में होता है वैसा नहीं था। एंड मानव सेवा उस पे ज्यादा आधारित था, एंड बिकॉज एवरीवन वाज मोस्ट प्रोबेबली लाइक अ टीचर, और माय फादर ही वाज एन इंजीनियर, तो ह्यूमन वैल्यूज दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट। एंड एक तरह से देखे तो रिलीजन से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी दैट वाज फोकस्ड। हाँ, भले उस टाइम पे उतना क्लैरिटी नहीं थी, नाम नहीं था उस चीज का कि भाई हम ये सब कर रहे हैं तो दिस इज स्पिरिचुअल और समथिंग। तो दैट वाज बीइंग डन इन द फैमिली। मेरी ग्रैंड मदर की बात करें तो शी वाज अ शैवाइट, शिव जी के उपासक थे, एंड शी हैड अ वेरी गुड बिलीफ। मेरे दादाजी थे, वो हमारे जैसे सभी धर्मों में जो भी सारे देवी देवता सभी का वो मानते थे, लेकिन उतना कुछ स्पेसिफिक नहीं था। दादी माँ जो थी वो रेगुलरली पूजा पाठ घर पे करना, वो सब उनके शेड्यूल में, इट वाज अ पार्ट ऑफ हर शेड्यूल। माय मदर आल्सो। तो मैटरनल साइड ये था। मैटरनल साइड में आई वुड लाइक टू हाईलाइट जो मेरे नाना नानी थे, तो दे वर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड दत्तात्रेय,
and they had their living guru in Nareshwar. We know Rang Avadut Maharaj of Nareshwar. तो जो मेरी नानी माँ थी और नाना जी थे, तो वो लोग रंगावधूत महाराज को मिले हुए थे उनके जीवन काल में. तो ही वॉज अ लिविंग गुरु फॉर देम. देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिनने उनके समय में उनके साथ रहे हो. तो एक उनके जीवंत गुरु थे, इसलिए उनकी लाइफ में उनका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस. एंड दत्त पंथ में वो आगे थे. एवरी वेकेशंस वी यूज्ड टू गो टू द मैटरनल साइड. मामा के घर पे जाते. दैट्स अ ट्रेडिशन इन इंडिया. So all the maternal side, they were more into religious practices also, anushthan वगैरह, पाठ, सब कुछ. तो like I had the glimpse of that thing in my maternal aspect. तो थोड़ा exposure था एक तरह से अगर हम कहें तो. It was there, but कोई hardcore वैसी belief या नहीं ये तो ऐसे करना है, that was not there. फिर थोड़ा आगे जाए तो जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनोई विधि. So at 11 years of age, that was done. Or yes, as you can see in the photograph. So after that, जिन्हें पता हो उन्हें कि इस संस्कार के बाद गायत्री माता के पाठ का एक अलग ही महत्व होता है. So my mother and my parents and they taught me कि भाई हर रोज एक गायत्री माता की गायत्री मंत्र का जो एक माला हम 108 बार उच्चारण करें, and then we start our day. So that is there. I used to follow it for quite few years. As far as I remember, जब तक बोर्ड एग्जाम या जैसे हायर स्कूल तक नहीं गया, gradually it faded off, but वो एक रिचुअल का पार्ट था. And I didn't understand much. बस ये करना होता है, सालों से करते आ रहे हैं, and this is associated with us, and we have to do it, and we have to follow it, and this will be good for us. स्टूडेंट लाइफ है तो माँ बाप अभी क्या सिखाएंगे बच्चों को? यही सिखाएंगे कि भाई पूजा पाठ करो, मंत्र अगर लेंगे थोड़ा हमें विद्यार्थी अवस्था में उससे मेमोरी बढ़ेगी, इंटेलिजेंस बढ़ेगी. इट विल हेल्प यू टू फोकस इन योर स्टडीज. सही, क्योंकि उस एज में दैट इज द प्रायोरिटी, और तो ज्यादा कुछ होता नहीं. तो विद दैट एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू द स्कूल्स आई यूज्ड टू डू इट. आई रिकॉल इट नाउ. बहुत साल हो गए एक्चुअली, वो अनायास से छूट गया है recently, but like when you asked me to think about the childhood, like this thing also struck me. Or very yes, beautiful. That is the religious background या spiritual background जो कह सकते हैं before Samarpan, which we had in our family. तो ये आपका फोटो जो यज्ञोपवीत का है, उसके आजू बाजू 2 फोटो और हैं. Yes. इन 2 हस्तियों की पहचान कराइए हमसे. Yeah, they are my parents, my father and my mother. Very beautiful. Yes. And yellow photograph, that is the photo of my passport. We made a passport. We applied for a visa to come to US, but unfortunately or fortunately I didn't get it when I was in standard 5. अच्छा, अभी आप आ जाइए. Yes. हम आपको इनवाइट करते हैं पंच से. और अगर इंटरव्यू में वो लोग रिजेक्ट करे, बोलना कि मैं तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सोल सत्संग पे जाके इनवाइट होके आया हूँ, तो आपको ये वीजा देना पड़ेगा. तो One more thing I would like to add. पड़ेगी. क्या बोले मुनीरा जी? हाँ, उनके जो दादाजी हैं वो प्रमुख स्वामी महाराज से बहुत इंस्पायर्ड थे. और he used to do एकादशी, and his birthday is on the तिथि wise we say out. तिथि जो गुजराती में होता है 11. तो स्वामीनारायण में 11 का इम्पोर्टेंस है. तो he is born on उत्तरदा एकादशी. Very beautiful. His grandfather relates it to like he's a gift by Pramukh Swami Maharaj. Very true. His mother used to pray that she was a strong believer of Rang Avadut Maharaj Datt Bhagwan. She used to pray that please provide me the son who has the qualities of you. And we can relate. He has many qualities of Sri Rang Avadut Maharaj, that saint. We sometimes tell him that you are like a sant. नहीं वो संत gesture of a doctor. सही है, वो संत जैसे ही है. उनकी आत्मा तो उतनी ही पवित्र और प्यारी है, और थोड़े रंग अवधूत जैसी उनकी स्माइल भी है. वैसे आप देखोगे जरा गौर से तो पता चलेगा. तो उस
रंग अवधूत जी का नाम लिया तो मुझे बचपन से एक धुन याद है, जो हमारे सत्संगी मित्र जो रंग अवधूत जी को मानते थे वो गाते थे। दत्ता दिगंबरा रंग अवधूता, दत्ता दिगंबरा रंग अवधूता, एक मन तारो आधार दिगंबरा, दत्ता दिगंबरा रंग अवधूता। तो रंग अवधूत जी की भक्ति मैंने नवसारी में कहीं ना कहीं सुनी है। उनका पूरे गुजरात में, महाराष्ट्र में बहुत प्रचार हुआ था उनकी गुरु भक्ति का। और ये जो गुरु दत्तात्रेय की जो गुरु परंपरा है वो नाथ परिवार के साथ भी जुड़ी है। तो कहीं ना कहीं हम सब पंथ अलग हो सकते हैं, हमारा मकाम एक ही है। इसलिए गुरुदेव हमें बार बार समझाते हैं, जब कोई इंसान बोलता है तो हमें देखना है ये मकान की बात कर रहा है या फिर सीढ़ी की बात कर रहा है। तो बहुत सी चीजें आपके इस कहानी में सुनने मिली और उसको मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूँ। मेरा कार्य है गुरुदेव की शिक्षा को आपकी कहानी के जरिए लोगों के दिल तक, आत्मा तक जोड़ना, बस। तो शिक्षा गुरु की है, स्टोरी आपकी है और भाव हम सबका है। तो ये आत्मीयता का माध्यम है। गुरुदेव जब समाज में आए हिमालय में 16-17 साल की ध्यान साधना कर कर, और कहीं एक के बाद एक गुरुओं की सिद्धियां, चैतन्य शक्ति को प्रसाद के रूप में लेकर वो जब समाज में आए, तो उन्होंने जो कुछ भी देखा, सीखा, जाना, माना और पहचाना, उस सभी बातों को किसी ग्रंथ की बातों से जोड़कर नहीं समझाया। जैसे कोई संत महात्मा पुरुष हमें कथाकार समझाता है, वैसे गुरुदेव ने नहीं समझाया। गुरुदेव ने अपनी यात्रा की कहानी को कहानी के जरिए सीधा आपके हृदय में उतर कर, हृदय से जोड़कर आपकी आत्मा तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो एक बात यज्ञोपवीत की मैं जरा सबको समझाना चाहता हूँ, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी कुछ लोग समझेंगे तो उसका फायदा हमें बहुत होने वाला है। Let's go back on that slide, Yajñopavit. Okay, I want to bring attention of everybody on the central photo where the young Dhaivat ji is holding the thread like this on his head. Dhaivat ji, may I ask you at what age this ceremony took place? Yeah, I was 11 years old, and 11 it is years. believed that the age should be an odd number. 9 years and 11 years, they are considered sacred. Yes. So I want to bring this story or these rituals or this tradition from India. It's a Vedic tradition, okay? And this tradition is called thread ceremony, as you are seeing him holding the thread. And this thread ceremony used to be performed more for the Brahmin family, as he comes from the Brahmin family. And Brahmins were believed to know Brahma. Brahma is like cosmic consciousness, not a person, not a Brahma with 3 head or 4 head that you see in the photo, but Brahma is cosmic consciousness. When Guru Dattatreya, if you see in the previous slide, Guru Dattatreya is the avatar of Brahma himself. Is, you see Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara. You see the photo. Can you circle that, Guru Brahma ji, Guru Dattatreya ji? Haan. So that image of 4 face of a person, it is like when you are merged with the cosmic consciousness, Brahma Chetana, Vishwa Chetana, then what happens? You are not just seeing at 180-degree vision with your 2 eyes, with your physical senses, but you are seeing 360 degrees, up, down, right, left, front, back, everywhere. And that 360-degree vision is symbolically present with 4 faces, meaning that I can see from my back, I can see on my right, left, everywhere. Okay. So many times people ask,
How come Hindus have gods and goddesses with so many different form, different faces, different hands? No, this is human being is always with two hands and 2 feet and 2 eyes. All the organs are same for everybody unless somebody is born with the abnormality. That is a different story. But our Hinduism has the Vedic belief that only developing on a physical level with the physical senses is not enough. Human being is the only creature on the earth that has potential to become godly, that has potential to become divine, that has potential to go beyond the physicality, go beyond the mentality, go beyond the emotional aspect. So, what is that aspect? That aspect is consciousness. That aspect is chetana. Okay. So, when a person is progressing on a spiritual level, Guru Brahma is every human being creates something in their life. That is Guru Brahma, creator. Guru Vishnu is the maintainer or governor. Okay, one who maintains, one who sustains what has been created by Brahma. So that is Guru Brahma, Guru Vishnu. And Guru Mahesh is what you see, Lord Shiva. Lord Shiva has two aspects. He is motherly from the left side. That's why sometimes you see also as Ardhanareshwar. Lord Shiva has the motherly aspect. Once you develop that aspect, there is only love, there is only compassion, there is only grace that flows from your existence. And he is very Soumya, very loving, very kind, very peaceful entity. And when something is needed to be taken in control, something is needed to be reorganized, restructured, there is a need for transformation. He uses his right side. His right side is Surya Nari. And that is how he used his power. Soumya on the left, motherly. Raudra is the right on the Surya Nari side. This balanced personality can happen only once a person reach through meditation, develop his consciousness to the level that he is neither just emotional, he is neither just logical, but he is centered. So once you develop that, as you see the third eye on the forehead of Lord Shiva when he is sitting, that Agya Chakra develops. In that Agya Chakra is the place of Guru. In that Agya Chakra is the place of Guru Brahma Vishnu Mahesh. In other words, a ordinary person like you and me has the potential to reach to this level of consciousness. And once you reach that, you can potentially reach up to the crown chakra, which is the entrance door, which is the 10th door in our body for the consciousness. And that 10th door is crown chakra. Gurudev, Sri Shiv Krupananda Swamiji, has come to this world, has returned from the Himalayas to teach us how one can not just limit himself up to the Agya Chakra, up to the third eye chakra, through his religious belief, through his bhajan, through his bhakti, through his devotion, through his whatever understanding that he has developed, or whatever you bring as a karma from the past life is not enough. Once in a lifetime, after so many years of sadhana, so many years of practice of meditation, inward journey, somebody is born whom we can call avatara, whom we can call Yuga Purush, a man who is living across the ages. Satyug, Treta Yuga, Dwapar Yuga, Kali Yuga. One who lived through all this time, that is Guru Brahma Vishnu Mahesh. Now the third part is Guru Saksat Para Brahma. Guru Saksat Para Brahma is one who has not just reached up to the crown chakra, he has spreaded his consciousness all over in the universe. Brahmins were the people who were known to reach up to that state of consciousness, as Swamiji's discourse
If you have heard in the earlier days, Swamiji used to say this. Okay, Brahmins were respected by the kings. Brahmins were respected as Guru or Rajguru simply because of their knowledge of thinking and knowing and judging beyond the logical aspect of life. I am telling you, there are people watching this program right now who are member of Global Samarpan family. There are people who are talking to you who are part of Global Samarpan family. By the grace of Sri Shiv Krupananda Swamiji, have reached to that cosmic consciousness level, have reached to that crown chakra, and they have progressed spiritually. It is quite unfortunate that they will not tell you, they will not try to show you off that I have this power or I have this understanding. And that is the beauty of Vedic culture. That is the beauty of Sanatan Dharma. We are here not to show you off who we are. We are here to share our love, because the day we took God's mission, the day we take the love of God and start spreading that love, helping each and every soul becoming Guru Brahma, Guru Vishnu, and Guru Mahesh, that is the day God will be happy. That is the way our Creator will be happy. That is the day our Guru will be happy, who has traveled all the way to Himalayas, day and night, wandering in different places, living in the dark caves, living without eating, drinking, or sleeping, in a comfort that you are enjoying in this society. Still, he came back to awaken you, to awaken me, and to share his love. So what happens? What is the tradition that was going on in the Brahmin family? That was allowing the tradition of cosmic consciousness, cosmic knowledge to spread from one person to another. That ceremony is called Dvija. Dvija is second Janma, second birth. Rebirth. Okay, so Dvija is what? As Swamiji explained, if you look at the bird is first coming on the earth in the egg, and that egg is hatched by the mother bird, and when the time comes, the baby bird comes out from the egg, and that is the second birth. So first from the mother's womb is the first birth, and second from the egg coming out is second birth. So this is two birth for the bird. In same way, human being is coming out of mother's womb. That is his physical first birth. Just like the egg matures and time is ripe enough, that egg hatches and the baby bird comes out. The same way, at the age of 11 to 13, remember these words, at the age of 11 to 13 is the time in every human being's life, not just Brahmin or non-Brahmin, or every human being's life, that consciousness evolves to the stage of maturity. It is that time between 10 to 15 years of age, we start building up our ego. We start building up our identity. We start building up our personality. During this time, the tradition has been designed in such a way that Yagnopavit Vidhi, that Vija Vidhi, or that ceremony is performed to officially assign that knowledge of cosmic. And that mantra used to be Om Bhur Bhuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. I will tell you, Om is the name of universal God or cosmic consciousness, and Bhu is the earth, Bhuva is the Trilok, Swaha is the soul itself. So earth, Bhuvan, Tribhuvan, that is the Trilok, and my Swa, my soul. Let
cosmic consciousness spread in all these three aspects of like three dimension of the life. And the last part is most powerful. Dhimahi dhiyo yo naha prachodayat. Let your intellect, let your intelligence enlighten my intelligence. That is where we are asking the blessing of the divine consciousness. Enlighten me. Dhimahi dhiyo yo na prachodayat. So that I can see the world the way you see. So that God's will become free will. So that your will becomes my will. And I will live my life the way you are living. The day we can imbibe those value from our Gurudev's teaching, then that value will make us see ourselves as Gurus undivided or non-separated aspect of consciousness. In other words, my Atma is the same as my Paramatma Swarup Sadguru. And my Paramatma's Atma is same as God himself or the creator or Brahma himself. That's why we say Guru Saksat Para Brahma. This is the most powerful thing that we need to understand. That thread ceremony is not just part of the Hindu culture. I want you to come to the Christianity. They have baptism performed during the same age group. Okay, you go into the Jewish religion. There is a ceremony at the age of 11 or 13, bar mitzvah or something that is called, and it does this similar thing. It is the time to awaken your soul. It is the time to enlighten your spirit and to create the kingdom of heaven on the earth. You have to always watch yourself inside, from heart chakra to Agya chakra. Okay, and that is what I want to bring to the attention of our global Samarpan family. That is what I want to bring attention from this story, this culture, this tradition. Look at the story of धवल भाई. धवल भाई के जीवन में उनके परिवार में जो ब्राह्मण परिवार था, जहां पे ये रिचुअल्स होती थी, परिवार इसके ऊपर जीवन निर्वाह भी करता था. उसमें से समय के साथ किसी ने अपना प्रोफेशनल करियर बनाया और उन्होंने शिक्षक के रूप में समाज में कर्म योग और ज्ञान योग के मार्ग से सेवा की. Because the ultimate path was to spread God's work, you have to do something also. So somebody is doing Jnana path or the path of knowledge, somebody is doing the karma path or path of action, and somebody is doing the bhakti path. So there are so many paths, so many ways of yoga to connect with God, and that is what is coming. My biggest take from this story is anything that we do as a karma, anything that we instill as value or sanskara in our children is not wasted. It is bringing the fruits in our life or our next generation children's life or in our soul's next birth. Keep that in mind and let us focus on learning little things from the story of our guests, because there is so much to learn from these people's story and you are going to be inspired. धवल भाई थोड़ा ज्यादा वक्त ले लिया हो तो माफ करना, लेकिन बहुत मजा आ रही है. मेरी अंदर जो गुरुदेव ने संस्कार रखे हैं और उनका जो भाव है वो सब तक पहुंचाना है, क्योंकि जब हम समझेंगे ना तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी. I feel today's time there is lot of misunderstanding, not because we don't have knowledge, but because we have half knowledge. और उस अल्प ज्ञान बहुत खतरनाक होता है. आप डॉक्टर लोग तो बहुत ज्यादा जानते हैं उसके बारे में. Yes. So very beautiful story. हम आगे बढ़ते हैं, अभी मुनिरा जी के पास जाते हैं. तो मुनिरा जी, धवल भाई के परिवार एंसेस्टर्स की एक लिंक में स्वामीनारायण पंथ का भी लिंक था. उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साइड से कोई तो स्वामीनारायण पंथ में भी मानता और आपके परिवार में भी स्वामीनारायण पंथ में मानते. यानी कि अभी देखो, रंग अवधूत जी, स्वामीनारायण जी, ये सब गुरु पंथ हैं. यहाँ पे गुरु शक्तियां कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं.
तो अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जो स्वामीनारायण पंथ को परिवार में फॉलो करते थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। और ये BAPS संस्था यही है No, स्वामीनारायण? no. My हाँ, तो no जरा actually, समझा ना। yeah, पहले आपके yes. परिवार के बारे में बताइए, बचपन के बारे में बताइए, हम कंटिन्यू करते हैं आपके साथ। और ये खूबसूरत दादी माँ कौन है? She is my grandmother. She's my late grandmother, अरे and वाह। yeah, the seeds of spirituality, whatever I had, I strongly believe that I have all gotten it from her only. वेरी So नाइस। come to think of it, जब भी thank you TIS again. I would like to thank you again that this a unique workshop where we get to share our story. Also, while sharing, we are going through those moments, इमोशन। reliving that moments, and come to think of it that इनका जैसे मैंने जर्नी का जो चाइल्डहुड का वो भी हम अगर कंपैरिजन करते हैं तो माइंड वाज कंप्लीटली ऑपोजिट to whatever he has. He is by nature he is a bookworm. He's a reader. He's an introvert. He's a thinker. So he's a shy and not social, we can say. और I am completely opposite to him. मैं आउटवर्टेड हूँ, मुझे स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बुक रीडिंग का इतना शौक मुझे नहीं। तो जैसे ऑपोजिट अट्रैक्ट्स वैसा ही कुछ हुआ है। इवन ही इज वी कैन से दैट ही इज बोर्न विद द सिल्वर स्पून। I was not born. I was born in an environment that I'm not telling any negative about my family, but there was a male dominant and preference to male was that we all had that environment at that era. And I had two elder brothers. So you can imagine आप तो how ललवन hard priority wise and the facility wise or any opportunity wise how I am being provided with the opportunities. So story of my birth जैसे हम कह सकते हैं, I would like to share that when I was born, जब मैं पैदा हुई थी तभी my बुआ वो उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा था और द नेम ऑफ डॉक्टर ट्रीटिंग हर वाज मुनीरा and my rashi was Leo. So my name was to be given by Ma or Ta. So my father named me like with Munira. So that positive affirmation, that energy was put since birth that I would become a doctor someday, and that turned out to be true without any more effort. So I give most of the credit to my father by naming me after a doctor. yes. Yeah, and actually our financial condition was so and so and mediocre. So my father wanted two child policy, but my mother was very fond of daughter. At that time the all the house chores was done by girls only. So सही है। she wanted a girl very badly. So like I was invited by strong determination of my mother that third child will be the daughter only. Even क्या at बात। that time we didn't have any gender identification, or we didn't allow to as we are informed in other countries, foreign countries, that what is the gender of the child. But in India, that is a complete gender identification is strictly prohibited. So my mother channelized all that energy to have a girl, and I was born. So वेरी yeah, that strong determination has been passed to me in form of her strong feelings. Yes, my life was little bit struggleful, we can say. I lost my birth mother when I was 1.5 years old. Uh, yeah, but I have her blessings. I can say that has led me to such a beautiful life. Also, when we say भगवान एक लेता है तो बाकी ज्यादा देता है, तो दूसरे सब mindset. रास्तों से तो मुझे अभी I have a beautiful and loving mother-in-law,
who and also grandmother-in-law who loves me like her own child. So I have no regret of that. Yeah, come to my grandmother. She was strong believer of Swaminarayan, and our village in Mehsana district, Kundar, where there is a temple of Swaminarayan Bhagwan, and the temple was built in front of her. And since the day one of that starting of that temple, वो वहाँ पे सेवा देती थी morning 4 o'clock. She was a hard worker herself, and she used to do agriculture work also, and also took time from her hardworking life to 2 hours dedicated to the temple management, temple rituals. Everything was done by her. So and yeah, that was passed on to our generation also, कि उनका ही जैसे सुबह उठ के शुरुआत जो हमारे दिन की होती है, हमें 5 जो माला है वो करनी ही है, और our ग्रंथ is शिक्षा पत्री, so we have to read pages of शिक्षा पत्री. Yeah, and जैसे स्वामी जी भी कहते हैं कि घर के छोटे बच्चे को पास ऑन कर देते, सबके पास टाइम नहीं होता है, तो वैसा ही मेरे साथ होता था कि जो भी इवनिंग रिचुअल्स है, आरती करनी है, भगवान को भोग चढ़ाना है, वो सब मेरे ही पार्ट में आता था. तो आई थिंक that bhakti yoga has helped me to reach this Dhyan Yoga. So I also thank Lord Swaminarayan and my family to have me that sanskar from childhood, because I don't even remember when I started doing Agyaras. It is a must in our family. We have to do Agyaras, whatever is this. So yes, so that's that is beautiful. आप मुझे जरा थोड़ा और बताइए, what is the difference between the BAPS Swaminarayan Sanstha, the one that you guys have, because there are multiple Swaminarayan path. So if you can explain little bit of that, our sadhaks or our audience will learn little bit more about Swaminarayan family also. Yes. So Bhagwan Swaminarayan was he was a saint. He didn't have a family. He left. He took sannyas at the age of 11 to meet God. Right. So whom we know as Nilkant. Nilkant. Yes. Nilkant. हाँ. तो तभी फिर उन्होंने जैसे धर्म का प्रचार किया पूरे भारत में, तो he felt the need to spread it to the future generations. तो उनका तो कोई फैमिली था नहीं, but he had 2 brothers, रघुवीर एंड इच्छारा. तो उनके जो ब्रदर हैं उनको उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि you have to spread this dharma to all humanity. So he gave them the base of Kalupur, that is situated in Ahmedabad. ना अहमदाबाद में है. तो yeah, one temple was built, and the murti is put by Lord himself only. और दूसरा है वलसाड में है, वड़ताल में. yes. तो वड़ताल में तो 2 उनके जो ब्रदर हैं उनका पूरा जनरेशन टू जनरेशन वो टेम्पल है, और अभी जो है उनका 7th जनरेशन चल रहा है. तो my family particularly believes in that they are the offsprings of Lord himself only. उनका फैमिली का जो है वो हायरार्की है, lineage है उसमें. सही है. हाँ, उनका lineage है. yes. तो दैट है. और दूसरे जब भी भगवान जब भी ऐसे भ्रमण करके सबको ज्ञान एक जगह पे दे रहे थे, तो उनके कुछ अनुयायी हैं जिन्होंने जो परम भक्त थे भगवान के, और जो ज्ञान भगवान से लिया उनको स्प्रेड करने की जिम्मेदारी भगवान ने उनको भी दी. तो कुछ ऐसे गुरु थे जो इमीडिएटली भगवान से उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया, और उन्होंने अपने शिष्यों को आगे वो गुरु शिष्य की परंपरा में ट्रांसफर हुआ. वो उससे जो है अबजी बापा जो है उसमें वासना वाले मंदिर में आते हैं कि भगवान के एक भक्त थे अबजी बापा.
और उनकी भी आप बहुत सारी स्टोरीज है भगवान अनुभूति, जैसे हम अभी कहते हैं अनुभूति, ऐसे उनके लाइफ के जैसे कहते हैं पर्चा, भगवान ने हमने साक्षात पर्चा आपे છે, જેમ કે હુંડી, ભગવાન की હુંડી कृष्ण भगवान ने कैसे हुंडी का पूरा नरसिंह मेहता का पर्चा है, वैसे तो ऐसे अबजी बापा के फॉलोअर्स हैं, उनके अलग मंदिर रहते हैं जो वासना वगैरह है, SNBS है, और BAPS है वो गुणातीतानंद स्वामी जी, और ऐसे उनके जो लिनिएज है गुरु शिष्य के, ऐसे प्रमुख स्वामी उनके फोर्थ या आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, फोर्थ या फिफ्थ उनके सक्सेसर है, वो BAPS है। तो वो लोग सभी का काम एक ही है, भगवान का जो संदेश है वो जन सामान्य तक पहुंचाना। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और ये मैंने आपको जानबूझ के पूछा बिकॉज कहीं ना कहीं किसी न किसी पंथ में सब लोगों को इस सत्य का सामना करना पड़ता है। देखिए, स्वामी ने कहा है ना, परमात्मा एक है। मैंने धवल भाई की स्टोरी में कहा ना कि आप मकाम पे हो या सीढ़ी पे हो, वो जरा देख लो, ओके? क्योंकि हमें पहुंचना है वहां तक, और हम कहाँ अटक रहे हैं, लटक रहे हैं या भटक रहे हैं, वो हमें सोचना है बुद्धि के स्तर पे। तो धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, अगर मेरी बुद्धि गुरु की बुद्धि के साथ एक रूप नहीं है तो मैं वो नहीं सोचूंगा जो मेरा गुरु सोचता है, मैं वो नहीं महसूस करूंगा जो मेरा गुरु महसूस करता है। तो बहुत सुंदर चीजें हैं आपने जो कही, उसमें सीखने की है। स्वामीनारायण पंथ जो 200 साल से पुराना पंथ है, गुरु पंथ है। गुरु पंथ में गुरु परिवार के सदस्यों ने भी एक धारा बहाई है, गुरु के भक्तों ने भी एक धारा बहाई है, और जो सबसे ज्यादा प्रचलित होता है उसको ही हम जानते हैं, लेकिन वो अर्ध सत्य है। इसीलिए पूरा सत्य जानना चाहिए। सत्य की जो प्रतिभा है, सत्य का जो अस्तित्व है, उसको भी समझना चाहिए, और किसी भूतकाल की कहानी से अपने वर्तमान समय को इस तरह से लेना चाहिए कि भविष्य हमारा सुधर सके। जैसे किसी भी पंथ में किसी भी आत्मा की मुक्ति हुई हो, किसी भी आत्मा को मोक्ष मिला हो, हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। हमारा अंतिम लक्ष्य मंदिर बनाना, गुरु शक्ति धाम बनाना या मूर्ति पूजा नहीं है। तो यहीं पे लोग अटक जाते हैं, भटक जाते हैं या लटक जाते हैं। मैं इसलिए आपके पास ये बात जानना चाहता था, एंड आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Gurudev said very clearly in his way of explaining that Samarpan meditation is just a ladder that will help you to reach to certain level. But after some point, you don't even need the ladder. Okay, understand this. That ladder or steps are just to climb in the air, because we are putting God in the sky, in this space. We cannot use any ladder. That ladder is the subtle ladder. That ladder is the ladder of love, unconditional love or devotional love, and that ladder is the grace of Guru that brings the union of these two different souls, whom we call Guru and Shishya, whom we call Guru and Chela, whom we call disciple and master. Okay, so when we connect at the soul level with that light, with that knowledge, with that consciousness, our darkness will be removed from the ignorance. That's why we are saying Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrutyorma amrutam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. O God, O Almighty, lead me from darkness to light. What is that darkness? The darkness of ignorance, darkness
of misconception, darkness of disbelief, darkness of believing in a way that we not only live as a fool, but we start making others fool. Ignorance is the biggest darkness in today's world. Asatyama satyagamaya. Once you remove the darkness, then only you will be able to understand the reality, the truth. So our Vedantic wisdom says, Brahma Satya Jagat Mithya. The universe, the consciousness is the only truth. Anything that you see in the material world through elemental creation is all fake. Why? Swamiji says, हमारा शरीर नश्वर है, तो गुरु के चरण में भी आकर उसका पांव पकड़ के मत बैठे रहो, गुरु के शरीर को भी मत पकड़ो. गुरु को भी कष्ट होता है, हमको भी कष्ट होता है जब छोड़ना पड़ता है. Swamiji was crying like a child every time he had to let go his guru. Every time he has to move to another guru. Swamiji was crying like a child when he has to do the Agni Dah, when he had to cremate his guru and move to another place. These are very critical things. Swamiji also gives the example that a mother who is breastfeeding the child, after it realized the child has grown enough, strong enough, and it want to cut off the breastfeeding, it starts putting the bitter medicine on the breast so that the baby will think that no, this is not good anymore, it doesn't taste sweet milk anymore, and it will give up. This is the way we try to change the mind of a baby, mentor the mind of a baby. Okay, so there are lies, there are fakeness, there are unreality in the material world which is dragging us from morality to immorality, which is dragging us to do things in a wrong way, which may not allow us to reach to the truth or reality in the ultimate sense. And if you do not become real, if you do not become authentic, if you do not become emotionally engaged with your soul itself, chances are very less for you to reach to the ultimate Amrutam Gamaya. That is for the Jiva. That is for the Jivatma who forgot its real form of Shivatma. But if you become Shivatma, if you become Param Satya, you are Amruta. You cannot die. You are dying because you are ignorant. You are dying because you are in the dark. You are dying because you are away from the reality. You have to live in the reality like a base of lotus in the dirty pond, and you have to live with the lotus without getting dirty, without getting wet. That is the art of living. That is the magic of living, and that is the knowledge that Shiv Kripanand Swamiji has come in our life to teach us. Tomorrow, I am warning each and every one who is watching and listening this program. Tomorrow, we will also see the story like Swaminarayan Pant. Swamiji's family member, like Swaminarayan's two brothers, may start their own journey, their own temple, their own Guru Shakti Dham. It is possible. I don't know. And I cannot say this is going to happen. It is possible. Tomorrow, Swamiji's disciple may become so united, so merged with the universal consciousness that they become Akshar Purushottam. They become the founder of Babs. They become the founder of the biggest part in the Guru Shakti itself in the world that can enlighten millions of people the way today Bab's name is coming on the Guinness Book of World Record for making the biggest temple in the world, for making maximum number of temples on the world. Pramukh Swami was not the first disciple of Swaminarayan Bhagwan. But Swaminarayan Bhagwan's lifetime, Akshar was Swami Narayan himself, and Purushottam was ordinary disciple like you and me. मुझे पुरुषोत्तम बनना है. क्या आप पुरुषोत्तम बनना चाहते हो? पुरुषोत्तम बनने के लिए रूप
सत्ता, पैसा, ज्ञान, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। स्वामी जी कहते हैं जैसे स्वामी जी ने अपनी नौकरी, धंधा, परिवार सब कुछ दांव पे लगा के हिमालय में गए थे, क्या आप संसार में रह के अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हो? आत्मा बनने के लिए तैयार हो? जब आप आत्मा बन सकते हो तो आप भी गुरु के साथ एक रूप हो सकते हो। आत्मा परमात्मा का मिलन आपको भी अक्षर पुरुषोत्तम बना सकता है। ये मेरी मान्यता है। मैं आपको इस प्यार भरी कहानी से, इस अनुभव से सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि let us not imply my knowledge or your knowledge. Let us learn from the reality of life. Such a beautiful panth, such a beautiful tradition has been given to the entire mankind through our Sanatan Dharma, through our Vedic wisdom, and through our Guru Panth. The biggest dilemma in human's mind is it truth or it is not truth? Is it right or it is wrong? Is it good or it is bad? And that duality is confusing you. You will never be able to be right. You will never be able to be good, and you will never be able to be truthful unless and until you surrender everything at the lotus feet of Guru. And one day Guru also surrender you to his Almighty, that now beta, I am not yours, you are not mine. Your journey you have to travel, and you become consciousness yourself. That is the ultimate moksha. That is the Mrityorma Amrutam Gamaya. If you understand that, then Samarpan path is going to create miracle not just in your life, everybody's life around you. ऐसी स्टोरी हम जान रहे हैं, सीख रहे हैं, और बहुत कुछ चल रहा है। ये तो अभी पहला बचपन का पाठ हुआ, और ये तो मैं आपके माँ बाप और गुरुजनों के संस्कार की बात कर रहा हूँ। मैं इनकी दादी माँ की फोटो को फिर से दिखाना चाहता हूँ। If you can watch in the eyes of Dadi Ma, okay, grandma का फोटो देखते हैं फिर से। Look at that love. Look at that cannon-like vision. And this is probably very old age. मुनिराजी कितनी उम्र होगी उस वक्त पे? I was 24 years old. Just my grandmother was 84 years old. 84. So look Yes. at that 84-year-old eyes. You see, it is talking to you. It has the purity of love. Love that is not conditional. Love that is not asking you to believe what it says. Love that is asking you not to bow down to it, but love that tells you, I am innocent. All I have is love to share with you. And if we can become such pure eyes, eye is the mirror of our heart, our soul. Look at that purity. We want to become such pure eyes. We want to become such pure soul. We want to become such loving heart. And then we will have grandchildren and children like Muniraji and Dhaivat Bhai, who will continue the torch of unconditional love for the entire mankind. Another thing that I like in Muniraji's story also, there is a stark contrast in the energy of Muniraji and Dhaivat जी। तो बहुत मजा आता है जब हम लोग बात कर रहे थे ना, तो इतना मैं चंद्रनारी सूर्यनारी को देखता था। और if you notice in our advertising concept that we use the flyer, okay, depending on the energy we try to create the background. तो थोड़ा नीचे के चक्रों के साथ, भाव के साथ पिंक कलर भी है और ब्लू कलर भी है, आप देख सकते हो ये बैकग्राउंड का जो होता है। तो इट इज बहुत सारी चीजें मैं सटल लेवल पे लोगों के इंद्रियों को भी प्रभावित करने के लिए यूज करता हूँ। जैसे मैंने कहा, जो मेरे गुरुदेव से, मेरे माँ बाप से, मेरे शिक्षकों से, मेरे समाज से मुझे मिला है, मैंने टीआईएस में सब कुछ दाव पे लगाया है, क्योंकि ये संस्कार मेरे माता पिता के भी है, जैसे आपके माता पिता के थे। कर्मयोग और ज्ञान योग आपके पास था, मेरे पिता के पास तो सिर्फ कर्मयोग था। ओके। और मुनिराज जी, मैं आपको कहता हूँ, जिस परिवार से मैं आया हूँ, मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, आई वॉज बॉर्न इन ए स्टील स्पून फैमिली। तो हमारे यहाँ चम्मच स्टील की थी, न गोल्डन थी न सिल्वर थी, लेकिन स्टील फुल। तो दैट मेड somebody like Sardar Vallabh Bhai a man of steel.
आयरन मैन ऑफ इंडिया, ओके। और ऐसा ही हमें बनना है, चित्त शक्ति से एकदम वज्र की तरह स्ट्रॉन्ग, और हृदय से हम लोग एकदम मृदु कोमल, जैसे गुरुदेव का प्यार है। गुरुदेव की आंखों से आपकी दादी माँ की तरह सदैव करुणा बहती है। तो ये हमारी रियलिटी है, ये हमारा बेस है। बट आई वॉन्ट एवरीबडी टू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट वैल्यूज यू केम फ्रॉम, बट those little values that you received from first 10-15 years is going to define your long-term journey. That is why I always involve the childhood story and the roots of everybody, because once you want to understand and know a person, you have to understand the entire picture. You cannot just say this person is doctor, so I salute her. This person is high level person or president or politician, that's why I respect them. No, you have to know who is that person inside. And in fact, when I was young, I used to sing bhajan, और उसमें एक भजन गुरु भक्ति के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके 2 लाइन सुनाता हूँ। हे लोभी आत्म में समझाओ के समझाओ मारा के मारा गुरुजी ने पूछो रूड़ा ज्ञान तो बतावे रे जी, ज्ञान तो बतावे जी। एक लाइन बहुत 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 समझने जैसी है कि एवा हिरला मेली ने कौन पथराने सेव से जी, पथराने सेव से रे जी, के पथरा बाहर बिना ने भीतर कोरा मारा गुरुजी ने पूछो रूड़ा ज्ञान तो बतावे जी, ज्ञान तो बतावे जी। What is the meaning of this beautiful line? Oh ignorant soul, if you don't know what is the reality, come in the lotus feet of my Guru. He is going to give you the knowledge to identify what is a real stone, ordinary stone, and what is a gemstone or diamond. Okay? The stone, ordinary stone, you put no matter how much water, it will never get wet inside. The water go from top and it slides down. Put that water on the diamond. See what happens. A rainbow will come on the other side. Those who are enlightened by the Guru energies, those who receive the grace of Guru, when they speak, only Guru Chaitanya, only Vishwa Chetna flows in that communication. Only unconditional love and grace will flow in that communication. But those who are stone, who are stealing the beautiful scriptures from the Vedas or from the religious scriptures or from the intelligent people's books, when they talk, it is dry. It is coming from here and it is going from here, but it does not touch the heart of anybody. Here in This is Samarpan, Guru's grace is flowing. That love is coming out through the heart and soul of each and every soul who are sitting in this interview, in this platform. Only by the grace of God and Guru, whatever Guru wants, that words reach to the heart and soul of every soul who is listening, every viewer. And you will feel the rainbow, the colorful, beautiful, joyful emotions in your heart. That is the power of Guru. And that is why we are here together,
चलो दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, मैं तो एकदम मूड में आ जाता हूँ। इतनी सुंदर स्टोरी है, इतनी सारी बातें हैं, तो मजे भी करते हैं, कुछ सीखते भी हैं और आगे भी बढ़ते हैं। थैंक यू। अरे ये तो आपकी बात, एकेडमिक्स में आपके पास भी बहुत मसाला है भाई। मुनीरा जी बताइए। Yeah, but from childhood, I was not that much academic. I was more into extracurriculars, singing and sports and all that. But with the limited opportunities, I did not get to think about even building a career in extracurricular fields. Yeah, and I was not that much of a studious, not serious about studies, but my memory was good. I was I was excelling in studies. I got a chance to have good percentage in 12 science. Before that, I would like to say one small story. Uh, uh, that suggests that personality of mine, that once I put put my mind into something, I make sure that I achieve that I just learned that thing about myself by telling my story. So I was in 10th, and I passed out in 10th, and I got 87 percentage. And I Wow. have an elder brother, so he's 2 years older than me, and he passed 10th standard with more numbers, with 90 percentage in 10th. Wow. And so my father wanted him to become a doctor. So even he took out the loans and all that, and he made sure that he get enough opportunity to study and excel. But somehow he couldn't do much in 12th, percentage wise, performance wise. And just he passed his 12th science, and his result came around I don't low percentage. And same time I got my 10th result. So my father said that you had less percent, he had more percentage than you in 10th standard, and see how he has performed even with this much of opportunities, all the tuitions and all that. Very So good. so I want you to study in commerce. And since childhood, my mother that okay, our upbringing is that that girl has to do the house chores, and she सही। has to she's a homemaker. And my mother, my after my father remarried, my mother said that you have to learn all this thing, and I used to hate that high house chores. I didn't like that, so I used to tell my mom that I will not do house chores. I will pay someone, I will earn and I will pay someone to do the house chores. So my mother said that you have to study for that, you have to be extraordinary for that. How can you be so that way that thing was in my mind, that I don't want to be a homemaker, I want to be more than that. And that way also that was in my mind. Also commerce and account was beyond my grasp. So I thought that I will fail if I study commerce. So I was keen to study in science stream, so I took a hunger strike. And against my father's will, I told him firmly that I want to study science, otherwise I will be happy to be a 10th pass out, I will not study more. So yeah, he bowed down to my jid, to my affirmation. And even I promised him that I don't need your financial help, just enroll me any school you want, just pay the school fees only, and I will study on my own, I don't need any क्या बात, tuitions. क्या बात है। So I didn't know that I will excel in science stream, but at that time I thought that I don't have any other choice than to study in science. And that way, eventually, by God's grace, uh, I got good percentage, and I got admission in PDU Medical College Rajkot in MBBS. वेरी वेरी ट्रू, Yeah. वेरी ब्यूटीफुल थिंग। Congrats. इसमें थोड़ी मस्ती कर सकता हूँ मैं आप लोगों के साथ। Definitely कर सकते हैं। तो ये जो बातें हैं धवल जी, आप सुन रहे हो ना कि Yes. इनकी जीत के सामने तो उनके पापा को भी जरा यूं हो जाना पड़ा था।
तो तो फिर हम आपको किसके भी कुछ ऐसा अनुभव हुआ क्या कभी? एवरी डे। दिन रात? नहीं, ये तो घर घर की कहानी है। कोई कितना भी शेर बन के चलता हो, घर पे जाके तो माँ आद्य शक्ति की ही आराधना करनी पड़ती है। हम सबको शेरा वाली बैठी होती है शेर के ऊपर। So he's a तो very smart because he's a psychiatrist, no? So he knows that. So he हाँ, let me think that I dominate and all the decisions are taken by me, but he drives me to that decisions, and he shows me that I do whatever you tell me to do. हाँ, बराबर है। तो यानी कि कहना तेरा लेकिन करना मेरा। Yes. दिस इज द एडवांटेज ऑफ साइकेट्रिस्ट। बट मैं आपको ध्यान मार्गियों को एक हिंट देना चाहता हूँ कि जो साइकियाट्रिस्ट भी नहीं समझ सकता, वो एक योगी समझ सकता है चित्त शक्ति से। और योगी की चित्त शक्ति इतनी सशक्त हो सकती है अगर चित्त पवित्र है तो। ओके, अपवित्र है तो सशक्त होके फिर बाद में आपको गिरा देगी। अगर पवित्र है तो आप जो कुछ भी चाहते हो वैसा ही होता है। तो आपकी चित्त शक्ति उस बचपन की जिद में भी मुझे तो यही दिखता है। दो फैक्टर, मुनीरा नाम में भी मैजिक है। जो डैडी ने जो नाम रखा था वो बहुत प्यारा था। सूक्ष्म रूप से मैं आपकी आत्मा से जुड़ता हूं तो मुझे दिखता है कि आपकी जन्मदाता जो माँ थी उसकी कृपा आपके ऊपर बहुत है, उसका चित्त आपके ऊपर बहुत है। और आपके जो संस्कार और जो भक्ति भाव और जो अ, मस्ती जो है आपके जीवन में, वो मम्मी जी का आशीर्वाद है। तो मैं आपकी जन्मदाता माता और आपकी जसोदा माता दोनों को प्रणाम करता हूँ। आप दोनों के मम्मी पापा को, दादा दादी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनके संस्कार, उनके प्रेम की वजह से आज हमें इतना प्यारा कपल मिला है, ऐसी दंपति मिली है जिसके साथ बात करके हमें इतना कुछ सीखना मिल रहा है, समझना मिल रहा है। दो चार बातें, परिवार में या समाज में अक्सर जिस तरह का माहौल रहा है, लोगों की परंपरागत विचारधारा बनी है। आप समझो, ये जो हमारी माइंडसेट, हमारी मेंटालिटी जो है ना, हम कहते हैं कभी कभी मजाक में, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, भाषा छोड़ के गए। वैसे ही सांप चले गए लेकिन लिसोटा रह गया, ऐसे हम कहते गुजराती में। तो कुछ ट्रेडिशनल, कुछ एनवायरमेंटल, कुछ सोशल, कुछ आजू बाजू के पारंपरिक ट्रेडिशन की वजह से या व्यवहार की वजह से एंसेस्ट्रल पैटर्न बन जाती है। माँ बाप, परिवार सब ऐसे सोचता है, सीखता है। इनफैक्ट व्हेन ब्रिटिशर्स स्टार्टेड रूलिंग ओवर इंडिया, they found that out of all the colonial countries, जहां जहां पे उन्होंने अपना डंका बजा के रखा था, India was one of the most intelligent land of people. Okay, so to rule over other parts of the world also, they were not taking slaves from India like they were doing from the Africa. They were taking the intelligence of India. और मेरे पिताजी ये मुझे बार बार कहते हैं कि भारत का इंटेलिजेंस एक्सपोर्ट हो रहा है। जब मैं शादी करके आया तो वो मुझे भी कह रहे थे कि तू बाहर जा रहा है यानी कि हमारा इंटेलिजेंस बाहर जा रहा है। लेकिन शायद उसमें भी कुछ अच्छा होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। और उसकी वजह से ब्रिटिशर्स व्हाट दे वर डूइंग, ब्रिटिशर्स वांटेड इंडियन स्मार्ट पीपल, स्मार्ट यंग पीपल टू कम टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में आके और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आके वहाँ की एजुकेशन सिस्टम से इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनाना चाहते थे। एंड दैट कल्चर बिकेम द ट्रेडिशन। आप किसी भी इंडियन परिवार को देख लो, सब चाहते हैं मेरा बच्चा या मेरी बच्ची डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ओके, ये माइंडसेट बन गया था। क्यों? इसके बीज 200 साल पहले बोए गए थे और अभी तक हमारे यहाँ चल रहा है। जब स्वामी जी से मैं मिला, मेरे दो बच्चे थे और है अभी भी। छोटा वाला सिर्फ तीसरा साल उसने शुरू किया। इनफैक्ट तीसरी बर्थडे पे ही स्वामी जी आए, गणेश चतुर्थी का दिन था, सुंदर दिन था उस वक्त पे जब स्वामी जी हमारे घर पे पहली बार आए। तो कनाडा में था, हम मॉन्ट्रियल में। और दूसरा 7 साल का था। स्वामी जी ने हमें कहा, इनको तू कभी भी ये मत सोचना कि ऐसा बनना चाहिए वैसा बनना चाहिए, उनको अपनी तरह से स्प्रिंग होने दे, जो कुछ भी अच्छा लगता है। आज मेरे दोनों बच्चे न साइंस में है, न कॉमर्स में है,
आर्ट्स में है, एक इंटीरियर डिजाइनर है छोटा वाला, और बड़े वाला ग्राफिक डिजाइनर है, और बहुत अच्छी तरह से कार्य करते हैं। कहने का मतलब, society program us. Society sometimes knowingly, unknowingly, by ancestral habit, way of thinking, discriminate करता है परिवार में बच्चों के साथ या दूसरे लोगों के साथ। तो ये हमारे लिए जनरेशनल कर्स बन जाता है, ये हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो हमें अगली पीढ़ी के लिए गुरुदेव के संस्कार को लेके आगे बढ़ना है। समर्पण परिवार में है तो हमारे यहाँ लड़का है या लड़की है वो नहीं देखना है, हमारे लिए एक पवित्र आत्मा है, उस आत्मा का कर्म का कुछ ऋणानुबंध है मेरे साथ या समाज के साथ, संसार के साथ, वो पूरा करने के लिए वह आत्मा धरती पर आई है। उसको जिस तरह से कार्य करना है, पढ़ाई करनी है, जीवन में आगे बढ़ना है, एक माँ बाप की तरह, एक साधक की तरह, एक पवित्र आत्मा की तरह मैं उसमें अपना योगदान दूंगा या दूंगी। एंड लेट देम स्प्रिंग द वे दे वांट टू स्प्रिंग। ये गुरुदेव के संस्कार है, ये हमारे लिए एक बहुत सुंदर धरोहर है जिसको हम आगे ले जाएंगे। तभी if we will stop making differentiation between male and female gender, then that soul will spring beyond gender mentality. And that's why recently I released one video on our soul satsang, LGBTQ I love you as my soul family। और उसमें भी टीआईएस का ही इंटरव्यू का मैंने एक एपिसोड लिया है लोगों को एजुकेट करने के लिए। ये बहुत जरूरी है कि हम समझे हम किस तरह से सोच रहे हैं और हमारे जीवन में सुख और दुख क्यों है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इसका बहुत डीपर इम्पैक्ट है। आप जैसे साइकोलॉजिकल माइंड के और इंटेलेक्चुअल माइंड के लोगों के साथ ये स्प्रिंग हो रहा है, यानी कि एक दिशा मिल रही है हमें इस डिस्कशन के माध्यम से, क्योंकि गुरुदेव शायद हमें कुछ और आगे डेवलप करने के लिए, साथ में करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो दैट वाज वन थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर। एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आया और रह गया, एकादशी के व्रत का फल आप दोनों को मिला है। एकादशी का व्रत मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों करते थे, और मेरा योगदान सिर्फ इतना ही रहता था, मैं खा पी के उनके अच्छी अच्छी जो फरार की चीजें थी उसमें एंजॉय करता था, और रात को मेरे पिताजी दुकान से आ जाते थे तो मेरी मम्मी के साथ और उनके साथ बैठ के मैं एकादशी की कथा पढ़ता था। अगर आप ये व्रत करोगे तो आपको ये पुण्य मिलेगा, अगर आप ये करोगे तो आपकी ये प्रगति होगी, और इससे आपको मुक्ति मिलेगी, और वैकुंठ में जाओगे, कैलाश में जाओगे, ये सब उन्होंने बताया। एकादशी क्या है वो मैं मेरी समझ से जो समझा हूं वो आपको सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। एकादशी इज द 11th डे ऑफ द राइजिंग और क्या बोलते हैं वैक्सिंग क्रेसेंट मून। तो वो या सो मून की जो पोजीशन है 11th डे को on that day we do fasting, and there is a spiritual significance for Ekadashi Vrat. We have 5 senses that we know, okay, sight, hearing, then taste, breathing, nostril, and touch. These are the 5 senses. We call it Gyanendriya, the senses for absorbing or getting the information. And there are 5 senses that help us to perform. Okay, so sometimes it is the same sense that makes us speak. So there are actions that we do, including the procreative organs or genitals that helps. Okay, so my point is 5 senses of knowledge and 5 senses of action, that is total 10. And what is the 11th one? Mind. If we can control, if we can master this 11 aspect of our life, it will help us to excel in our spiritual journey. Understand that. Yama Niyam, that means do's and don'ts of any religion or any scriptural guidance or any wisdom or worshipping method that helps you. It is good, but
in the Sanatan Dharma, most important is not yam or niyam. Most important is sanyam. Sanyam is control, pratyahar. Okay. When we go beyond our senses, by doing fasting, what we are saying, I am not going to allow my mind to go into the indulgence of eating the food or drinking this or that. Mind is controlling those senses. That is the pratyahar, that is the sense in control. Okay. Withdrawal of senses. Senses are there, but we are withdrawing our sense from getting indulgence into that. That is the ultimate aspect of Ekadashi. And when you do that, you are disciplining your mind. And when you discipline your mind, then pratyahar leads you to dharana. Then you can focus well, because you are not getting distracted by the food or sensual pleasure or anything else. Okay. And then somebody like Shiv Krupanand Swamiji comes, teach us meditation, and then one day we can reach into the state of samadhi, or we reach into the transcendental meditation. So that is the ultimate. देखो आपके जीवन में जो जो हुआ है उसका फायदा आपको अभी कैसे मिल रहा है, और ये बेसिस कैसे माँ बाप, परिवार, समाज और गुरु के जरिए हमारे जीवन में काम आता है. बहुत सुंदर है. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट. और मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसके जरिए हम अपने समर्पण परिवार को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, एक रूप बना रहे हैं, आत्मीय बना रहे हैं. तो थैंक यू. अगले क्वेश्चन पे जाएं. आपको मजा आ रहा है? यस, वेरी नाइस. इस एंगल से आपने शायद अपने जीवन में पहले नहीं सोचा होगा, देखा होगा. I was going to tell that you are giving beautiful summary and interpretation of the events. मैं अपना इंसाइट देता हूँ जो मैं देखता हूँ, और इस जरिए मैं अपने ऑडियंस को सिखाना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान के जीवन में आप पॉजिटिवली देखोगे तो पॉजिटिव बहुत कुछ है, लेकिन समाज ने हमको नेगेटिव देखना सिखाया है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं, नेगेटिव मार्ग पे, गलत रास्ते पे चले जाते हैं. तो पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव कार्य करो. गुरुदेव हमारे साथ हैं और गुरुदेव हमें उस दिशा में आगे ले जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2. बहुत सुंदर सुंदर बातें हुई. आपकी जो अपब्रिंगिंग है उसमें से इतना कुछ सीखना मिला. तो अभी हमारे जो साधक है ना, आपकी प्यार भरी मुस्कान देख के ये जानना चाहते हैं कि भाई ये लव बर्ड मिले कैसे, कहाँ पे उनकी मुलाकात हुई और कैसे ये मिलन हुआ. चलो भाई उसके बारे में थोड़ा सीक्रेट खोल दो हमारे सामने. Yes, so I think I'll start. और कुछ गलत हो तो माफ करना. You can also add. नहीं, यहाँ पे कोई माफी वाफी नहीं चलेगी. यहाँ पे सिर्फ स्वामी बोलता है, स्वामी सुनता है, कोई माफी नहीं, सिर्फ प्यार बहेगा. Yes. He's telling in public, so I don't scold him afterwards that you said this and that. और मैं भी पब्लिक में उसको डिपेंड कर रहा हूँ कि आप उसको डांटना मत. This is a subtle disclaimer maybe. Okay. ठीक है. तो yes, we came from our respective backgrounds and finally we both got admission into MBBS. और जैसे कहते हैं कि किस्मत एक ही कॉलेज में, हम दोनों का एक ही बैच किया एक साथ. तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज, which is the government medical college in Rajkot in Gujarat. So after 12th standard, I was getting admission in Rajkot, Jamnagar, Surat, and our family, we preferred Rajkot because it was nearer to our town, Kandida. And these are all government medical colleges, so they have more or less the same grade of education. So we preferred Rajkot, and she was also getting admission into various medical colleges. But yeah, my father was very much against the idea of sending me to the other town for studies. Yeah, because of the financial reason, social reason. Because my Bua's husband, my Fufa, was an astrologer in some way, and he told him that if you send your girl to study outside of Ahmedabad, she will choose the boy herself and marry him. So ये बेटी हाथ से निकल जाएगी, सीधी भाषा में. Very accurate. He was very accurate in forecasting.
So my father was against I again because I was getting admission in Ahmedabad only in dental fact, and I told my father I don't want to be a dentist. I want to study MBBS. So you don't need to help me financially. I will manage that. क्या बात है? I don't know how I had the audacity to tell him without any having source of any income, but I told him that I want to study. And yes, because my relative was in Rajkot, so that way he chose Rajkot because he can keep an eye on him, eye on me, not him. So yes, that way I choose to get admission in PDU Medical. So in 2005, we got admission into the medical college. And yes, my background was, I was from an English medium convent educated person. And it was a little bit easy for me to grasp all the subjects. And because I was a bookworm, so the first year in medical college also, I didn't have any other like orientation, or like I didn't have any other guidance. So I thought कि भाई जैसे स्कूल में पढ़ते हैं 11th standard, 12th standard क्या है कि भाई you have to study everything, you have to read all the lines, पूरा chapter याद रखना है, and that is what is expected out of the student. So I was student even in the first year of the college until I met her. Yeah, so एक ही चीज था कि भाई पढ़ाई है अच्छा, and medical you know it's a very lengthy course, a very big one. Yes. और कोई कहने वाला नहीं था कि यार थोड़ा चिल करो, चलता है. The only time we used to hear his voice was yes sir when sir was taking attendance, and our girls group, my girl group was notorious, very much notorious since the first year for making noises and being very naughty. And she was the leader of the. I was the Don. I was called Don. अरे वाह, आप तो बहुत कुछ गुरुमा की वेवलेंथ की हो. गुरुमा और स्वामी की स्टोरी है आपके. हाँ, गुरुमा भी मस्ती में है, स्वामी जी शांत है. वैसे दैवत भाई थोड़े शांत है और आप मस्ती वाले हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं, सिंगिंग और सब कुछ है. सही. Right. You're right. You're right. So first year 2005 वो तो हमारा वैसे बीत गया. We were classmates, but हाँ इतना पता था कि ये जो थोड़ी बहुत लड़कियों का ग्रुप है, ये बहुत बोलते रहते हैं, मजे करते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं. And after first year it struck me कि भाई ये लोग भी सब पास हो गए. अरे वाह. हाँ, तो ये लोग मस्ती कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, और फिर पता नहीं कैसे पढ़ भी ले रहे और पास हो गए, और मैं भी पास हुआ. ठीक है, तो कॉलेज में तो उतना परसेंटेज दे डोंट मैटर, जैसे हमें पता है अब यू जस्ट पास दैट ईयर, सो दैट्स गुड फॉर यू, टिकट ही नहीं है, यू आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड. सो फर्स्ट टाइम आई थॉट कि यार ये जो ऐसे कर रहे हैं तो ये लोग भी कैसे लाइफ भी एंजॉय कर रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग मोर देन मी, एंड स्टिल दे आर एट माय वेवलेंथ. तो उतना पता चला कि हाँ भाई गलत नहीं होता, मस्ती कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, थोड़ा बंक भी कर सकते हैं, एंड ऑल्सो विथ एवरीथिंग इन योर लाइफ यू कैन बी अ गुड अचीवर. तो दैट कॉन्सेप्ट व्हिच वाज नॉट देयर सिंस बर्थ, वो था ही नहीं. दैट कॉन्सेप्ट आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू लुकिंग एट हर. Yeah, he used to admire me, but he was very afraid to approach me. वो तो कॉलेज के दिन में वो उस वक्त पे क्या 19-20 की उम्र होगी आप दोनों की, तो दैट इज नॉर्मल कि opposite attracts, that is normal, or different personality should always inspire each other because it adds the color and diversity. Yes. And I had never actually talked to a girl in my school. अरे बाप रे. नोट्स मांगनी है या पूछना है एकेडमिक के अलावा कोई बात ही छोड़ दो, कभी कोई बात ही नहीं हुई है. तो मेरे केस में ऐसा नहीं. स्टेट ऑफ माइंड मेरा कैसा था. And I was like, I used to give smile to everyone. So I was like a charming, good to go, happy to go lucky. She was the heart of the party in a way. क्या बात है. Yes, and in one birthday party, I saw her enjoying thoroughly, smiling at everybody, and she smiled at me also. I was very much fascinated. And, yeah, and I think I was under the wrong impression that because she smiled at me, she likes me specifically. But that's a thing. That misconception, I say that was a good one. So that's the beginning of illusion. Yes, that illusion. And maybe that illusion powered me little bit.
Otherwise, I would have been always nervous and would have never हाँ. approached her, never talked to her. So yes, that was an illusion. Maybe that helped me. Very beautiful. That boost तो his अभी मैं confidence. आपसे सुनना चाहता हूँ मुनिरा जी कि Yes. आपकी पर्सनालिटी तो बहुत बबली है, तूफानी, मस्तीखोर. Yes. मैं भी वैसा ही था. मैं वैसे कुछ जगह पे शांत और शाय था, लेकिन जब मस्ती करनी है तो बहुत मस्ती करता था दोस्तों के साथ. तो आप मुझे बताइए, with that personality you must be looking for somebody as a companion or friend who is of the same wavelength, यानी कि मस्ती वाला तूफानी लड़का होना चाहिए. ऐसा आपने कभी नहीं सोचा था? No, actually, इसमें किधर फंस गए? I keep wanting to ask. I didn't I didn't give it much of a thought. Just eventually things happen on their own. Or actually, he is more humorous than me. After I got to know him better, that he is very humorous and he is sarcastic as well, just like Swamiji. Swamiji puts the comments that touches your heart. So he's Yeah. just like that. And what impressed me more is that he was the most intelligent person in our class. So I Yeah. wanted to have somebody who can from whom I can learn something. Okay, I was Yes. eventually already enjoying my life as it was. So भगवान का दिया हुआ it बाकी is तो good सब to have a companion who is knowledgeable and also at the same time humorous also. He is very humorous. So तो now एक our बात personalities have been opposite. Like we have become a Everything, YouTube. So it has we levelized. are at the harmony that he is the more talkative one now, and I am the calmer, हाँ. more lot. तो वो तो हमारे जीवन में ऐसे ही होता है. मैं आपकी बातें सुन के थोड़ा अपने बचपन में चला जाता हूँ, और उन दिनों में वो एहसास होता है पहली बार वो हंसी तो फंसी वाला, वो भी मैं महसूस कर सकता हूँ कि Yes. क्या आपकी स्टोरी में से हो रहा है. लेकिन मैं Actually, आपको our colleagues and classmate has made a bigger role in Played a making us a bigger role. couple. So वही होता है, वही I होता used है. to give him a smile and he was shy. So everyone was teasing that she is giving you बेचारा only वो a smile. वो आइस का पुतला होता है ना, वैसे पिघल के खकर वैसा हो जाता है. Everyone was encouraging him to approach me that she is only लेकिन giving एक बात you है, the smile. आपने They are not getting smile. आपने ये बात बोली वो सही है, लेकिन कुछ आगे भी हुआ. ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से आप थोड़े करीब आए. वो तारीख कौन सी थी, वो दिन कौन सा था, वो बात क्या थी, जरा वो इवेंट, वो ओकेजन हमें बताइए. आप छुपा छुपा के मत रखिए. नहीं. No, so yeah, I will continue. Actually, ये हुआ कि first year जैसे मैंने बताया, it went on like this. When we came in the second year of the college, तो बात ये थी कि we were to host the annual function. So it was a tradition that second year students they host it. So from our batch, there were 50 people in our batch. So not a very huge crowd, and we had to organize the whole event. और जैसे ट्रेडिशनल रहता था कि एंकरिंग में देयर इज अ मेल को होस्ट, देयर इज अ फीमेल को होस्ट. तो एक कपल में इस तरह से एंकरिंग रहता है. मल्टीपल स्टेज एंट्रीज आर देयर, बीच में थोड़ा ह्यूमर है, थोड़ी क्रिएटिव चीज है. तो दैट वाज देयर. जो बॉयज का ग्रुप था, तो उसमें से लाइक आई वाज प्रमोटेड. सभी ने कहा कि बिकॉज यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा बहुत अच्छे से कन्वे कर पाएगा. प्लस एक फैक्टर था थोड़ा इंग्लिश का, दैट यू कैन लिटिल बिट टेक कंट्रोल ओवर दोज लाइंस, जो फॉर्मेलिटीज होती है, जो थोड़ा फ्लॉलेस तरीके से डिलीवर करना रहता है. एक्चुअली थोड़ा बहुत नर्वसनेस था, बट बिकॉज आई एम इंटेलिजेंट तो थोड़ा ये था कि हाँ चलो ये कर लेंगे, दैट इज ओके. So somehow I landed up in that role, and from the girls, I think there was a handful girls only, in a single digit maybe in the class, and because she was a leader, तो naturally एक यही सेट था कि भाई अपने में से कौन करेगा, तो ये करेगी. तो फर्स्ट टाइम जो कॉमन जॉब, इट वाज लाइक अ कॉमन वर्क फॉर अस. कैसे कह सकते हैं गुरु कार्य नहीं, लेकिन कार्य कार्य के लिए इकट्ठा हुए. वेरी So नाइस. we were managing, we had to manage the whole program and we had to host it. सारे प्रोग्राम की सीक्वेंसेस, एंट्रीज, किस तरह से उसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाए, कैप्शंस, इंट्रोडक्शंस. तो जैसे आपको पता है बहुत सारी चीजें रहती है.
प्लस टेक्निकली ऑल्सो मेरा थोड़ा अच्छा बैकग्राउंड था, तो कलेक्टिंग द ऑडियो विजुअल्स ईवी टीम का जो थोड़ा रोल था वो भी मुझे करना था. And she had also an entry, I think maybe a dance song or something which was Yes. fusion. और उसे वो नहीं पता था फ्यूजन, तो आई ऑफर्ड कि लाओ मैं करके देता हूँ. Yes. तो क्या फर्स्ट बात है। टाइम इस कंप्यूटर सिस्टम, तो इट वाज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस. जैसे मैंने कहा ना कि इस लड़की के साथ अलग से बैठ के कभी कोई डिस्कशन कुछ काम ही नहीं किया. ओनली टाइम टॉक टू समवन वाज इन द क्लासरूम. So I was learning, having new experiences, and I was exploring कि okay चलो this is a good friendship. जैसे लड़कों के साथ अच्छी फ्रेंडशिप होती है, तो लड़कियों के भी साथ भले लोग चिढ़ाते हैं whatever, but with a person you can be a good friend irrespective of कि भले मेल है या फीमेल. I was exploring सही। that part and I was enjoying कि चलो अच्छे से एक नया कोई नए जेंडर में एक फ्रेंड बनाया. That was the first for me. सही सही है। ये ब्यूटीफुल स्टोरी है और बहुत हार्ट टचिंग फॉर द यंग साधक एंड साधिका जो समर्पण में है या बाहर से नए आने वाले हैं उनके लिए है कि दिस हैपेंस इन एवरीबॉडीज लाइफ. इनफैक्ट कि लोगों का एक दूसरे के साथ नाम जोड़ देना, चिढ़ाना और फिर बाद में उसमें से एक दूसरे के दिल में प्यार का जन्म होना और वही प्यार दो आत्माओं का मिलन का कारण बन जाना, ये सब बहुत सारी कहानियों में आपने सुना होगा. हिंदी फिल्म में भी ऐसा ही बेस्ड बना है. तो आपकी स्टोरी एक रोमांटिक लव स्टोरी जैसी बन सकती है. इसको मैंने थोड़ा इसलिए थोड़ा मस्ती में खींचा है ये प्रश्न को, लेकिन क्योंकि आपके अंदर जो वाइब्रेशन है ना, उसी वाइब्रेशन को मैं बाहर निकाल सकता हूँ एज ए क्या बोले होस्ट. तो बहुत कुछ आपके पास है और वो प्यार आपने उस कॉलेज के दिनों में शुरू हुआ. उसमें मैं देखता हूं कि परमात्मा कैसे सोलमेट्स को मिलाता है. कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं अपना सोलमेट कैसे पहचानूं. मैंने आपको कहा ना कि इस सारी कहानी में मैं सोलमेट के बारे में, आत्मा से आत्मा के रिश्तों के बारे में बोलूंगा क्योंकि ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है एंड यू आर वेरी स्पोर्टिंग सोल्स. तो उनके साथ बात कर सकता हूँ, आपको बुरा नहीं लगेगा इसका मुझे विश्वास है. और मजा आता है क्योंकि नए यंग साधक साधिकाओं को भी अपने दिल में कई अरमान हैं, कई मनुष्य के स्तर पे भाव हैं. उसको वो समर्पण में आए तो एकदम सीरियस हो जाते हैं, ऐसे जैसे वो डब्बा जैसा हो जाते हैं और हमको सीरियस रहना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो लोग निकाल देंगे, ये लोग गुस्सा करेंगे. और उसके ऊपर फिर बाद में बहुत सारी क्या बोले लेयर है डिसिप्लिन की, पोजीशन की, वो हमको डू दिस डोंट डू दिस यम नियम में डाल देते हैं. लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ डे मुझे अगर आत्मा बनना है तो मुझे अपनी आत्मा के भाव को व्यक्त किए बगैर मैं आत्मा नहीं बन सकता. आत्मा वह है जो भीतर के प्रेम को एक्सप्रेस कर सकती है विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. संसार में अगर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार भवरोग में जन्म लेने की बारी आती है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें दबाव में रखा गया है समाज के जरिए, परिवार के जरिए, ट्रेडिशंस के जरिए, रिचुअल्स के जरिए. उसको तोड़ना पड़ेगा. जैसे वो मामा जी ने कहा था ना कि फूफा जी ने कहा था ना कि ये लड़की आपके हाथ से निकल जाएगी अगर अकेली पढ़ने जाएगी तो. सो उसमें क्या होता है, हाँ एक तरह का ज्योतिष शास्त्र मार्गदर्शक भी बन सकता है और दुविधाओं को रुका भी सकते हैं हम लोग. लेकिन यहाँ पे दुविधा थी नहीं, वो मान्यता थी फुआ जी की और मम्मी पापा की कि लड़की हाथ से निकल जाएगी. ये बेसिक मैं सीधी भाषा में बोलता हूँ क्योंकि सत्य नग्न है, सत्य को सत्य की तरह सुनना पड़ेगा हमको. ओके. तो परिवार में लोग ये सोचते हैं क्योंकि परिवार सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक रूप से सोचता है और माँ बाप को कई ताने, कई दिक्कतें लेनी पड़ती है क्योंकि परिवार उंगली दिखाता है कि इसकी बेटी तो लव मैरिज करके गई, इसकी बेटी तो अपनी कास्ट में नहीं दूसरी कम्युनिटी में, दूसरी कास्ट में चली गई. ये हमारा हिंदू परिवार, हमारा हिंदू सोचना है. और वर्ण प्रथा है, फिर बाद में ये लोग तो ब्राह्मण है, ये तो ब्राह्मण नहीं है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये सब आता है फिर बाद. ओके. लेकिन हम इसीलिए अलग अलग सामाजिक वर्ग में जन्म लेकर आते हैं.
हम इसीलिए अलग अलग धर्म में, अलग अलग पंथ में जन्म लेकर आते हैं, ताकि हमारी मनोवृत्ति जो पूर्व जन्म में थी उसी तरह से हम निर्णय लेंगे या अलग तरह से निर्णय लेंगे इस जन्म में, इसकी कसौटी होती है। अगर आप ब्राह्मण थे पूर्व जन्म में और आपने किसी शूद्र को अपमानित किया या दुखी किया, इस जन्म में आप शूद्र बन के आ सकते हो और वो ब्राह्मण होके आएगा, और तब दोनों का इंटरेक्शन क्या होगा उसके ऊपर अगला जन्म निर्णय नहीं होता है। इसलिए गुरु के ज्ञान की, गुरु की प्रकाश की बहुत जरूरत है। ओके, तो ये आत्माओं का मिलन ऊपर वाले का खेल है, ये लीला है, और इसीलिए उस लीला में हम तो सिर्फ कठपुतली हैं। हम सिर्फ पात्र के रोल, डायरेक्टर तो वही है। जैसे गुरु आता है और गुरु सिर्फ समझाता है कि देख बेटा, तेरी स्टोरी में मुझे यह दिखता है। अभी गुरु कृपा में मुझे ऐसे दिख जाता है आपकी बातें सुन सुन के कि यहाँ पे क्या परमात्मा खेल खेल रहा है आपके साथ। और मैंने खुद ने भी ऐसे देखा है ना, मैं खुद भी उसी में गया हूँ। मेरे जीवन में आपकी बातें सुन के स्कूल कॉलेज के दिनों में ये सब हुआ है कि किसी ने किसी का नाम जोड़ दिया और फिर प्यार हुआ, फिर बाद में किसी ने तो हंसना ही छोड़ दिया, तो फिर प्यार भी एक तरफा ही रह गया और बेचारा देवदास हो गया। ऐसा करते करते वो मुकेश के गाने गाने लगा, तो लोगों ने मुकेश के गाने के नाम पे इसका नाम मुकेश रख दिया। फिर वो दर्द भी चला गया, सिर्फ गाने रह गए। उसमें फिर दूसरी हीरोइन आ गई, फिर दूसरी हीरोइन आ गई और परी की तरह उड़ा के ले गई। लेकिन दूसरी हीरोइन में धर्म का बंधन आया। वो क्रिश्चियन धर्म का पालन करती थी, मैं हिंदू धर्म का पालन करता था। तो वहां पे मेरी कसौटी थी कि पूर्व जन्म में जो गलती हुई थी, इस जन्म में दूसरे धर्म को मैं स्वीकार करता हूँ या परिवार के दबाव में आके अस्वीकार करता हूँ। ये सब दिक्कतें आई मेरे जीवन में। मैं आपके साथ मेरी स्टोरी को जोड़ के लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ होगा। उसको देखो, अपनी आत्मा को पहचानने के लिए अपने अनुभव में भीतर जाके देखना पड़ेगा। तब पता चलेगा कि मेरी आत्मा क्या थी, मेरी आत्मा कौन थी, और मेरी आत्मा आज क्या है और किस तरह से सोचती है। गुरु का आशीर्वाद मिला, गुरु का प्रकाश मिला, गुरु का चैतन्य मिला, उसको मैं किस तरह से आत्मा के रूप में स्वीकार करके आगे ले जा रहा हूँ या ले जा रही हूँ, वो देखना है। तो परमात्मा की कृपा से आप मिल भी गए, और क्लास के हिसाब से देखें, सामाजिक वर्ग के हिसाब से देखें, तो देयर वाज अ बिग गैप, देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ मेंटालिटी, डिफरेंस ऑफ फैमिली बैकग्राउंड। फिर भी कहीं ना कहीं एकादशी का व्रत जुड़ गया। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एकादशी का व्रत जुड़ गया। धार्मिक भावना, आत्मा की स्थिति और प्रेमी जो होते हैं ना, मिलके ही रहते हैं। अब मैं इस वक्त पे कुछ लोगों को कहना चाहता हूँ कि सामाजिक रुधिचुष्टता की वजह से हमें कभी कभी माँ बाप की इज्जत न बिगड़े या माँ बाप का नाम न बिगड़े, इसलिए अपने प्यार की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किया है, लेकिन वो भी अंदर फिर दोष बन के रह जाता है। पूर्व जन्म में ऐसा कुछ हुआ होगा, वर्तमान में ऐसा हुआ है, तो फिर से पुनर्जन्म के लिए वो भी कारण बनता है। आपकी कहानी एक सफल प्रेम कहानी है, दो आत्माओं की कहानी है। हम इसे लव बर्ड कह सकते हैं, सोलमेट कह सकते हैं, ट्विन फ्लेम कह सकते हैं। एक कैंडल की दो ज्योत, ट्विन फ्लेम कह सकते हैं। आत्मा भी एक है, उसमें एक दूसरे की क्वालिटी कॉम्प्लीमेंट करती है। और जब दो सोलमेट्स होते हैं, उनका सबसे बड़ा ये रोल है कि सोलमेट एक दूसरे को अपनी स्ट्रेंथ से, जैसे दैवत भाई इंट्रोवर्ट थे, आप एक्सट्रोवर्ट हो। जैसे दैवत भाई कम बोलते थे, आप ज्यादा बोलते हो। टैलेंट वाइज, इंटरेस्ट वाइज, तो वो कॉम्प्लीमेंट करता है। मेल फीमेल, डिवाइन मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, शिव और शक्ति एक दूसरे को मदद करती है। वह पवित्र कपल बन सकता है। आपकी तरह मैं बोलूँ ना, तो जब मैंने अपने परिवार को बताया कि मुझे कल्पना से शादी करनी है, और परिवार ने ज्योतिष को बताया, तो उन्होंने तो सीधा बोल दिया कि लड़की उत्तर में जाएगी, लड़का दक्षिण में जाएगा, लड़की पूर्व में जाएगी, पश्चिम में जाएगा। तो मैंने पंडित जी को बोला, देखो भाई, ये आपका ज्ञान है ना, मुझे बहुत उसके लिए आदर है। अभी आप आपके ग्रह की जो पूजा करनी है करो, और उस ग्रह को हम मना लेते हैं। लेकिन
25 दिसंबर को मुझे एंगेजमेंट करना है और 31 को शादी करनी है, मुझे अगले साल तक नहीं रुकना है, आप कर लो जो करना है वो। फिर मेरे पिताजी मेरी वाइफ को बोलते थे, शादी भी नहीं हुई थी, तुझे रोटी खिलानी पड़ेगी, ये निकम्मा है ऐसे उसको डराया मेरे पिताजी ने। लेकिन फिर भी मैं बोला, मुसीबत को मैं झेल रहा हूँ ना, आज 35 साल हो गए ये 31 दिसंबर को, हम अभी भी अच्छी तरह से जी रहे हैं, और सिर्फ मेरे 2 बच्चों के साथ तो सुखी जीवन नहीं है, मैंने समर्पण अमेरिका जैसा बहुत बड़ा आत्मीय परिवार बनाया है। और आज गुरु कृपा में और माँ बाप की कृपा से मैं इतना कहता हूँ कि सभी ऋणानुबंध से भी मैंने अपने आप को मुक्त किया, क्योंकि मुझे ऐसा सदगुरु मिला, सदगुरु मिला जिसे जीवन में, वो तो है सद्भागी, गुरु चरणों में हर साधक की, सोई आत्मा जागी के जप ले, बाबा स्वामी नाम, बाबा स्वामी नाम। उस बाबा स्वामी के नाम से हमारी आत्म जागृति हुई है, आत्म ज्ञान मिला है, और 2 प्रेमी पंखी मिले हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। दिस इज समर्पण में आगे बढ़ते हैं। आपको और कुछ कहना बाकी रह गया, वो बता दीजिए, वो उस प्रसंग में कौन सी तारीख को मिले थे, क्योंकि उसमें भी एक बहुत बड़ा संकेत है भाई तारीख का। हाँ, तो एक्चुअली जैसे हमारा फंक्शन कंप्लीट हुआ ना, वी डिड अ सक्सेसफुल इवेंट, so we wanted to celebrate that. So we three our one more colleague was and our one more senior, we 4 were active part of it. So we 4 wanted to celebrate our hard work paying off. तो हम 4 जने जाने वाले थे for celebrating party and the success of the annual function का success. तो somehow I don't know how it became the soul date of only celebrating both of us. Maybe destiny has planned us and locked us that date for us to meet. So from that 4 people, ultimately we two went to celebrate the success, nothing else. That was the plan. Yes. And finally it turned out to be lone one-on-one, like interaction, very good, I think hours long interaction, celebration of success part. क्योंकि ग्रुप जो ग्रुप था नहीं, तो 2 ही थे, तो फिर दोनों ने खूब अपनी बातें करी. 16 July 2007 the date was. And we didn't know, like 16 July 2007. So we didn't know the concept of dating. India में तो वैसे भी कम है. Now it has got up, but in 2007 it was. By sharing with our colleagues, we got to know that this was date. Actually, after the date has been complete. Date हो चुकी है, यानी कि अनजाने में उस डेट हो गई, अनायास अनजाने में we went on a date. Yes. तो और फिर आने के बाद पता चला, लोगों ने बताया कि क्या करने गए थे. मैंने बोला एनुअल फंक्शन का सक्सेस तो सेलिब्रेट करने गए थे. फिर खूब गालियां पड़ी कि भाई डेट पे जा रहा है तो बोल डेट पे जा रहा हूँ, ऐसे बोलने की क्या जरूरत है. तो देन इट स्ट्रक अस, करे भाई ये तो डेट हो गया. बहुत सुंदर. इसीलिए ऐसे कहते हैं ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख. और आपने मांगा नहीं, लेकिन आपको वो प्यार मिल गया. और परमात्मा इसी को संयोग कहता है. जब उसे 2 आत्मा को मिलाना होता है ना, तो ऐसे कोई ना कोई परिस्थिति खड़ी करता है, आजू बाजू के लोगों को ऐसे खड़ा कर देता है. ये सिर्फ क्रिएटिव मिशन के लिए नहीं, नॉन क्रिएटिव मिशन, डिस्ट्रक्टिव मिशन के लिए भी ऐसा ही करता है. मैं आपको 2 साथ में चीज में सर की सिखा रहा हूँ, क्योंकि सारी दुनिया देखिए, मैं हर कंट्री में 15 साल से ज्यादा रहा हूँ, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो या कनाडा हो. तो बहुत कुछ दिखा है, बहुत से लोगों को जाना है. और गुरु का सानिध्य मुझे पूरा 1 महीना, यानी कि 22 अगस्त 2001 में आए, 21 सितंबर तक वो हमारे साथ एक छत के नीचे हमारे घर में रहे थे. तो
उस वक्त पे तो समर्पण का एस क्या है मालूम नहीं था, मेडिटेशन का एम क्या है मालूम नहीं था, और शिव कृपानंद स्वामी जी कौन है वो भी नहीं मालूम था। लेकिन आत्मा खींच रही थी और आत्मा ने ही उनको बुला लिया था, और उसमें दाव पे लगा दिया था। उस वक्त पे जब स्वामी जी के साथ मिलना था तभी भी मैंने अपना जीवन दाव पे लगाया था, और कल्पना को मिला था तभी भी अपना जीवन दाव पे लगाया था। तो दाव पे लगाने वाली जो बात है ना, वो एक एक अंदर का जज्बा है जो मुझे मुनिरा जी में बहुत दिखता है। बचपन से उनका वो चैलेंजिंग माइंड, मैं करके दिखाऊंगी, विदाउट पैसे पढ़ाई करके दिखाऊंगी, डॉक्टर बन के दिखाऊंगी, वो जज्बा हर इंसान में होना चाहिए। और वो मोटिवेशन बन जाता है फॉर द पीपल लाइक दैवत भाई, कि जो सिर्फ एक एक परंपरागत तरीके से पढ़ो, अच्छा करो, अच्छे मार्क लेके आओ, सफल बनो और आगे बढ़ो, उसमें एक भाव आ गया ना। देखो कॉम्प्लीमेंट कितना मस्त हो रहा है, ऊपर वाला कैसे रंग भरता है। जो वो हीरे में से 7 कलर निकालने हैं, वो कैसे निकलते हैं, दो आत्मा से आत्मा का मिलन होने पर ऐसे रंग निकलता है, जीवन में खुशियां आती हैं। तो खुशियों को निखारना भी है, एंजॉय भी करना है और बांटना भी है, जैसे आपके चेहरे से हमेशा मुस्कान के रूप में निकलती रहती है। बहुत अच्छा लगता है आपको देख के। आपकी जो डेट थी ना, उस डेट के आजू बाजू मैं उस वक्त पे जूनागढ़ में गुरुदेव के साथ गुरु पूर्णिमा अटेंड कर रहा था। पहली बार गुरुदेव के आमंत्रण से उस गुरु पूर्णिमा अटेंड करने के लिए जूनागढ़ में आया था। स्वामी जी ने कहा था कि ये समर्पण की यात्रा की और उनकी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे पीक समय था, पीक गुरु पूर्णिमा थी। और मैं एक बात समझाना चाहता हूँ हमारे समर्पण परिवार के लोगों को, कि स्वामी जी कहते हैं कि आज हम दो पीढ़ियों के संधि काल में मिल रहे हैं, दो दो युग के संधि काल में मिल रहे हैं। यानी कि 800 साल की पुरानी यात्रा से चढ़ते 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 एक पीक पे स्वामी जी यहाँ पे आ गए, और फिर दूसरे 800 साल यहाँ से पीक से नीचे उतर के ले जाना है। तो वो पीक वाला जो टाइम है, गुम्बज का टाइम है मंदिर के ऊपर का, वो 2007 की गुरु पूर्णिमा है। समर्पण की हिस्ट्री में ये याद रखने वाली जगह है, पॉइंट है, याद रखो। ये बाकी सबका तो फिर बहुत बाद में हुआ, लेकिन 2007 तक गुरु चढ़ 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 के ऊपर तक पहुंचना चाहते थे। अभी वो बहा के नीचे बांट रहे हैं। ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है, अंडरस्टैंडिंग है। अब आपको मैं बोलता हूँ कि आप तो मेडिकल में हो, यानी कि मैथ्स बहुत अच्छा होगा। मैं प्रश्न करता हूँ, उस दिन का नंबर क्या था? 16। ऐड करो नंबर। न्यूमरोलॉजी से क्या होता है? 7। 7 महीने का नंबर क्या था? 7 7। साल का आखिरी नंबर क्या था? 7 सत्ते पे सत्ता। आपकी डेट बन गई उस, हाँ, आपकी डेट बन गई। और 7 इज ए वेरी डिवाइन नंबर। मेरे जीवन में जो कुछ भी प्रगति हुई है ना, खुद की पर्सनल, मैं बचपन में जन्मा तो 7 दिन आजू बाजू, ओके। मेरे जीवन में कितनी भी मेहनत करूं, मुझे सफलता 7 साल के बाद मिलती है। यानी कि मुझे उस प्रयत्न में 7 चक्रों की यात्रा करनी पड़ती है। ये मेरा खुद का एनालिसिस है, अनुभव है। 7 is a very beautiful number, especially those who are trying to progress in a spiritual world. 7 is very important number, जो गुरुदेव ने हमारे जीवन में 2007 की गुरु पूर्णिमा से आशीर्वाद के रूप में दिया, कि हम उस जीवंत गुरु के उस अवतार के सामने गुरु पूर्णिमा के दिन ध्यान कर सके, उसके दर्शन कर सके, उसके आशीर्वाद ले सके। तो कभी कभी है ना, कई लोगों को ये समझता ही नहीं है कि हम किस आत्मा के सामने खड़े हैं, बैठे हैं, किसके सानिध्य में जीवन जी रहे हैं, किसकी कृपा में हमारी आत्मा की प्रगति हो रही है। अभी इस कलयुग के जमाने में भी परमात्मा खुद शिव कृपानंद स्वामी के रूप में आता है, और हम त्रेता वाले रामचंद्र के जीवन के दरमियान जो धोबी उंगली दिखा रहा था कि सीता तो अपवित्र हो गई, उसे धर्म अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, क्या हम वैसे बनना चाहते हैं? क्या हम कृष्ण के जीवन में, जो लोग कृष्ण की भी बुराइयां करते थे, कृष्ण को भी छोटा या कम दिखाने की कोशिश करते थे, क्या हम टीका निंदा और नेगेटिविटी के जरिए
उस शक्ति का अपमान करना चाहते हैं? क्या हम जीसस क्राइस्ट के ऊपर जिस तरह से उसको सूली पे लगा दिया गया उस तरह से अत्याचार करना चाहते हैं? मानवता ने इतने हजारों सालों की हिस्ट्री में वो ही किया है जब अवतारित शक्ति, अवतारित आत्मा, परमात्मा खुद उतरकर धरती पे आया है, उसको न पहचाना है न उसकी कद्र की है। मैं कहता हूं इस दिस इज समर्पण के मंच से, आत्मा बनोगे नहीं, आत्मा को पहचान नहीं पाओगे। आत्मा बनोगे नहीं, चैतन्य को नहीं समझ पाओगे। आप सदियों पुरानी मानवता की बुरी आदत को अपने माता पिता और पारंपरिक समाज, संसार और वंश के जो अभिशाप है उसकी वजह से हम ऐसी शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन आप अपनी आंख बंद कर, अभी मैं आपको कहता हूं, महसूस करो। आंख बंद कर दीजिए सभी लोग, प्लीज क्लोज योर आईज। Try to experience the love, the consciousness of divine energy that came in our life through Sri Shivkupanan Swamiji. I am sitting in America, in the city of Morrisville, which is near Raleigh in North Carolina state. Dhaivat Bhai and Muniraji are sitting in Gandhidham, which is in Saurashtra and Kutch, and they are in Gujarat, basically. We are chanting just one time this mantra with Om and Shri Long, Shivkupanan Swami Namo Namaha. Okay? Let's chant together, everybody. Om Shri Shiv Krupananda Swami Namo Namaha. Keep your eyes closed. Try to experience the flow of consciousness in the form of cool vibrations, the waves of air flowing around the tip of your nose, under the palm, every part of your body as a flow of cool air, regardless of the temperature outside in the environment. Take a deep breath and feel that energy. If you are feeling this Chaitanya, if you are feeling this consciousness, simply by chanting a name of a living Guru, do you need the proof that there is no difference in Lord Rama and Baba Swami? Do you need the proof there is no difference in Krishna and Baba Swami? Do you need the proof there is no difference in the consciousness that was flowing through Jesus Christ or Buddha and the same consciousness that flows just by chanting the name of Sri Shivkupanan Swami? If this is the consciousness, this is the Brahma Jnana, this is the Brahma Chaitanya that we are experiencing, are we going to insult that energy by doubting that energy? Are we going to disrespect that energy by playing political games and doing things that we are doing? Or we are going to honor that energy by
showing our total Samarpan Bhav by surrendering all our ignorance, our bad habits, and our darkness, so that we can receive such consciousness 24/7 by putting our chitta at that subtle body, not the physical body, subtle body, the subtle body of consciousness. It is the same consciousness. It is the same Paramatma. It is the same Chaitanya that put Dhaivat Bhai and Muniraji into that date, which was coincidentally happening, which happened to bring these two souls together. मैं ये परमात्मा की लीला इनकी कहानी के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। परमात्मा कृपालु है, परमात्मा दयालु है, और उस कृपालु का नाम ही कृपा से बरसने वाला, बहने वाला आनंद, शिव की कृपा से बहने वाला आनंद शिव कृपानंद है। आप जान भी लो, मान भी लो, और वाइब्रेशन से पहचान भी लो। Do not get distracted by any negative things, but try to see that God's blessing in the experience and in the opportunities that we get. In my recent discourse at the Samarpan Americas retreat, Paramatma se Atma tak, from the Supreme Soul to Soul, I have said there will be three things: Sanket, Sanyog, and Samarpan. First, there was a indication that I like this boy, I like this girl. Then there is Sanyog, that let's celebrate the success of our annual function of welcoming new students in the medical college. And then Samarpan is coming in the later part of the story. I want you to get inspired and enjoy the Chaitanya that is flowing from very little things, very simple incidents, and try to enjoy living with your own soul. Try to identify your own soul. ये कहानी में मुझे बहुत मजा आ रहा है, और let's try to continue कि कितना प्यारा 16 जुलाई का दिन था 2007 में। आज 16 साल के बाद फिर से 7 का नंबर आया, देखो। और फिर से हम बातें कर रहे हैं। तो ये तो 23 के साल में, 7 साल में कितना कुछ बदल गया आपके जीवन में, है ना? 7 साल में कितना कुछ मिल गया। Thank you so much for letting us to the journey of such a beautiful experience, feeling the vibrations of consciousness. Thank you so much. थैंक यू तो गुरु को कह, क्योंकि वो मुझे प्रेरणा दे रहा है कि हितेंद्र, तू इन सब बच्चों को सिखा, इन सबको दिखा कि इनको लगता है कि हम तो समर्पण में बाद में आए, लेकिन इनको मैंने ही मिलाया है, ये स्वामी जी कह रहे हैं। और देखने वालों को भी मैं कह रहा हूं कि ऐसा आपके जीवन में भी हुआ होगा। आप जरा मुड़ के देख, नयन बंद कर, मुड़ के देख, आपने सूक्ष्म दृष्टि दे दी। हाँ, तो ये मेरा काम है, ये मेरा लेंस जो है ना, मैं सबको धीरे धीरे देता रहता हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसको पसंद आए वो स्वीकार करेंगे, न पसंद आए वो छोड़ देंगे। इसलिए डिस्क्लेमर रखते हैं हम बिगिनिंग में कि एनीथिंग दैट यू डोंट लाइक, वॉशरूम में जाओ, फ्लश करो, बोलो मुझे निकाल देना है, नहीं चाहिए हमको ये इंफॉर्मेशन। और जो अच्छा लगे दिल में उतार दो, ताकि किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम ऑफ गॉड, परमात्मा का राज्य आपके भीतर ही आपको मिल जाए। और उसके लिए हम ये प्यार भरी छोटी छोटी कहानियां, छोटी छोटी बातें लेके आपके साथ बैठ जाते हैं, बातें करते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ना, आई डोंट नीड द लिमिटेशन ऑफ टाइम। जब मैं आत्मा से आत्मा तक मिलता हूँ ना, तो आपकी डेट में देखो, आपने टाइम देखा कैसे इतनी सारी लंबी बातें हुई, फ्रॉम ए गाय हु इज नॉट टॉकिंग टू एनीबडी इन द क्लासरूम। देखा, जब आत्मा आत्मा से जुड़ जाती है तो वक्त कहाँ गुजर गया पता नहीं चलता है। That is the soulmate। और soulmate जब मिलते हैं तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके उनकी आध्यात्मिक यात्रा में मदद करते हैं। ये मत देखो कि ये गरीब घर से है, ये अमीर घर से है, ये बड़ी कास्ट की है, छोटे कास्ट का है, ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है, ये खूबसूरत है, ये कदरूपा है। ये मत देखो, आत्मा के आनंद को देखो, आत्मा के एहसास को महसूस करो, और फिर पहचानो
अरे इस आत्मा के साथ मेरा क्या रिश्ता है। यहाँ पे कुछ परमात्मा संकेत तो नहीं दे रहा है, संकेत, संयोग, समर्पण। एंजॉय करते जाओ, मजे लेते जाओ। इस स्टोरी में बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ मजे लेना है। दैवत भाई, लव स्टोरी इज Yes. वेरी ब्यूटीफुल। ये तो शुरुआत है भाई। प्यार के अंकुर बीज आ गए अभी। आ गए, बीच आ गए। मजा आया। नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाते हैं। तो हाँ। ये बहुत सुंदर बातें हो गई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। प्लीज टेल अस हाउ यू केम टू नो अबाउट समर्पण मेडिटेशन और बाबा स्वामी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अभी मैंने कहा ना, संकेत आया, संयोग आया, समर्पण कैसे आया, उसकी भी बातें बता दो भाई। सो यस, समर्पण ध्यान से इंट्रोडक्शन कैसे हुआ। तो जैसे हम बहुत सारे लोगों की कहानियां सुनते हैं कि पीपल आर सीकर्स, दे वांट टू सीक आउट, वो एक खोज में रहते हैं। तो इवन आज भी जब मैं सोचता हूँ तो ऐसा कुछ मुझे रियलाइजेशन नहीं होता कि लाइक आई वाज सीकिंग समथिंग। तो मेरी स्टोरी तो मैं ये समझता हूँ कि भाई गुरु ने शिष्य को चुना। शिष्य को सही। इतना भी नहीं पता था कि गुरु की खोज करनी भी चाहिए। आई कंसिडर इट दैट वे। ऐसा नहीं था नहीं खोज रहे हैं, वी नीडेड दैट थिंग इन आवर लाइफ, जैसे रिट्रोग्रेडली वी कम टू नो। लेकिन तभी सही। तो ये भी नहीं पता, तो सोच लो कैसी परिस्थिति होगी। हाँ हाँ। तो स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो गुरु कम्स इन योर लाइफ, उससे अच्छा तो सौभाग्य की बात क्या होगी। मुझे ऐसा लगता है बाकी साधकों ने मुझसे तो ज्यादा ही मेहनत करी होगी। सबसे निठल्ला या सबसे कम मेहनत में मुझे ही मिला है। आई कंसिडर दैट। तो जैसे सबसे शुरुआत समर्पण का इंट्रोडक्शन हुआ, हम दोनों की कॉमन बात करें तो माय फैमिली वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इट फर्स्ट एंड आई वाज द लास्ट पर्सन टू एक्सेप्ट इट इन माय फैमिली। शुरू से बात करें तो माय फादर, गांधीधाम सिटी में वीडियो शिविर एक कंडक्ट हुआ था। माय फादर्स फ्रेंड कलीग इनवाइटेड हिम एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन। उन्होंने सबसे पहला शिविर भरा। स्वामी जी से संपर्क शिविर के माध्यम से उनका हुआ। ही केम टू नो अबाउट स्वामी जी एंड उनको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मजा आया एंड ही वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड। इट टच्ड हिम। क्या, तो क्या बात है। ज्यादा तो वो भी डिस्कस इतना घर पे नॉट वेरी मच एक्सप्रेसिव, मैं भी उतना नहीं। तो आई नो दिस मच। और फिर उन्होंने घर पे आके माय लेट ग्रैंड मदर, शी वाज देयर दैट टाइम, मेरी दादी माँ, तो मेरे फादर की जो मदर थे, तो उन्होंने घर पे आके बताया कि मैं ये एक शिविर में गया हूँ, आज बहुत अच्छा लगा और तू शिव की उपासक है, तो तू कल एक काम कर, मेरे साथ चल, तो मैं तुझको शिव से मिलवा देता हूँ जिसकी तू पूजा करती है। तो लाइक दैट ही इंट्रोड्यूस्ड स्वामी जी टू माय ग्रैंड मदर। और दूसरे दिन वो भी गए शिविर में, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। उन दोनों के बाद उन्होंने आके मेरी मदर को भी बताया। दे टोल्ड हर कि भाई ये जा रहा है, मैं भी जाके आई, हम दोनों को बहुत अच्छा लग रहा है, तो एक काम कर, तीसरे दिन तू भी हम दोनों के साथ में चल। द थर्ड डे दे टुक माय मदर ऑल्सो। तो ऐसे वो एक शिविर से तीन जने जुड़ गए। तो थ्री पीपल इन माय फैमिली। माय ग्रैंडफादर वाज देयर लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ हिज लाइफ, लेकिन उनको इतना स्पिरिचुअली या रिलीजियसली या शिविर बात कर लो या कथा वार्ता तो उतना इंटरेस्ट नहीं था। तो लाइक दे डिडंट टेल हिम, ओल्ड एज भी थी उनकी। लेकिन उनके अलावा जैसे आई वाज द ओनली सन, तो घर में चार जनों में से तीन जनों ने वो एक ही शिविर से वो जुड़े स्वामी जी से बहुत एंड सुंदर। दे फेल्ट वेरी हैप्पी, पीसफुल, काम। उन्हें बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। एंड आई वाज देयर इन द हॉस्टल, आई वाज स्टडिंग, तो आई वाज अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस। तो 2010 वीडियो शिविर के माध्यम से मेरे फैमिली में इंट्रोडक्शन इस तरह से हुआ। माय फादर वाज द फर्स्ट वन, देन माय ग्रैंडमदर, देन माय मदर। और जब जब बीच में वेकेशन होते थे या घर पे आता था हॉस्टल से, तो लाइक दे यूज्ड टू अटेंड द इवनिंग मेडिटेशन सेंटर। तो बात भी फोन पे होती रहती थी कि भाई मेडिटेशन सीख रहे हैं, मेडिटेशन का एक सेंटर पास में खुला है, तो वहां पे हम लोग रेगुलर जा रहे हैं। तो जा रहे हैं और चले गए। सो वेरी ब्यूटीफुल। उनका कनेक्शन का थोड़ा लफड़ा हुआ है, बट बेसिकली what he is bringing to the attention, that
even though the parents of Dhaivat Bhai comes from very religious family, they were intellectual and they were doing their job and still believing in God. Lord Shiva is the one whom Dhaivat Bhai's paternal grandma was worshipping. And after attending the Shibir, 8 days workshop, like recently what happened in Nagpur, India, Dhaivat Bhai's father said to his mother that, Ma, you worship Lord Shiva, but I want to bring you to this Shibir and introduce you or bring you in front of Lord Shiva. Would you like to come? She went and she really liked it. Then he also encouraged his wife, that is Dhaivat Bhai's mother, and they all went and they attended this Shibir. This is how you can also promote Swamiji's workshop, Swamiji's programs that are being telecasted on Guru Tattva YouTube channel. Or even if they cannot attend the live, you can share the link of those workshops of Swamiji and encourage them to connect with the stories, to connect with the energy of that collectivity, of the soulful collectivity that Swamiji is trying to build to create the Vasudhaiva Kutumbakam, one world, one family, connected through love, soulful love, unconditional love. And that connection is established during this 8 days workshop or 1 day introduction session or 3 days. So Dhaivat Bhai aa gaye hain? Yes. No I think problem. there is some technical issue this side. Don't worry, हमें तो बोलने का मौका मिल जाता है, आप जरा दूर चले जाते हो तो. So I will bring you back the energy by singing one more dhun. Beautiful. Swamiji. Swamiji. Please continue. Swamiji has given energy to clear the 7 different chakras in our body itself. Okay, these are the internal chakras or life energy centers. When Swamiji tells the story, the way right now we are also doing the storytelling, but live storytelling, that chakra get energized and the energy create sort of vortex and throw away all the negativity and bring all the positive energy from the universe into our system. That's why some people say, I did the meditation and I feel very energized, I feel very connected, I feel very light. That is the beauty of that meditation, that storytelling, that listening the vibration of Guru or experiencing the consciousness through the verbal vibrations of somebody. Okay, this is universal. This is not just, I'm not saying that only you can experience this with Swamiji. You can experience it right now here in the This is Samarpan program also. Okay, so nothing to worry. There are some technical issues that will be going on. In 2007, I wrote a couple of lines as dhun that one can repeatedly chant, and very simple lines. Every dhun was written on specific chakra, and when we talk about Lord Shiva, it is the heart chakra. Okay, listen to this dhun. Swamiji also do the anusthan that is going to start next week for 45 days. In deep meditation, he goes and worship his gurus, connect with his gurus, and try to bring that consciousness into one idol all these years. Now he is doing only meditation and writing the book on the aura. On the day of Mahashivratri, when divine masculine, divine feminine energy got together, Shiva and Shakti got together and got married. That day is the celebration of Swamiji's
45 days anushthan or mega meditation that he practiced for 45 days and he conclude on that day. That success you can experience in those vibrations. And I want to chant the lines. Try to experience the vibration on your heart chakra. It was written specifically putting the energy on the heart chakra, trying to bring the vibration of Lord Shiva and trying to bring the energy through the name of Swami, Shiv Kripanand Swami. Shivam, 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 Shivam. Om Swami Namo Namaha. Shri Swami Namo Namaha. Om Swami Namo Namaha. Shri Swami Namo Namaha. Shivam, 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 Shivam. The mother of entire universe, Jagadamba, lives in the heart chakra. And the father of entire creation, Lord Shiva, also lives in heart chakra. By chanting this dun, we were trying to connect at the heart chakra, connect with Shiv Kripanand Swamiji's name to that motherly and fatherly energy. When that reunite on the Mahashivratri day, a beautiful reunion brings the wedding of Shiva and Shakti. That happened on 16th of July 2007 with the beautiful feminine energy of Muniraji and masculine energy of Dhaivat ji. चलो आगे बढ़ते हैं. हमने आपका गैप का बहुत अच्छा उपयोग कर लिया. Yes, thank you so much. And when we are talking about complimenting, we had a live example, like when I was speaking and somehow the screen it froze and we had to rejoin. So I had thought that this may happen. We discussed and she was ready with all the supplies, everything. She had joined the meeting on her mobile phone and we are just about to keep a rack and then keep our mobile phones. But till then, after refreshing, we were able to join again. So yes, instantly also we complimented each other. She helps me, I help. और ये गुरुदेव के साथ ज्यादा होता है क्योंकि जब एनर्जी हैवी हो जाती है, वाइब्रेशन स्ट्रांग हो जाते हैं, तो दिस थिंग्स डजंट वर्क. ये टेक्नोलॉजी है वो सब सेकेंडरी हो जाती है. दे कैन नॉट डाइजेस्ट एंड दे कैन नॉट हैंडल दिस वाइब्रेशंस एनर्जी. तो दिस इज द प्रूफ that Gurudev is with us and Shiv Krupa का आनंद हम सबको मिल रहा है. Yeah, similar experience just we had in 2023, that is Guru Shakti Sthapana Mahotsav, when Swamiji did the inauguration ceremony of Sai Shri Guru Shakti Dham. So the moment Swamiji stepped in that zone, all the lights and all electricity, all internet, everything just blew off. Suddenly it went away. Even 2 or 3 different Anubhutis were working on system. I think I'm off the track. अनुभूति की बात तो शायद बाद में आएगी. नहीं चलने दो चल रहा है उसको निकलने दो क्योंकि ये स्वामी जी की इच्छा हो. Yes, तो फर्स्ट टाइम जो कच्छ में गुरु शक्तिधाम बन रहा था, स्थायी श्री गुरु शक्तिधाम, तो I was in the Kutch ashram team and one more teammate was there with me who was looking after the construction work. So first time we opened the 3D file, which was a very heavy file to work upon. तो जैसे वो बन के आई थी डिजाइनर के पास से, we were to open it, to explore it, or then we used to use in प्रचार. मैं और मेरे कलीग थे निशाद जी, he is also a tech savvy person and he is the head of construction. तो उनके ऑफिस में उन्होंने जैसे ही फाइल लोड की कच्छ श्री गुरु शक्तिधाम की, तो ऐसा तो हमने कई बार सुना है कि लाइक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स उसमें फ्लक्चुएशन आते हैं,
So in his office, like it was a big office, backups and everything was there. They were routinely working with such file, 3D Max file थी. लेकिन the moment he double clicked the file, it blew off not only the electricity of his system, not only his all office, but the whole floor. अरे बाप रे. और आज तक वो लोग नहीं ढूंढ पाए कि भाई एरर क्या हो गया था. सही. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अनुभूति. और ऐसी दो चार और भी अनुभूतियां हुई है विथ माय हार्ड डिस्क एंड सो. छोटी मोटी अनुभूतियां, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क. वन ऑफ माय हार्ड डिस्क इट वेंट करप्ट and for 2 years during the covid period I had kept it aside. I didn't throw it away कि ठीक है चलो इसमें डेटा तो बहुत सारा है समर्पण का, लेकिन करप्ट हो गया. some was there with the backup, some wasn't, तो रखा हुआ था. एंड आफ्टरवर्ड एक इवेंट आया था आश्रम में आफ्टर शी प्लान्ड एन इवेंट. तो सिमिलर इवेंट हमने पहले भी किया था. तो लाइक कैजुअली जैसे गुरु कार्य करते हैं कि भाई ये इसका पूरा गो थ्रू या शेड्यूल हमारे पास है, तो लेट्स रिफर दैट. तो जैसे मैंने मेरे कलेक्शन खोला तो तभी पता चला रहे यार इसका तो बैकअप नहीं है हमारे पास. तो मैंने बोला हाँ अपन ने बनाया था, करा हुआ था, इट इज देयर. तो शायद वो पुरानी हार्ड डिस्क में होगा. तो बात तो हुई, तो वो तो करप्ट हो गई है, रीड नहीं हो रही थी. इवन गेव इट टू अ प्रोफेशनल कंप्यूटर सर्विस पर्सन, टेक सपोर्ट को भी दिया हुआ था. इट केम बैक फ्रॉम देयर. उन्होंने बोला कि फॉर्मेट करके आप रीयूज कर सकते हो, बाकी डेटा आए ऐसी कोई संभावना नहीं है. रिकवरी और बाकी सब सॉफ्टवेयर बहुत सारे यूज करें. इवन आई ट्राइड माय हैंड्स में भी ब्राउजिंग करता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, लेकिन नहीं निकला. तो फिर आई हैड अपग्रेडेड, मूव्ड ऑन टू अ न्यू सिस्टम इन 2 years. तो मैंने सोचा चलो ना, वो पुराने कंप्यूटर में नहीं लग रहा था तो शायद नए में लगा के देखते हैं. तो इट्स अ वेरी इलॉजिकल आइडिया. ठीक है, इट्स लाइक चाइल्डिश कि चलो उसमें नहीं लग रहा. It's like Muniraji. It is not like you. It is like Muniraji. Yes. Not logical. I am yes a cerebral and logical person. लेकिन वो होता है ना बचपन वाली चीज, अरे यार नया है चलो लगाते तो देखते हैं. तो लगाया तो लाइक विंडोज गिव मी द नोटिफिकेशन कि देयर इज सम एरर एंड डू यू वांट टू रिपेयर इट. ठीक है, वो हर बार आता था, रिपेयर फेलियर होता था, देयर इज नथिंग न्यू. इस बार ठीक है दे दो रिपेयर में क्लिक कर दिया. तो आफ्टर फ्यू मिनट्स पता नहीं कैसे रिपेयर कर दिया एंड द कंटेंट इट ओपनड अप. आई वाज एबल टू गेट द बैकअप. और वो जितना गुरु कार्य था प्रोग्राम के रिलेटेड जो फाइल्स थी वगैरह, हाँ बस वो अच्छे से मेरा आ गया. तो इन दैट लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम वी आर प्लानिंग दैट, और वो आ गया. और फिर उसके बाद से अब जब भी लगा रहा हूँ फिर तो लालच आ गई कि चलो भाई ये तो खुल गई, बढ़िया है, तभी बाकी का भी सारा डेटा ले लेते हैं, इट्स नेचुरल. तो अभी जब लगा रहा हूँ तभी नहीं रीड हो रही. तो गुरु को जो देखना है ना, दिखाना है ना, मोमेंटली इट केम अलाइव एंड इट गिव. वैसा है. सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है. और इससे समर्पण बढ़ता है. इससे हमारा भाव जो लॉजिकल ही सोचता है उसके बाहर जाके सोचने पर मजबूर करता है. तो स्वामी जी कहते हैं ना, बुद्धि धरी की धरी रह जाएगी और अनुभूति ऐसी हो जाएगी, जो सोचा नहीं था, जो मांगा नहीं था, वो हो जाएगा. सो समटाइम्स दैट्स व्हाई I have kept a magnet on my fridge. If your way doesn't work, try to do it on your wife's way, because sometimes it works. The same way. Same way, गुरु का जो तरीका है ना, गुरु एक छोटी सी अनुभूति देकर हमें जगा देता है कि इसको मैं बार बार कहता हूँ वो सुनेगा नहीं. In fact, when Swamiji came 2009 for the मूर्ति स्थापना in Montreal, and we had a sadhak, a day reserved for the sadhaks from America. So they came with the busload of sadhak. I was living at the time in Montreal, Canada. We set up everything, sound system, light, stage, everything. And the janitor, the caretaker from the school, it was in the school, he said that now it is all set. Tomorrow you have to do this switch on and then everything will work right. Now Swamiji has came. He is sitting on the stage and we started and we are testing. No sound comes from nowhere. And everything was well set. Everything was done right. And we don't know what to do. So Bihag Bhai Lalaji was with me. Myself was there in the backstage when I was managing all these things. So I said, Bihag Bhai, abhi to Guru Shakti ke upar hi chhodna padega. And we both chanted like what we were chanting.
Om Shri Shiv Kripananda Swami Namo Namaha. Swamiji, if we made any mistake, please forgive us. Now the show is in your hand. Then we started the switch. Everything is back. Guru is trying to take away from our egotistic mind, from Yes. our personality, and trying to say that give it to me, let me handle this. ये तेरे बस की बात नहीं है. And sometimes it is just to show the world that how using this human being, using this person, I take over and I talk to you on a subtle level, how the energy comes and take over. इसलिए ये पूरा खेल जो है ना भाव का है, ये पूरा खेल जो है ना चैतन्य का है, ये पूरा खेल जो है वो कृपा का और करुणा का है. इसमें बुद्धि का और ज्ञान का कुछ भी लेना देना नहीं है. और जितना ज्ञान हम लाते हैं ऐसे दिक्कतें आती रहती है. तो ये तो सिर्फ अभी हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे, तो दिक्कतें क्यों आई? गुरु को ये बात हमको समझानी थी, क्योंकि वो भी मूड में आ जाते हैं कि ये तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, चलो इनके जरिए ये बात भी कह दो साधकों को, यू नो. आगे चलते हैं. आपका मिलन हो गया. Yes. And my family, they were introduced to Samarpan first. हाँ, तो समर्पण भी शुरू हो गया. तो समर्पण के बारे में आपके इंट्रोडक्शन में 2 लाइन आप दोनों ने कही थी मम्मी पापा के बारे में, कि पापा ने मम्मी को कहा कि तू शिव को मिलना चाहती है, और आपने भी बहुत सही कही थी. वो जरा रिपीट करना. आई वांट पीपल टू लिसन दैट. ओके, कि दादी को लेके गए दैवत भाई, उसकी बातें करिए. Yes, yes. So जैसे मैं बता रहा था कि first experience, my father's colleague and his friend, he took him to a video शिविर. यहाँ पे शिविर हो रहा है, you come and attend. He was a regular साधक, वो पहले से जुड़े हुए थे. तो he extended that invitation to my father. He obliged, और उन्होंने शिविर का एक दिन भरा. He was very much touched with that, और उन्हें बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा अनुभव अनुभूति आई. और लाइक ही एक्सेप्टेड कि नहीं, स्वामी जी जो है वो साक्षात परमात्मा है, तभी तो वो बता पाए. तो द नेक्स्ट डे उन्होंने तो एक दिन भरा, लेकिन कैसा होता है, हम कोई बहुत एक अच्छी चीज एक्सपीरियंस करके आए, वी वुड लाइक टू शेयर इट विद अदर्स, और यही हम सब साधक करते ही है. तो सबसे पहले उन्होंने किसे बताया, तो हिज मदर, माय ग्रैंड मदर. तो उन्हें लगा कि हाँ, शी इज अ शेवाइट, वो बहुत रिलीजियस है, और ये आज के जमाने में जो उपयुक्त है वो मार्ग हमें दिख रहा है ये शिविर में. he felt that, so he came, he told his mother, my grandmother, कि तू शिव की उपासक है, तू उनकी पूजा करती है, तो तू कल मेरे साथ चल, मैं तुझे शिव से मिलाता हूँ. तो मेरी दादी थी, वो जैसे क्यूरियस हो गई कि ये क्या देख के आया है, क्या करके आया. बट शी वेंट विथ हिम द नेक्स्ट. तो डे 2 ऑफ द शिविर वो दोनों गए, दोनों ने अटेंड किया. तो दादी माँ थी, उनको भी बहुत अच्छे अनुभव रहे, अच्छी अनुभूति रही. देख के मैं फिर मेरी मम्मी को बताया, टोल्ड माय मदर, कि पहले दिन ये अकेला जाके आया, अच्छा अनुभव हुआ, इससे अच्छी अनुभूति लेके आया. दूसरे दिन हम दोनों गए, और तीसरे दिन तू भी हमें ज्वाइन कर. सो द थर्ड डे ऑल 3 इन सक्सेशन एक लोग ऐसे जुड़ते गए. तो डे 3 से मदर भी जुड़ गए. One, I think I would like to add कि mother was a strong believer of Dattatreya, Bhagwan Dattatreya, and the people who came for prachar of the shivir, that they knew that mummy is a follower of Dattatreya. So they said to mummy that Swamiji does every shivir in such a way that it ends on Datta Jayanti. So that way she connected that Bhagwan Datt has guided me to this spiritual path. That way she believed in that. Yes. क्या बात है, क्या बात है. और आपके ससुर जी क्या कहते थे गॉड के बारे में और स्वामी जी के बारे में? स्वामी जी को वो दादी माँ को यही बताते थे कि भाई ये भगवान को मैं तुझे भगवान से मिलाता हूँ. ऐसा ही उन्होंने बोला. तू रोज भगवान की पूजा करती है, लेकिन आज मैं साक्षात भगवान के दर्शन तुझे कराता हूँ. तो ऐसे ही ये he was in vacation at that time. Afterwards somewhere, so they did this video shivir, and they 3 उन्होंने फिर अनुष्ठान भी किया शिविर पूर्ण होने के बाद 45 days, and they joined the regular meditation center nearby जो था. तो जो थोड़ा बहुत अपडेट मुझे था, ज्यादा तो फिर ये बात नहीं होती थी.
लेकिन एक बार जब भी मैं आया वेकेशन पे तभी डिटेल में ये सारी उनकी बातें सुनी। तो ही वॉज वेरी मच अगेंस्ट द आइडिया ऑफ लाइक इसको ऐसे भी लग सकता है कि किसी को भगवान मानना, किसी व्यक्ति को भगवान मानना. That he used to call me when he was at home in vacation, that they are going in some shibir and there is some Baba and they are telling him God and they are not giving me enough time and they are leaving me at home and I am In the evening, I have came home for vacation to spend the time with family and they are going for 3 hours to attend some shibir. So that was his perception. तो ये afterwards तो कई बच्चों का ऐसे होता है कि मेरे मम्मी पापा गुरु कार्य में इतने रचे पचे हैं, हमारी केयर ही नहीं करते हैं, लेकिन वो आपके लिए ही पुण्य कर्म कमा रहे हैं बच्चे। सही है। और फिर तो घर पे कैसा था कि चलो एक वीडियो शिविर करी तो सूरत में शिविर की हुई, तो नेक्स्ट अभी जैसे अजमेर में शिविर हो रही है तो ये तो बाकी है, तो ये भी अटेंड करनी है। अहमदाबाद तो लाइक द आचार्य आल्सो दे प्लान्ड इट लाइक दैट कि जैसे ऑल्टरनेटिवली अलग अलग महाशिविर के वीडियो शिविर लगाए, क्योंकि डिस्कोर्स भी अलग अलग होता है, हर एक एनर्जी लेवल अलग अलग, एनर्जी भी अलग होती है, तो सारा एक्सपीरियंस हर एक साधकों को मिले। तो शिविर भी ऐसे ही ऑर्गेनाइज होते थे। तो लाइक फॉर अ ईयर और 2 ईयर और सो आई थिंक दे वर इक्वली एक्साइटेड। कोई भी वीडियो शिविर होता था तो वो बोला ये वाला तो पहला शिविर है, तो आई कुडंट अंडरस्टैंड। मैंने बोला शिविर तो कितने ही कर लिया। इससे पहला कर रहे Yeah, and at the same time, actually, our study was to be completed. We were in the internship. So सबसे पहले तो ये था कि ओके घर पे ये सारी बातें हुई थी, एंड इन माय फादर्स कबर्ड ही हैज अ वेरी स्पेसिफिक वेल ऑर्गेनाइज्ड कबर्ड। तो वहां पे मैंने देखा था कि उन्होंने जो समर्पण के लिए की जो चीजें है, वस्तुएं, ग्रंथ था और वगैरह, तो सब नीटली रखा हुआ था। तो देयर वाज वन बैग जो हिमालय का समर्पण योग ग्रंथ के साथ पहले एक प्रिंटेड बैग जो हमें मिलती थी, और उसमें आसन और स्कार्फ। मोस्ट ऑफ अस वी वुड हैव यूज्ड दैट बैग टू कैरी द आसन एंड स्कार्फ, क्योंकि Can you bring रेगुलर that slide again? I'm going to ask them to put this slide so we can see it. Okay, so should I repeat the last point? Yes, because Yes. let the slide come so people can see what is that asan and scarf and what is that bag. Slide number 21, please. Thank you. So this was the bag from Baba Swami Multimedia that used to become a promotional tool for people also, because Samarpan ka naam hai. Yeah, very beautiful bag. And this now, is the symbol. Yeah, this is the first time I visited Gandhidham and we attended the group meditation, Samuhik Dhyan. This is the Gandhidham Collective Meditation Center exterior part. Very beautiful. Very good. So ये दादी है, ये दादी माँ है, yes. और मम्मी पापा भी है, yes. So देखो, this is what I want to tell everybody. ये अभी का जो स्क्रीनशॉट है ना, कितना पावरफुल है। गुरु भी नमस्कार कर रहे हैं, मम्मी पापा और दादी माँ भी है। सब कुछ आपके जीवन का जो इम्पोर्टेंट है वो सब है आपके साथ इस स्लाइड में। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि in our life, Swamiji keeps on telling us, if you do not have human body, you will not be able to have this knowledge of self. Understand? If I am a pure light and I am white light, white color light in this space, how can I identify myself? Understand this. There must be some sort of contrast that shows the light against darkness. This is first thing. Or there must be some reflection that shows my own face, my own physical form. That is the reason why consciousness in the
name of Atma, as the world or all the religious scriptures describe, descends from the space on the planet like Earth. And when it descends, it takes the birth through 5 elements: earth, fire, water, air, and space. Our body is nothing but the form created with the help of these 5 elements. But that will not even get created if we do not have that love between our father and mother. So if there is something to be worshipped and cherished in this world as God, that should be first our father and mother. Please pay attention to that. No self-realization can be possible without human body, because you could be a donkey, or you could be a snake, or you could be any other creature. Your consciousness level is not that high or evolved in that form. So we have all gone through different form of life. We say in Hinduism 840 different type of forms, 40,000 different type of forms, 84 lakh or 84 koti yoni. We go through the different types of forms, life cycles, to reach ultimately as a human form. So I bow down to the form of father and mother. And I bow down to the element of unconditional love that brings us on the earth. That was Rane, rebirth, Punarjanma, through mother and father. Then Dvija, second birth, through our Guru. So birth of a physical body and birth of a soul, that takes place through Guru. This Shibir is just a reason for you to go in front of such a living person who carries such a high level of vibration and enlighten the candle or lamp inside you, what you call soul consciousness or self-consciousness. When that is enlightened, without light, how can you see in the darkness? Then first thing you see is you start seeing yourself if you look inside, because now there is a light inside you. My point is, 3 people are very, very, very important in our life, through whom we can reach to our soul or we can connect with the God. And without the love and grace of Father, Mother, and Guru, you will not exist in today's world. So you may think I am very smart, you may think I am very rich, you may think that I have accumulated this, I am very famous, I don't need my father, mother. That is the biggest mistake you are doing. First thing. Second thing, after reaching to the self-knowledge or self-enlightenment, if you are not respecting your Guru, if you are disrespecting the energy of consciousness that you received from Guru, that is also going to create a curse in your life. अभिशाप बन जाएगा वो. गुरु की चेतना की इज्जत करो, गुरु की चेतना को आदर करो, because without that, the knowledge you received will not be able to help you liberate. You will not reach to the state of salvation or moksha or nirvana if this 3 combination does not come in your life. It's a unique combination of my soul, my father, mother's soul, and my guru's soul. These 4 are the base of your liberation. Then all you need is the support from the soulmate. And repeat the cycle to create and continue the journey of soul's enlightenment by procreation and by enlightenment, and passing that torch for the next generation. That is what Swamiji said. We need divine souls to become medium to carry on this torch. It is going to come later, but my point is this.
when a son who is father of Dhaivat ji bring his mother to a living guru, he is paying back the debt of father and mother for giving the birth. ऋणानुबंध से मुक्त होना और मोक्ष का मार्ग दिखाना उस गुरु के पास जाकर, that is important in our life as a son or daughter. Please keep that in mind. I consider myself as the soul son, meaning that the son of a guru's soul. My guru is a supreme soul. मैं आत्मपुत्र मानता हूं अपने गुरुदेव को का। अपने आप को गुरु आत्मपुत्र मानना या आत्मपुत्री मानना हमें गुरु की चेतना और करुणा का सुपात्र बनाने के लिए मार्ग खोलता है। Okay, so you have to understand this, that this did not happen just for the sake of going and attending the workshop. This did not happen just for taking birth in this family and enjoy the luxury of that family and one day throw away those parents, throw away that guru. No. If you are here for enlightenment, if you are here for salvation or moksha, try to focus on this reality, this truth, this light. That is very, very important. Mukti माँ बाप को भी मुक्त करने में है और अपने संतानों से भी मुक्ति पाने में है और संसार से भी मुक्त हो जाने में, ज्ञान और बंधन से, सत्ता से, पैसे से भी मुक्त हो जाने में है। जस्ट कीप दैट इन माइंड। वेरी ब्यूटीफुल थिंग। थैंक यू। एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक ख्याल आ गया तो बहा दिया। Such a beautiful thought. थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो ये एडवर्टाइज था, ये हमारे स्कार्फ और हमारी बैग से समर्पण का प्रचार होता था जहाँ पे लोग जाते थे, और वो आपके लिए काम बन गया ना, आपका आगे का स्टोरी बन गया। वो बताइए। Yes, so that bag actually that played a very important role, not only for us joining Samarpan, but even for our marriage, confirming the soulmates. So yes, the story starts with that कि one fine day I observed it जब घर पे था, मैंने देखा कि हाँ ये बैग है, इसमें ये स्कार्फ रखा है येलो कलर का, लिखा हुआ है एंड आसन है, एंड they use this when they go to the center. वो लेके जाते हैं, स्कार्फ बांधते हैं, आसन पे बैठे मेडिटेशन में, बस उतना। एक्चुअली आई डिडंट टेक एनी इंटरेस्ट एज सच, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट उस टाइम पे उतना कुछ इंटरेस्ट था भी नहीं, जानने में भी नहीं था। हाँ, एंड दे यूज्ड टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस कि सेंटर पे जाते हैं, रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो देयर एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ वाज लाइक हाउ स्वामी जी सेज कि डेली जो क्लेंजिंग होता है थॉट्स का, so that half an hour of meditation, they used to walk for 20 or 30 minutes to reach that meditation center. They reached early, 10-15 minutes early, फिर half an hour meditation center था, वापस पैदल आए। It was like 1 hour or 1.5 hour event for them, इवनिंग टाइम में। तो रेगुलरली वो 3 इस तरह से जाते थे। तो आई थॉट दैट दे आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग अ गुड अमाउंट ऑफ देयर टाइम, एक तरह से उनकी लाइफ में ये चीज को बहुत ही ज्यादा और अच्छा प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन वाई वो उतना अच्छे से मैं नहीं समझ पाया था उस वक्त पे कि हाँ ठीक है मेंटल पीस, और इधर तो मेंटल पीस जो फ्रॉम लुकिंग फ्रॉम माय एंगल द लाइफस्टाइल व्हिच आई वाज हैविंग, तो लाइक आई वाज इन अ यूफोरिया विद हर। तो मेंटल डिस्टरबेंस ही नहीं है तो मेंटल पीस की उतनी रिक्वायरमेंट शायद नहीं टाइम ऑफ हिज लाइफ। यही ज्ञान है हमारा तो भाई। हमको दूसरे ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो दैट वाज आल्सो मिसकंसेप्शन उस टाइम पे कि भाई एनी रिलैक्सेशन, वी आर नॉट स्ट्रेस्ड, वी आर एंजॉयिंग आवर लाइफ, व्हाई डू वी नीड, तो क्या जरूरत है फॉलो दिस। ये साइकियाट्रिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है भाई। यस, सो लाइक इवन टुडे जब आज भी सोचता हूँ तो आई थिंक दैट आई डिड नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस कि क्या जरूरत है, या तो बिकॉज दे वर माय पेरेंट्स, उनके साइड से नहीं समझ पाया, जो भी हो, बट दे वर ऑन अ वेरी गुड ट्रैक ऑफ देयर लाइफ। आफ्टर जॉइनिंग मेडिटेशन उनकी लाइफ में उनको पीस एक्सपीरियंस हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, तो आई वाज कन्विंस्ड कि हाँ कोई बहुत अच्छी चीज है। लेकिन वहां तक था कि बहुत ही अच्छी चीज है, दिस अ वेरी गुड टूल जिनकी इन्हें जरूरत है, तो कर रहे हैं।
तो चलो ठीक है, लेकिन आई वॉज नॉट टेम्पटेड। वही मेंटालिटी थी कि भाई अभी अपने को कहाँ जरूरत है, तो आई डिडंट क्वाइट रियलाइज इट। लेकिन ये इंफॉर्मेशन थी। अभी वन फाइन डे वापस जब राजकोट में थे, वी वर मूविंग टुगेदर, तो कहीं पे बाय चांस ऐसा हुआ कि राजकोट में समर्पण मेडिटेशन का कोई सेंटर होगा। एंड वो ऐसा संयोग था कि उसी टाइम पे जब भी सेंटर खत्म हुआ था जस्ट, एंड मे बी आफ्टर 5 or 10 minutes, तो हम जैसे जानते हैं कि सेंटर से सब लोग ठीक है नमस्कार किया, प्रसादी लिया, और दे आर जस्ट एट द गेट, दे आर एग्जिटिंग। तो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर एग्जिटिंग, few people they were talking among them or discussing something, और क्योंकि सेंटर से इमीडिएटली आए थे तो स्कार्फ बांधा हुआ था कई सारे साधकों ने, एंड दैट बैग, वी आर होल्डिंग दैट बैग। सही है। तो उसी मोमेंट पे पता नहीं क्या कर रहे थे हम लोग, किस काम से गए आई डोंट नो, उसी मोमेंट पे उसी रोड से उसी बिल्डिंग के सामने से निकलना हुआ, और वहीं पे नजर पड़ी मेरी इस ग्रुप पे, और इमीडिएटली वो एक कोरिलेट हुआ। तो जस्ट क्योंकि कुछ देखा तो आई वांटेड टू शेयर इट विथ हर, और कोई प्रयोजन नहीं था पीछे क्यों बात कर रहे हैं क्यों बता रहे, लेकिन हाँ अरे ये तो जो मेरे घर पे लोग सब जा रहे हैं वो वाला। तो आई पॉइंटेड आउट टू देम और आई टोल्ड हर, देखो ये लोग जो सब खड़े हैं ना यहाँ पे, तो ये कैसे है, ये वाला जो स्कार्फ बांध के खड़े हैं ना, ये पापा मम्मी वाला स्कार्फ, ये लोग इधर जाते हैं, ये उनका ये उन लोगों वाला यूनिफॉर्म स्कार्फ। ये वही कंपनी है। तो आई जस्ट सिंपली पॉइंटेड आउट एट हर कि हाँ ये देख ये वाले लोग हैं, एंड दिस इज माय स्टोरी। आई थिंक आई विल हैंड इट ओवर टू हर, क्योंकि अभी आगे मजा आने वाला है। एक्टिव रोल उनका था, मेरा शायद इधर तक का एक एक्टिव रोल यहाँ तक पे इस चीज में था, तो शी विल नरेट इट नाइसली आफ्टरवर्ड्स। हाँ हाँ, मजा आता है थोड़ा। ये 2010 का टाइम है, उसी टाइम पे वी इंट्रोड्यूस ईच अदर एट आवर होम्स, लाइक accidentally his father saw a photograph together in his pen drive, so he got to know about me that he is Relationship. having a relationship, and Till that time no one at our home thought that I would ever talk to a girl. he was very Going shocked. back to that point. So and at my home my elder brother did a love marriage, and he asked me that you don't have such interest, na, you are not going to do love marriage. So I couldn't say a lie on his face, so I said him that okay, there is a boy, he's a good boy. You will like him, and only if you like him, then we plan to spend a life together, we go forward. Okay, we don't cross the boundaries, we will not cross the boundaries, we will not go against will of our parents. So like that we were introduced. So because we introduced each other like that, so they were also not so fond of getting us together, and they were not also against it, because he was the only child, so his parents were scared that he will do something, he will elope with this girl or whatever. So I was a very pampered child, so it's a very tactic situation for them, so they were like handled with care. Then it was their first time discussing the relationship point with their son, so they were also not they think okay, casually we will not oppose it, and eventually they will grow apart. Let's see how it goes. So that was the scenario, and at the same time and I also being a my sanskar were like that, we have to follow the rituals of our sasural, whatever our in-laws are following. We have to be part of that family, that is like our own home. The girl has to adjust to the boy's family rituals and everything. Yes. Expectation, social expectation. Yes, that is expected out of daughter-in-law. So I was very much keen to have their acceptance, and I was introduced to his mother. So we were just once in a while we used to talk, and she told us about. I told her about that we saw the people with yellow scarf here in Rajkot also. So she got excited, and so she took gave me the contact number of someone from Rajkot, that you contact her and make sure you go there
and you just listen what they are about, what they are doing, and you will like it just like that. So we on one fine day, I discussed it with him, that he was very much opposed to the idea of accepting or following someone as a god. So he was somewhat opposing, but I convinced him that okay, this is what your family is following. What is there to lose? We can just try it out. We can just listen to them, what they are trying to say, what they are doing. So, and it were our last 10 days in Rajkot. I would before like that. to add in a Okay. little bit background to it, why I was opposing. See, for one thing, like I told, that I felt I didn't need it. And there was no one who could show it to me that I actually direly need it in that point of time. See, because now when I talk with people, I talk with my patients, I talk to many people in the last professional journey, the many decade or so. So most of the people who actually need meditation, they think that they do not need it. So this is my observation. I'm not saying much in detail, but most of the people who are stressed, because they are so much stressed, or somewhere they are in the spectrum that they are unable to identify their stress, so they just neglect their stress, they are not aware to it. Or even if they are happy, they are not actually preached that meditation is not just for people who are sad or who are stressed. Even if you are jolly, I rather say it to people, like when someone says I'm very much happy, so I tell them congratulations, you can progress very rapidly in meditation. Because Yes. for those people who are already stressed, they have lots on their mind, so they cannot feel that energy, they cannot feel that connectivity immediately, instantly. So if you are already in a happy state, then you should be the one who should actually explore meditation and attain liberation, which would be very easier thing for you to do compared to other people. सही. So if I it's somewhere like it's asked in interviews, like if you are able to time travel, go back, what will you tell your future self? So I think I would be telling this to my own self, if I could travel back, that if you are happy, that's the best state to start meditation, because you have already achieved half of the things, which is a prerequisite. So Yeah. again, I would like to address the misconception that meditation is a stress reliever only, or it should be taken in as an alternative to stress relaxation pills or psychiatric pills. Many people they promote it like that. See, meditation helps you on those fronts. It's not wrong, but meditation is not just a therapy. In calling it a therapy, we are actually minimizing it very much. It's a very Very broader aspect. Yoga and meditation, it's not बहुत just सही for कहा. patients. Yes. This is what So we are that hearing was from a psychiatrist. So people should take yes. this very seriously, because certain things coming from a professional individual like Dr. Dhaivat Mehta, a psychiatrist who has a very successful practice, and he is trying to bring the importance of meditation in one's life, not just from spiritual aspect but also from the mental health aspect. So we have to understand this, that how beautiful this gift is in our life and how it can benefit. But we want to keep a separate session with you specifically to go more scientific aspect and how it affects our psychosomatic health. Yes. We will do that also separately. अभी Sure. हम भाव की बात करते हैं. मैं फिर से आपकी स्टोरी में थोड़ा प्यार और रोमांस लेके आता हूँ. तो क्योंकि आप डॉक्टर हो, थोड़ा ड्राई कर देते हो, मुझे फिर से थोड़ा पानी डालना पड़ता है. तो मुनीरा जी, somehow yeah. आप फिर से जरा वो आपके भाव में ले जाइए हमें, कि उस वक्त पे आपने कैसे पटाया इस बुद्धूराम को, और प्यार से परिवार से भी जोड़ दिया और स्वामी जी से भी जोड़ दिया, और समर्पण की शुरुआत हो गई.
यस, सब भी की शुरुआत साथ में ही हुई, ऐसा कह सकते हैं. आवर लाइफ रन्स पैरेलल टू द प्रोग्रेस ऑफ समर्पण. सो वैसे ही जैसे somehow I convinced him कि let us go, let us try it out, and करने में और ट्राई करने में क्या जाता है, और it will be better if they will be positive about us. The main thing that convinced him to go to that meditation center and explore it, that it will help us to convince them and be more positive about us, that okay, we are on right path, we are accepting their wishes. तो ऐसा एक्सेप्टेंस का बात जो है वो उनको लाने का माध्यम बनी, ऐसा हम बोल सकते हैं. फिर हमने एक संडे को चूज किया क्योंकि we were doing internship, so our internships are very hectic after MBBS. We don't have a luxury of holidays. Sunday is also not a holiday, but Sunday evening we went to Jignaben Gohil, as you can see her photo in the screen. At her house, there is in the ground floor, she has dedicated a full hall for meditation. So yes, we know now we know that Sundays are only Samuhik, then only one center is running, that is morning 7 to 7:30 in India. That is a custom. Sunday is a holiday for every center because the whole city gathers together for once a week. So there's a big collectivity. Everyone gets to know each other better. Very nice. So yeah, so Sunday was a holiday for them, for Jignabe. But we went there. We saw there is a lock. So I went upstairs. I saw that there is someone in the first floor. I went upstairs. We went upstairs and we told them that we are here for meditation. So Jignaben heartily welcomed us, and she told me, okay, you can do meditation in the ground floor. She opened her center for us, and she started some pravachan of Swamiji, that because she asked us that you know what is meditation, and we told her no, we are the beginners. So she started some pravachan of Swamiji, so we can get the better idea of what is meditation. So we sat there for half an hour, and we went home just like that. Having we were only both of us only on the center. So and it was private session हो गया. ये तो private session, yes, special session. Yes, Jignaben was kind enough, and today when we talk about it, she says कि दो छोटे छोटे बच्चे जैसे आप लोग जो आए थे, और एज पर द रूल्स तो सेंटर बंद है, तो एज पर द रूल्स तो उनको बता देते हैं कि आज बंद है, सुबह को हो गया ध्यान. लेकिन बोले आप लोगों को देख के मेरा मन नहीं हुआ कि पहली बार आए हैं तो इनको मना कैसे करें. तो इट इज हर ग्रेटफुलनेस कि उन्होंने वो कोई रूल्स हमें नहीं बताया, कुछ नहीं कहा. शी वेलकम ओपन हार्टेडली, बोला हाँ आ जाओ, नीचे आए. और क्योंकि वी वर बिगिनर्स, होने लगा कि मौन ध्यान में शायद बोर हो जाएंगे, नहीं फोकस कर पाएंगे. तो इवन स्वामी जी का प्रवचन ऑडियो, शी स्टार्टेड द ऑडियो सो वी कुड फोकस, वी कुड कम टू नो अबाउट समर्पण. शी गेव अस द बुक्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू समर्पण. उन्होंने कहा कि इफ यू गेट योर टाइम in between your job and your work, in the internship, you please go through this, you read this, you will come to know more about it, and you will have like good anubhuti in meditation. You will progress. Yes, there was a book in which the mention of chakras were there, and we were completely unaware about this concept of spirituality and chakras, and our mind was wondering what is this, and this is very complicated information. We were not able to digest it. And at that time surrounding there was some vegetable vendor is going, and some vehicle is running, and horns are buzzing. So there was all chaos surrounding us, commercial activities. So we just sat there for half an hour, and we left, and we were there to show our mother that we attended this class. Our attendance was hard. So we informed her that we went to meditation and we enjoyed it. So she gave us another job, another duty, another task, that okay, you enjoyed it for half an hour, and then you want to learn the concept of it. There is a 8-day workshop that is going to be held in Rajkot only.
So you will And get my the mother, she was intelligent enough. She knew that shivers would be going on, and like once when they agreed to attend the center and when they have gone, she tried again telling us, "Ki you go for the shivir also." Hmm. So she I contacted at Gandhidham, got the contact number of Rajkot, got all the details. She did all the background work. She was very persistent. Then she told us that so and so place, so and so dates, the shivir is going to happen nearby you. So you Yes. can go and attend there. Hmm. Now that Yeah, was a very and the special. shibir also, like it is, we can, when we go back, we think that it was planned by destiny, because we were in, as we know, as we told earlier, we were doing our internship. That were our last 10 days together. Because after that, he was having exams, entrance exams, results had arrived, where he had got admission in post graduation, and I have not passed the margin of required entrance marks. I'd like So to give in some details. Actually, the thing was we had given our entrance for post graduation, but the results were awaited. Yes. So we didn't know actually who would pass, who won't, because it was not common for people to clear it in the first attempts. Post graduation medical exams are very hard, so 2 or 3 times generally people take. So we had given the exams, but we weren't sure what would happen. And those were the last 10 days of internship in Rajkot. And after internship, if you are selected for post graduation, fine, you continue in your department. If not, you pack up, you go back to your homes and prepare there. You cannot stay in the hostel or the college. So that was the scenario. So results were awaited, and last 10 days of the internship were remaining. Everyone was happy that after 10 days they would get free to go to their home. But for us, it was the contrary. We weren't so much happy or excited. Rather, we were sad that maybe we may have to part ways and go to our respective homes. We didn't know what the result would be. So, like, those were the last 10 days of internship, and within those 10 days, there was that 8-day video schedule that was going to happen. Okay, now. yes, so we obviously we wanted to make the best out of that 10 days. That we wanted to spend that time together to have some good memories, or okay, whatever is left, we can spend it together. So that was the idea, and exactly at that time the shibir was organized. And even if at all we have not attended that shibir, I don't know, for the next 1 year we will attend that shibir, because he alone was never going to attend the shibir. So I think that was planned by destiny. And we got the venue, we got the time. We were doing internship, so internship itself was a hectic. So 2 to 3 hours of shibir and keeping your phone on switched off. That at that time they were very keen to switch off our mobiles. Now we can keep it on silent or attend the phone, but at that time they were very keen that they were making sure that we switch off our phones. So also even in internship time, we did extra 2 to 3 hours of work to make up for the time we are doing the shibir. We used to get free at 1 o'clock or 2 o'clock at night from our paperwork and all the duties. So that dedication to get our parents' approval, and very focused, I would say. yeah, that was the motivation behind for the first day. First day only, I would say, because from the first day I sat on that ground. I still remember that anubhuti, that tears were flowing continuously for 3 hours from my eyes. I didn't know why I was crying, but maybe that was a cleansing, or my soul was waiting for this moment. So from the first day, I knew that this is for me. So forget about the parents' approval. This is for me. This is the path I want to go. One magic that took place in that coincidence, that destiny, whatever you call. But I want to tell something from the past life that dragged us there in that positive atmosphere. And
at that time we made sure, however busy we are, how my brother also came to visit me. We spent the whole day with my brother, and we went to 40 kilometers from Rajkot to Indoor hang out garden. with him. And there was timing of Shibir was there, evening 6:30 to 9. So I just hurried and okay, we have to go back to the Shibir. So we are roaming for 100 kilometers for the whole day and coming back on the time to attend that अरे Shibir. No, I want to attend. I don't want to miss out any single day on that Shibir. क्या बात है, So क्या बात first है. It's time a is very always beautiful dedication. special. Yes. बहुत सुंदर समर्पण और डेडिकेशन है आपका, और वो दिखता है. और कहीं ना कहीं दोनों में से एक ने जो शुरू किया उसका फायदा दोनों को ही हो रहा है ना. सो एक ज्यादातर लोग जो समर्पण में आए हैं, या तो अपनी मुसीबत, अपने शारीरिक मानसिक रोग की वजह से, या किसी के प्रॉब्लम से, या किसी सिद्धि की अपेक्षा में आए हैं कि मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा. लेकिन आपकी पहली ऐसी स्टोरी मैंने सुनी कि पेरेंट्स के अप्रूवल के लिए आप इसमें आए और फिर भी आपका जीवन बन गया. देखो, आपने पहले दिन की अनुभूति में ही ये महसूस किया कि कुछ अलग है. मेरी आंखों से पानी क्यों बह रहा है, मेरा क्लिंजिंग हो रहा है, या मुझे दुख हो रहा है, मुझे खुशी मिल रही है, क्या है मालूम नहीं, लेकिन मेरी आंखें बह रही हैं. यहाँ पे पूर्व जन्म के हमारे जो गुरु के साथ रिश्ते हैं, बंधन है, वह ऑटोमेटिकली न गुरु को मालूम है, ना आपको मालूम है. आप दोनों अनजान हैं, एक दूसरे के सामने नहीं हो, फिर भी ये अनुभूति हो रही है. ये बताता है कि परमात्मा है, परमात्मा वर्तमान में है, यही है, हमें उसे महसूस करना है. आप समझ रहे हो? दिस इज वेरी 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 पावरफुल टेस्टिमनी that most of the people fail to understand. That's why Swamiji said in the audio discourse of एक क्षण, one moment, मुझे इसी रूप में चाहिए, मैं ऐसे ही मिलूंगा, मैं इसी वक्त मिलूंगा, ये सब छोड़ दो. Don't put the condition. Come as who you are, and Guru will give you what you need, what is the requirement for your spiritual progress. And that is why the way mother take the baby and swing around and try to make it feel comfortable, and then put the spoon of food and make the baby eat, the same way Guru does that. We are lost in the world, only this way, only that way. I have this problem, I have that problem, but something has to motivate you to go there. Your motivation was to get approval from the parents. Something has to motivate you. उसको संकेत में लीजिए. मैं बार बार कहता हूं, आई एम यूजिंग द वर्ड संकेत और इंडिकेशन. देयर इज एन इंडिकेशन that will come first, then there will be opportunity or samyog. And if you take advantage of both this, knowingly or unknowingly, samarpan will happen. That will lead you to salvation, that will lead you to moksha. Okay, so ये सीक्वेंस है. मेरे जीवन में ये पैटर्न बनाया, जैसे स्वामी जी का लल्लू ललवन का फॉर्मूला है, ये मेरा फॉर्मूला है. संकेत, संयोग, समर्पण, मुक्ति. तो इसको पकड़ के चलना है हमें जीवन में. बहुत सुंदर कहानी है. आगे बढ़ते हैं. अभी ब्रेक लेना है. आई थिंक 3 क्वेश्चन हो गए. हाँ. चलो फिर अपकमिंग इवेंट्स के लिए थोड़ा आपको भी ब्रेक मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाता है. थैंक यू. बहुत मजा आ रही है. एंड डोंट स्टॉप एनीथिंग. दिल में जो भी आए बोलते रहिए. आप खुल के बोलते हो तो मुझे भी खुल के बोलने का मजा आता है. आई एम जस्ट मिररिंग योर भाव, और कुछ नहीं. और फिर बाद में स्वामी जी बुलवा लेते हैं जो बुलवाना है. वी विल टेक ए ब्रेक 5 मिनट के लिए. जय बाबा स्वामी. Hey, Baba Swami, Dr. Dhaivat, Dr. Muniraji. Really wonderful session going on. As we all know, we have different programs going on in Samarpan Americas. So for upcoming events, I would like to invite Palka Patel for to invite
Jai Baba Swami. I think we need to make her co-host. She is already co-host. All right, I think she is co-host, but let's go on and promote the session. Palka ji is probably not able to join us and promote it. So let me go ahead and do this soul warning session, Anubhuti sharing session, and one of the most powerful session by the sadhaks, for the sadhaks, and for this very, very important Nagpur Mahashivir, which just happened. And lots of US sadhaks went to Nagpur Mahashivir and attended it in person. And lots and lots more attended in the centers, in groups, in solo, and everybody had one or the other experience to share. So this experience sharing session is coming up, and we would like to invite all the people who would like to register from Samarpan USA, Americas, and share their experiences, and also be part of this Chaitanya, to enjoy the Guru Sanidhya once more, through the relive the Nagpur Shibir, and join us on January 27, 2024 at 11 a.m. EST. We would like to invite everybody to join this wonderful session. Thank you, Surbi, for conducting. Go ahead, please. Thank you. As we are enjoying Dr. Dhaivat and Dr. Munira Mehta's session today, we have some upcoming TIS. I would like to invite Pranavji to promote that. Jai Baba Swami. Jai Baba Swami, Jai Atmeshwar. Next month, we are taking an amazing turn. We have got to see how the vibrations are going to change for this show with very respected and divine soul, Bipin Bhai Mehta. Bipin Bhai is a dedicated Shiv Upasak at core of his heart and soul. Now imagine a person who has been chasing Shiva from his childhood, and at the extent that he did not even hesitate to go in jungle and embrace the solitude to perform sadhana for almost 9 years, just to realize that Shiva that he has been looking for, that Shiva Kripanand Swami, is actually in the society. And what happens when a soul thirsty from lifetimes sees the water? You just have to hear the full story from his soul. Bipin Bhai is very motivated in spreading message of Adi Yogi, that he has constructed 3 to 4 temples and have thousands of people following him. We are so humbled and honored to be able to see and meet Bipin Bhai Mehta in next month our TIS session as our guest. So please do not forget to join this session and progress spiritually. The session is on Saturday, February 10th, 2024, 7 p.m. Mumbai time and 8:30 a.m. Eastern New York time, US. With that, we will, look at a small clip that shows the devotion of Bipin Bhai Mehta. जो शांत होके गूंजता, हाँ मैं ही तो शोर हूँ, आकाश हूँ पाताल भी, मैं सूक्ष्म हूँ विशाल भी, शिवों
हूँ, रुद्र हूँ, निगल लूं सब, हाँ मैं ही वो विनाश हूँ। मैं खंड हूँ, मैं अखंड भी प्रचंड हूँ। मैं ही शांति, मैं शिव हूँ, मैं ही तो हूँ। हाँ मैं शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। मैं घोर हूँ, मैं अघोर हूँ, विभस्त हूँ, मैं विभोर हूँ। मैं पूर्ण हूँ, मैं शेष हूँ, समग्र मैं ही विशेष हूँ। जगत का हूँ आधार में, हाँ मैं ही तो महेश हूँ, हाँ मैं ही तो महेश हूँ। मैं शिव हूँ, मैं ही तो, हाँ मैं शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। Jai Baba Swami, what a beautiful video. And मैं शिव हूँ, what a beautiful song. Ultimate is Shivoham. Ultimate is finding that Shiv inside and letting go the Jiv that is holding on outside. बहुत सुंदर। तो बिपिन भाई से हम मिलने जा रहे हैं अगले महीने इसी तरह से इस समर्पण प्रोग्राम में। बिपिन भाई मेहता has been very active volunteer of Samarpan family. People know him through the Baba Swami multimedia because he was one of the primary contact for those who want to get the literature of Samarpan when we had the office at the Arucha Rasta office in Navsari area. So you will be very excited. This was just the glimpse that we gave you. And every month we have such a wonderful guest, such a wonderful, very devoted and very pure soul that is coming through Samarpan stories, through the devotion for Gurudev. If such a high level of pure soul, religious soul are coming into Samarpan meditation, you and I can also join. If Jain Munis can join Samarpan meditation, you and I can also try to reach to that next level of our soul. And we will continue the journey with Muniraji and Dhaivat ji. आ जाइए, welcome back. बहुत मजा आ रहा है. Hopefully next half will be little faster क्योंकि जो important message देना था या important चीज होनी थी वो आपके बेस में बहुत पावरफुल थी और आपका बेस इतना सुंदर है. दूसरी बात कि इस प्रोग्राम के जरिए हमने एक और नाम, एक और व्यक्ति से पहचान हुई, मुलाकात की, जिग्ना बेन गोहिल. So I want to thank you, Jigna Ben, and I want to invite you for our This is Samarpan program from this platform. तो आप तैयार रहना क्योंकि अभी इन लोगों ने आपका फोड़ दिया है भांडा कि जिग्ना बेन को भी लेके आओ. इतना प्यारा सोल है, इतना पवित्र है जो ऐसे छोटे छोटे बच्चों को प्रेमी बना के गुरु के चरणों में रख देते हो. तो जरूर चलो आगे बढ़ते हैं. तो आपने ये शिविर की
आपको ये अनुभूति हुई मुनिरा जी, आपको बहुत कुछ स्पेशल लगा कि यहाँ पे कुछ है बियॉन्ड द अप्रूवल ऑफ पेरेंट्स. I want to get something more from this meditation, and it was very critical time, as you are saying that it was the final internship days, and you wanted to get the next post graduation level also. So there is so much mental things that is going on in your mind. Stress जैसे कह सकते हैं हम, फ्यूचर का प्लानिंग, आगे हमारा भविष्य क्या होगा. आपने उस वक्त पे मेडिटेशन शुरू किया क्या, कि फिर सिर्फ शिविर करके आ गए? मीनिंग दैट डिड यू स्टार्ट मेडिटेटिंग रेगुलरली, और स्वामी जी को गुरु के रूप में आपने मन से स्वीकारा, दिल से स्वीकारा? यस, एक्चुअली मेरे लिए तो यही अनुभूति थी कि वो इंटर्नशिप के टाइम पे इतना 3 घंटा में मोबाइल स्विच ऑफ करके I was able to attend it for the 8 days. I also have shared that Anubhuti with Guru on the last day Anubhuti session. So I was very much attracted to Swamiji. I accepted him as my Guru immediately, and I was also very much interested in 45 days Anushthan. So what happened, after 8 days Shivir commenced successfully, and then we had to part our ways. On the days of Shivir only, he got the call. Our results were out, and he managed to crack the entrance exam on the first trial himself. Even though we studied together, I used to teach him, but with my learnings, he excelled and scored more than me. So this is called complimenting. This is called complimenting. खाना पकाया तूने, खाया मैंने, और मजे हम दोनों कर रहे हैं. Yeah, we used to study together, and this is we as from starting we were friends. We started studying together, and he was a very good listener. So before becoming a psychiatrist, he had the quality of a psychiatrist. He was a very good listener. So I used to narrate the whole chapter, and he used to take the concept out of it. So that way we studied together. And I was very good with memory. So, and since childhood, I didn't know that we have to clear our concept, or this is going to be helpful in our lives. So I just used to remember everything. So that way, and he used to learn the concept that okay, everything. He cannot remember a thing when his concept is not clear. I can remember. If my concept is not clear, I cannot mug up. He cannot I need to teach it to myself first if I want to remember it. I just cannot reproduce what I read. Yeah. So in studies, we also used to complement each other. Her learning style was different. My learning was mugging up, and his learning was concept. So his memory also improved by listening to me continuously, and I also get to know the concept of the whole chapter. So that way, that way we used to study together. So I would like to add one thing, because while we were in a relationship, we were very much clear about one thing, that the biggest minus point or the biggest hindrance which one can get is a poor academic performance. So we both were keen on that thing, that even if like say a subject is difficult, or maybe even if the paper was hard, we cannot tell that to our parents, because obviously the only reason which they would understand is that you failed because of your relationship. हाँ, नहीं सही है, एक बहाना मिल जाता है. Protect our relationship, that no one should think negative of it, that we both are not better together. So we wanted to show them that we are stronger together, we are better together, we complement each other, and we bring positive things and positive changes in each other's lives. So even after rooting, even after enjoying, we specifically dedicated time to studying also. And because we used to do so many things together, and in the studies, as she told, like we complemented each other, so we were better off studying together rather than separately. And sometimes there was geographical barriers, like we cannot stay together always in the library or so. So we used to talk on call. She used to study in her room, in her hostel. I used to listen with the earphones and everything. And I still remember, just like a soldier, he has one gun and many cartridges. I had one phone and I had 3 to 4 batteries. Because one battery was loaded in the mobile, another one in my pocket,
and the third one that was being charged in my room. So Wow. we didn't have even a minute's break. Like immediately the battery was low, I used to swap it with the one in my pocket. And we even used to talk for hours together about our topics, the subjects, and in that way we were able to finish our academics in a smaller amount of time compared to other people. Like when the final exams were there, I remember in one subject, I actually didn't pick up my book at all. See, there was one reference book, and Wow. you can never imagine someone passing any examination without touching a book. There was only Sahi. one book. It's not that ki alag authors ki. There is a whole stack of books on this table. And that book is at the end. It's the bottom of it. And there is mud on Next it. day There the is dust paper. on it. And next day there was the paper. So my roommates and other people who used to come to my room, they actually thought the opposite, that he has gone crazy and he's doomed now because he cannot see anything else except her, and he's not Sahi. even touching the books the day before the exams. They didn't know that we study together on phone. So my He's roommate, passing his time on phone on the day before exams. they saw me on the phone roaming in the quadrangle and on the grounds and on the gardens of the hostel. They didn't know what we were talking. So my Sahi. roommate, he was at one point of time, he was genuinely concerned, and I had to prove it to him that I know the subjects. He asked me few questions actually to confront me कि नहीं नहीं तूने तो बुक ही नहीं छुई है, तू गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, पूरे दिन ऐसे बातें करता रहता है, तू अभी कौन केस गया है, तो ऐसे कैसे पास करेगा. तो मैंने बोला भाई पूछ तो he asked me actually few questions and I answered him satisfactorily. After that he was happy. बहुत funny. It was a funny moment. Those were days. Yeah, but I like one thing about both of you, that you guys are very practical. You know, yes, from the camera of the world, you can say in our desi language, ये तो लफड़ेबाज है. कोई यही कहेगा दैवत तो गया काम से. हाँ, दोस्त लोग ऐसे ही भाषा में बोलते हैं ना. दैवत तो गया, ये तो पूरा दिन फोन पे लगा रहता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, न पढ़ाई में ध्यान रखता है न कुछ नहीं. लेकिन what your life's understanding is, what your values are, that is playing a big role in your success and in understanding each other. And I see not just emotional connection, not just male-female attraction, but I see the values are playing big role. For example, Muniraji is trying to respect that since your parents love this meditation, probably if we accept also this part, they will have some respect for us. She is thinking and talking practical thing and you are listening to her. That shows your mutual respect for each other. Okay. Second thing, every parents who have sent their children outside their house or for higher studies, they of course expect that their children will do good in their studies and excel and come out with the 5 stars, you know. So you are not just spending time as a lover boy and girl, but you are also spending time for studying. So there is a thought that is coming in the mind of our Indian audience. आपकी phone line कौन सी कंपनी से थी? जो वर्जिन था तभी वर्जिन लॉन्च हुआ था. That time there was CDMA service, Virgin Mobile. For a short time, it was a Tata-owned company. Yes, we used to say that we are responsible for bankruptcy of Virgin. That company maybe it went bankrupt and it lived for a short time only. So we used to talk for 24 hours, day and night. CUG plan tha, so it was free calling. If you take CUG, Virgin to Virgin free, 70 rupees or some basic recharge was there. But Unlimited maybe the talk. company executive, they didn't thought that people can like even just 24 घंटे भी घिसेंगे, like one headphone and multiple batteries. So the instrument was always online. Yes, and that instrument I still have it with me as a memory. As Hers is there. And we only have each other's number in that phone. We never use that for calling any other person. We were very strategic.
we didn't save it, so we won't have any interruptions from other callers. बिल्कुल Yeah, very smart. otherwise our parents will call and it's coming constantly busy. they will get suspicious. What my child is doing. तो आपने तो कई प्रेमी पंछियों को एकदम हाइट ऑफ इंटेलिजेंस से दे दे दिया दिया हमने। कि हाउ टू मैनेज your study, how to manage your love, how to manage your parents, and how to successfully manage your profession also. ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है. This happens only in India, ऐसे कह सकते हैं हम. Yes. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. So that was the background, a little bit of backstory that I was able to crack post graduations. Yeah. So after Shibir, and luckily I got admission in my same college, PDU Medical College, Rajkot itself. So while it is also, when I reflect back, it was like maybe my destiny to go into this field. There are many postgraduate options. We see there are multiple doctors, surgeons, internal medicine, pediatrics, gynecologists. But I think meditation, the topic of meditation, that overlaps maximum with the specialty of mental health. It doesn't go much into other facilities as such, other faculties, but Yes. mental health, nothing was planned. Actually, I wasn't into meditation at all, I can say it now. उस टाइम पे तो बस वो जो बैकग्राउंड एक शिविर की थी, and I based on the percentage, when I went in the counseling center, there was a panel, the dean and other doctors, they were sitting, and on a big screen it was displayed कि भाई चलो कौन सी colleges है and which all seats are available, and after a candidate picks up a seat, that number like goes down continually. So when I went in my turn, I didn't know anything about psychiatry, I didn't know about mental health. I never aspired to become a psychiatrist. Rather, any normal MBBS student, they won't choose psychiatry as the first option if they're getting many options. This is the general consensus. At that time, it was so. Maybe today it's famous, so people may opt. लेकिन उस टाइम पे जो सारे ऑप्शंस थे, तो आई वाज कंफ्यूज. लॉट्स ऑफ ऑप्शन, डिफरेंट कॉलेजेस, नंबर्स बहुत सारे डिस्प्ले हो रहे थे. आई टुक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. So the dean, he was very supportive. He asked me, the vice chancellor of the university, actually, he was there. He asked me, क्या सोच रहे हो? I said, sir, I am considering कि कौन से वाले मैं कैसे करूँ. बोले आपने कुछ सोच के रखा है? So I said no. So then he asked me one question: do you want to go in clinical branch or no, where you have to deal with patients? There are some branches which are not clinical. So I said, he asked me, do you like to deal with patients or you want to work alone in your chamber or office? I said, no, I like dealing with the patients. So at that time, only one seat in the clinical branch that was remaining. All the other had been taken up. तो उन्होंने बताया कि भाई तो फिर देखिए एक सीट है और it is my suggestion, you take up this, you won't regret it. So actually he was a very good mentor in my life. Mentor means for maybe 30-second communication. It's not that कि ज्यादा समय हमारे लाइफ में किसी ने दिया. Yes, एक दिशा में small pointer. Yeah, तो छोटा सा निक जो उन्होंने दिया, so it made my career in this field. So that vice chancellor, he was also responsible and he helped me take up this seat. So maybe it was destined, but was it left on my choice, maybe I wouldn't have selected this, and I wouldn't have this unique opportunity to be a mental health practitioner and to experience meditation, explore meditation, and I have a unique perspective. Experience of both the ends, and it is helping in my career of Samarpan. I would say career of Samarpan, I use this word because the Gurukarya, it is no less than a parallel, a whole career. Yes, so, very true. Yes, that was my destiny, I think. Very beautiful, very beautiful. Residency first year, his residency first year is very hectic. We don't even get a chance to take a bath. Let alone spending a half an hour for meditation. So immediately after Shivir, जो स्वामीजी ने एक लड्डू दे दिया कि लो और पकड़ो और खाओ इसको. तो immediately after the Shivir, I didn't get a chance to finish even 45 days. I had to start my clinics and everything. और फिर जो first year, तो it like simply flew away. तो एक साल after Shivir, I was blank. 2011 आगे कुछ उतना गुरुकार्य या रेगुलर सेंटर विजिट्स
या regular Anushthan center ki visits, that actually didn't happen. One important thing happened, Guru Purnima, but we'll come to it later. Yes, so I shifted to Vadodara after my internship was completed. I didn't have a post graduation admission, so I had to prepare for entrance examination for the next year. So I went to Vadodara. I took admission in coaching classes, and I wanted the classes to be paid on my own. So I started a job also along with the classes, and along with that I also completed my 45 days Anushthan. So I was very persistent on that I have to complete, Wow. because my grandmother was a Swaminarayan follower, strict Guru follower. So she didn't like, she was very opposed. Actually, she used to call my father that your daughter is slipped away from her hands. She is going for here and there on her own, and she's not. God knows what she is doing. मान नहीं रही है, हाथ से गई लड़की और ये सब। तो तभी लेकिन मैं फिर मैं ड्यूटी का टाइम ऐसा सेट करती थी कि 8 o'clock was a meditation time in Vadodara, 8 p.m. So I used to take a second shift, 2 to 8, 2 p.m. to 8 p.m. my shift duty, and in morning hours 10 to 1 I used to attend the classes, or 1 to 2 I used to take break, and then I used to go for the job directly from there, and from directly from job I used to go for meditation, and then I used to come to home. So 12 hours I spent outside. So my grandmother didn't like it, but somehow I managed to complete, because Swamiji says that in 45 days there will be many hurdles. So I actually felt that hurdles. Most Yes. negativity started to come from nowhere. Everyone is opposed, and yeah, it was chaos surrounding me. But somehow I handled it with grace, and I completed my 45 days in Very, Vadodara. very beautiful. ये जो डेडिकेशन है, ये जो डिटर्मिनेशन है, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल. क्योंकि अगर हम कुछ पाना चाहते हैं और उसकी प्राइस पे नहीं करना चाहते तो नहीं होता है. 45 days अनुष्ठान is that price that you pay. Okay, you got the admission in the medical college, but if you don't study, you will not be successful doctor. The same way, you got the admission in Samarpan meditation, you attended one workshop, fine. If you do not practice this 45 days, you will not be able to come to the pure desire for moksha or salvation. This is my experience based on my own life and other people's story or what we have witnessed. So two, three things that I want to share with the sadhaks from your story. You see, you are going throughout your story with 5 stars. Everything is check. Everything is going good because of your determination and the love between two of you. Plus, there is a divine grace. I want to bring that attention to you. There is a divine grace, ancestral blessings. As I was telling you, Muniraji, your mother's blessings are with you, and Yes. Your good karma from the past life. Okay, so Yes. that's what makes soulmates are always supporting each other through their energy, through their intention, through their love, and make it possible to succeed in life on a physical plane also, at the same time on a mental, emotional, spiritual plane also. So that is the essence of soulmates, and that's why people are always hungry to get the soulmate relationship. वो मुझे आपके रिश्ते में दिखता है. But what can happen when you come across all this and you fail to take advantage? For example, Swamiji says that when you are coming for the 8 days workshop, if one of your chakra is blocked that day, you may not reach easily to the center or to the location of workshop. Okay, so this is what I have noticed myself, and he warned me because I have done I have attended 2 8 days workshop while Swamiji was here in Montreal. So I want to bring that to the attention of those who are newcomers, and then those who are really determined, like Muniraji and Dhaivatji.
that yes, I want to finish this complete 8 days workshop. You want to pay attention that sometimes your chakra is blocked not because of you, not in your knowledge also, because I have seen many people explaining based on limited knowledge or words of Swamiji's speech that you have Agya Chakra block because you are too angry, or you are keeping too much grudge about others, or you are this and that. No, it is, you don't even know it is your Agya Chakra is blocked simply because somebody is trying to sit in your Agya Chakra and keep on giving you the Agya. Do this, don't do this. If you do this, I will not approve this. Those kind of parental torturing, spousal torturing, children's torturing, or at work, boss torturing us, all those little things also blocks our Agya Chakra, because 24/7 you will be thinking out of fear, if I do this, he or she will do that to me. That also blocks Agya Chakra. Same thing with the heart chakra. You don't know, but your parents or your grandparents or somebody who you respect as elderly person in the family is blocking your heart chakra. So you have to understand that part, that without your knowledge, you may get stuck and not reach to that workshop on that day. But here the destiny is playing its role. Here your soul's pure desire is playing the role, and you will reach to the point of Guru's presence and your presence and listen to that workshop, and things will change. That is why collectivity or group of people with the same intention, same energy is very, very important. Swamiji says soulful collectivity, not just number of people getting together. It is not the thing. Soulful collectivity is those souls whose intention is to progress on a spiritual journey together in the same direction. That is soulful collectivity. Okay, so not just मेरे सेंटर पे 200 लोग हैं, तुम्हारे यहाँ तो बेसी है. That is a stupidity when you are thinking like that. Soulful collectivity, मेरे सेंटर पे सिर्फ 5 है, लेकिन हम इतने जुड़े हैं कि हम 50,000 को हिला सकते हैं. That is soulful collectivity. Swamiji also says, एक दिन नहाया नहीं तो चलेगा, लेकिन ज्ञान मत छोड़ना. दैवत भाई की स्टोरी में वो दिखता है. You see, Dhaivat Bhai is so determined. He was logical person. He was not willing to accept a living person as a guru or God, but he was following the benefit of meditation. And today he is insisting that forget about everything, do meditation, even in the good days, not just in the days of problems or sickness or negativity. But if you keep that level of energy, you may have better chances to excel in the future on your spiritual journey. Very powerful things. मैं बहुत एक्साइट हो जाता हूँ ये सब बातें करते हुए, और गुरुदेव के गुणगान गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कितना सुंदर गिफ्ट दिया है गुरुदेव ने हमारे जीवन में, कितना अच्छा आशीर्वाद मिला है हम सबको. तो हम सब भी पिछले 800 साल से गुरुदेव के साथ कहीं ना कहीं इस यात्रा में जुड़े हैं. We are all connected to Gurudev Swamiji as our master, as our mentor, as our spiritual teacher throughout so many births of life. And because of our intention to progress spiritually, because of our desire to excel in this spiritual journey, to become soul from the intellectual person, from the physical body, we are here today together and we are learning from each other. Whatever you like, take it. If you don't like, I'm moving on the next question. Right. Would you like to share your memories of attending any major event? यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका सुनने वाला है. So if you want Yes. So as I completed my 45 days Anustan, I did the Gurukarya of Shibir Sanchalan there. 3 Shibir I did Gurukarya. Then I was constantly in contact with his mother, and we used to talk about spirituality in Swamiji. We used to talk daily. I used to talk daily. I made sure I used to talk with his mother daily and with him also. So at one point of time, like she was the daughter of my mother. Yeah. More attached than me and more in communication with her. हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है. ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा प्यार बहुत कम देखने को मिलता है. आई एम वेरी हैप्पी. इधर सास और सास की सास. Yes. Yes. 3 generations. Very beautiful. So
So in 2011 July, just after we completed the Shibir and all, there is an announcement by Swamiji that we will do Guru Purnima in Punadi, Kutch. So we being the in Gandhidham, his parents and family, so they were going to attend the Guru Purnima, and his mother contacted me that okay, you have done the Shibir and there is Guru Purnima is very much important. That is the event where you get the seat from the Guru. So and you accept him as a Guru, as a Paramatma. So I was very much interested in attending the Guru Purnima. I asked her, but there will be very difficult to get permission from my side because we are not married, and our family also had never met in person. Only his mother and my father, and they have talked it out on phone. Okay, so so somehow his mother convinced my father that okay, we are going for ashram where male and female are going to stay on different compartments. They will not meet, so there is no issue with that because our family was orthodox, so they don't allow us to spend the night before marriage to the groom's house, even if it is a arranged marriage. Even the groom is selected by them. So this was the love marriage, so it was very difficult to convince them. But somehow my grandma, his mother, convinced my father. My father convinced his mother that okay, let her go. Let her go. This is Guru Purnima. She is not going to her sasural. And my grandmother was very much attached to me. So I think that she didn't want me to go that far because Gandhidham, we had never heard of the name Gandhidham until I met him. So it was very far for her, and she was reluctant to send me away because I was very much. My parents were in Orissa. My father was doing job in Orissa. So practically we were living me and my grandmother. So she must have thought that if she will live, what I will do? How can I live without her? That way. So that may be the reason of her opposing my marriage with him. So eventually she accepted it. Okay. So I went to Guru Purnima, and he was doing his residence. So and a totally different phone call came to me for the same event. So my mother, she also uses tactics. Ultimately, she's my mother. Maybe I can take pride in that. She knows you better than Munira, right? Yes. Yeah, she knew that. Yeah, so she knew my weak point, and she knew that okay, I had attended the Shibir. I wasn't very much regular, and Guru Purnima, like even it was her bab. Actually, it's like they're wanting me to join meditation for my own benefit. ऐसा नहीं है कि उनको कुछ मिलेगा, बट उनको ऐसा कि कोई अच्छी चीज है, ये नहीं समझ रहा है, नहीं मान रहा है, लेकिन जहां जहां मौका मिला तो दे ट्राई कि चलो इसको इस तरह से नहीं तो इस तरह से भी बताते, कन्विंस करते हैं. तो लाइक शी कॉल्ड मी अप और बताया कि इस तरह से कच्छ में 2011 गुरु पूर्णिमा, कच्छ का आश्रम सबसे प्रथम बार कच्छ में गुरुदेव ने परमिशन दी थी. कच्छ के साधकों ने एक पहल की. See, I'll give a background. Kutch is one of the largest area-wise district, maybe in the whole of India. When you compare it, it's as big as the country of Israel and as big as the state of Punjab of India. So it has a huge area. It is a district, but it is 90% uninhabited. So there are only specific pockets. So even the population is very less. The sadhak sankhya, Kutch sadhak are very less. I think when the ashram was given to Kutch, the permission was given, there were very few sadhaks, just as you said. The atmiyata that was very high, the number practically, the number of sadhak was low. So maybe 300, 400 sadhaks at most. So they ventured to ask Gurudev the permission to get an ashram. They collected the donations, the funds were prepared, and then the land of the ashram was taken. So
तो लाइक कच्छ आश्रम के साथ भाव उस तरह से बहुत जुड़ा हुआ है कि बहुत कम लोग थे, बहुत संघर्ष था, इतना इजी नहीं था मैनेज करना। लाइक सौराष्ट्र से कंपेयर करें तो इवन वन सिटी ऑफ सौराष्ट्र दैट हैज एज मेनी साधक एज कच्छ या उससे भी ज्यादा। तो कच्छ आश्रम की हिस्ट्री ऐसी रही है कि बहुत चुनिंदा, बहुत गिने चुने लोग हैं, लेकिन उनका भाव बहुत अच्छा था। तो उस तरह से कच्छ की आश्रम की भूमि ली गई थी और वहां पे गुरुदेव ने कहा था कि अभी जो गोवा की जो गुरु पूर्णिमा थी 2010, उसमें कहा था कि अभी नेक्स्ट जो गुरु पूर्णिमा होगी वो अपनी जमीन अपने आसमान पे नीचे। Those were the iconic words, क्योंकि दांडी में गुरु पूर्णिमा करना थोड़ा डिफिकल्ट था, रेनफॉल, रेन प्रोन एरिया। गुरु पूर्णिमा comes in monsoon, the middle of the monsoon. So Kutch was a very good suitor. Kutch is a barren land, desert है, तो मानसून का इश्यू नहीं था। तो 2011 not only for the people of Kutch, साधक of Kutch, लेकिन पूरे समर्पण के लिए it was a moment of pride कि चलो अपनी जमीन अपने आसमान के नीचे हो रही है। There was a lot of hype, everyone was super charged, super excited कच्छ में, और क्योंकि इतनी कम संख्या है और कच्छ में हो रही है, गांधीधाम इज इन कच्छ, तो भाई अपने तो सभी को जाना ही है, गुरु कार्य भी करना है, अटेंड करना है, हो सके उतने अच्छे साधकों को यहाँ तक पहुंचाना भी है। सही। तो with that background, like my mother told me, उनको पता था कि भाव से शायद इतना नहीं जुड़ेगा, क्योंकि समर्पण से ही उतना भाव नहीं था, तो शायद आश्रम किस तरह से लिया गया या उन सब चीजों से नेचुरली उतना लगाव उनको लगा था नहीं होगा, और एक्चुअल में उतना ज्यादा नहीं था। आई एक्सेप्ट दैट। तो शी टोल्ड मी कि यहाँ पे गुरु पूर्णिमा हो रही है, अपने घर के पास ही हो रही है, आश्रम लिया गया है, जो तू शिविर में गया था, ये जो शिविर करती है मेडिटेशन अपना है, तो कच्छ में भी आश्रम लिया गया। कितनी अच्छी बात है। और वहाँ पे गुरुदेव ने गुरु पूर्णिमा हमें दी है, तो उसमें तो हमें तो सभी को अटेंड करना ही चाहिए। कच्छ के साधक ही अगर नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। लाइक शी वाज ऑन पॉइंट। और फिर उन्होंने बताया कि एक बार अपन, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया था, तो आई हैडंट टेकन एनी लीव, और मोस्ट प्रोबेबली एक आध बार लीव मिलती है पूरे साल में, पूरे वर्ष। तो इन 2011 शी टोल्ड मी कि भाई इसमें क्या होगा, देख मुनीरा भी अलग रह रही है, हम लोग भी गांधीधाम है, तू राजकोट है, तो यहाँ पे अगर वो भी गुरु पूर्णिमा करने आएगी, तू भी आ जाएगा, हम सब, तो एक बार एक गैदरिंग भी हमारा हो जाएगा अच्छा सा। तो इन माय माइंड द पिक्चर वाज क्रिएटेड कि एक बहुत अच्छा पिकनिक होगा। रिजॉर्ट में जा रहे हैं। और ठीक है, लाइक भौतिकता चलो कम है, लेकिन सब एक साथ मिलेंगे, बैठेंगे, चलो घर पे मिले, बाहर मिले, आश्रम पे मिले, क्या फर्क पड़ता है। Before that, I was expecting a good family time. तो उस तरह से I agreed to attend the group. Or I never have visited his home before, so we were excited that I will see his home, I will visit his home, and we'll spend some days together. Because after departing from Rajkot, we never got a chance to meet also. So we also never had met for the 1 year. I think she met my parents for the first time when she came to attend the group Purnima in live, in person. So my his mother still says that she became the sadhika first. We connected with the soul first, then she became our daughter-in-law. So I don't see her as a daughter-in-law. I see her as a sadhika. क्या बात, बहुत सुंदर। ये तो आत्मा का रिश्ता बना लिया उन्होंने, लेकिन इसके ऊपर मुझे थोड़ी मस्ती करने को जी करता है और हम लोगों का भी थोड़ा मनोरंजन करते हैं। तो यहाँ पे बहू है, सोचती है हम ध्यान में जाएंगे, सास और ससुर को अपना बना लेंगे, और यहाँ पे सास है जो कहती है क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ, तो वो वाला बात है। और दैवत भाई, आपके लिए तो मैं क्या कहूँ, एवरी इंटेलिजेंट पर्सन मेक्स अ मिस्टेक। जितना बुरा कहना चाहो कह लो, अभी तो अभी तो पार्ट ऑफ द स्टोरी। भणतो भूले एम के भणतो भूले ने तरतो डूबे, बराबर ने। तो भणतो इंटेलिजेंस है, वो भूल जाता है कि शायद यहाँ पे मेरी इंटेलिजेंस काम नहीं चले लगेगी, और तैरने वाला डूब जाता है। लेकिन आत्मीयता और चैतन्य में सब तैर जाता है, ये बात है। और यहाँ पे गुरु की लीला देखो, परमात्मा की कृपा देखो कि आपको जहाँ पे मिलाना था वहां पे मिलाने के लिए मुझे स्वामी जी का वो स्टोरी याद आता है, शिकारी आएगा
जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना खाने मत जाना वरना पछताएगा। फिर क्या हुआ भाई पछता के बताओ? So yes, he took a leave for 3 days for the first time in his residency, and he took a bus from Rajkot to Gandhidham, and I came from Vadodara to Gandhidham early morning. And on the same day, 9 o'clock in the morning, I landed in Gandhidham at 6 o'clock in the morning, and 9 o'clock we left for Kutch ashram for Guru Purnima. So that the days were calculated properly. My father was informed that Very tight immediately schedule. we are not going to stay at home. We are going to ashram only. We were टाइम not keeping मैनेजमेंट भी our बहुत मस्त, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया है। So So yes, those we 2 hour went. drive, that was a 2 hour long drive, and the photograph which you saw in the slide, me wearing the scarf and our family, those were the photographs of that 2 hour drive. क्या बात When है। we left our home and we were about to go to ashram to attend the हाँ Guru हाँ, Purnima. मुझे एक We क्वेश्चन never है। know that the scarf is only to be wear at the time of meditation. सही है। Is this the Swaminarayan temple in Bhuj? Yes, exactly. It's very beautiful temple. I have attended when I went to Kutch ashram. It is one of the most beautiful temples, especially not just inside, but that temple has so many क्या बोले अपने अपने जो शास्त्र हैं रामायण महाभारत उसके डिपिक्शन किए गए हैं स्टेच्यू के रूप में all around the building of the temple. If you go on the ground level, on the top level, you will see those stories as if it is flowing on the wall in front of you. One of the most beautiful temple I have ever visited in Swaminarayan Pant. It is not as huge as so many Bab's temple that we are seeing, but it is one of the best temple that I enjoyed when I visited that, and there is nice how you say Bhojanshala and residence also on the right side of the building, right? Yes. It's a beautiful way. Lord Swaminarayan has done the Pran Pratishtha of the Murti himself in this Mandir, Bhuj temple. Oh yes, that could be the Yes. reason. Could be the Yes. reason. I felt Yes. amazing vibration. That's very true. That's very true. Then it is nice. See, अच्छी मेमोरी रह जाती है। चैतन्य की मेमोरी कभी नहीं भूलती हमसे। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप कितने तकदीर वाले हो, उस माहौल में, उस जगह पे आपकी आत्मा को गुरु के आशीर्वाद मिले, आपकी आत्मा को गुरु का प्रथम गुरु पूर्णिमा का बीज मिला, और वो जो है that is going to change your life as we are going to continue listening to your stories. Amazing story. आप लोगों के स्टोरी में तो एक बहुत अनोखा गुरु कृपा और परमात्मा की कृपा का आनंद महसूस होता है। मैं इतने मस्ती वाले मजाक में मूड में बहुत कम आता हूँ टीआईएस में, लेकिन क्योंकि आपकी एनर्जी जो है उसे मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ। मेरा खुद का कुछ नहीं है यहाँ पे। आई एम एंजॉइंग दिस, रियली मजा आता है। हमारी ऑडियंस को भी आज मजा आ रहा है, सब अच्छी अच्छी कमेंट दे रहे हैं कि ये फंसा। पिकनिक की लालच में स्कार्फ पहन लिए। बोले कि डेविड भाई कितने भोले हो, पिकनिक की लालच में आप भी पहन लिया है भाई। ये अच्छा है, अच्छा है। हम ऐसे ही सबको तो जैसे ना स्वामी जी कहते हैं ना कि मुझे कुत्ते पसंद नहीं है लेकिन गुरु माँ को कुत्ते पसंद है, इसलिए मुझे गुरु माँ के कुत्ते भी प्यारे हैं। स्वामी जी गिव दिस एग्जांपल कि मुझे कुत्ते जरा भी पसंद नहीं, लेकिन गुरु माँ को कुत्ते बहुत प्यारे और मुझे गुरु माँ प्यारी है, इसलिए मुझे गुरु माँ के कुत्ते प्यारे हैं। उस तरह से हो गया। वही तो मुनिराजी का भी हाल है ना बेचारी का। उसे आपसे प्यार था तो उसने आपकी मम्मी से प्यार किया, फिर उसमें मम्मी के गुरु से भी प्यार किया। देखो यस एग्जैक्टली, ये सही है, लेकिन यही जिंदगी जीने का तरीका है। इसी में हमारी खुशी भी है और दूसरों को खुश करने में ही हमें खुशी मिलती है। ये बिल्कुल सही है। टू गिव जॉय इज टू रिसीव जॉय। We are blessed actually. We are fortunate enough to live with the parents even after 18. I think so. संस्कार जो मिलते हैं, ये सबसे बड़े आशीर्वाद our kids are also seeing all these things, so they are also imbibing their properties, their spiritual.
मुझे बहुत And my खुशी होती है। little one is 1.5 year old. She sits in the time of meditation, and she didn't know to speak much, but she start to chant Om and Shri. She knows Yes, Om yes. and Shri. When we अरे do वाह, meditation, we have to आधा sit मंत्र तो हो गया उसका। silently. Yeah, she closes her eyes and starts chanting Om Shri, Om Shri. वेरी नाइस, वेरी नाइस। That's दिस इज good. गुड बिगिनिंग, दिस इज गुड वैल्यूज। ये संस्कार जो है ना, वही हमारे जीवन की सबसे Yes. बड़ी पूंजी और कमाई है। सो आई Yes. एम वेरी वेरी हैप्पी। और आप देख सकते हो कितने क्यूट है दोनों बच्चियां, कितने प्यारे हैं। और ये येलो वाला आपका जो फैमिली पोर्ट्रेट है, वो तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। मुझे इतना प्यारा लगता है ये, इतने इतने सब खुश दिख रहे हैं, देखो कितने सब मजे में है। एवरीबॉडी इज इन देयर ओन मस्ती ये फोटो में। Yes. चारों जने अलग अलग जगह पे देख के मजे कर रहे हाँ, हैं। So तीन we चार have लोग फोन created लेके खड़े होंगे 30 ना सामने। people. पिक्चर, हाँ, यस। वही। अभी ये फोन कैमरा के साथ सबका यही हो रहा है कि 25 लोग सामने फोन लेके खड़े हैं और सब फोटो ले रहे हैं, तो बेचारे देखने वाले तो इधर उधर हो जाएंगे। Yes. बहुत So प्यारा फैमिली है। today, like the youngest member of a family, 1.5 year old daughter, and the eldest is 90-year-old maternal grandmother, जो क्या रंगाबू बात, महाराज के साथ जिए थे और घूमे थे। हाँ, She क्या is there. So like a very big range, 1.5 years to 90 years. Such 4 generations living together and वेरी teaching गुड। values to each other. फिर teaching values, teaching word ही नहीं आता है, values they themselves. वैल्यू तो पास हो जाती है, पता भी नहीं अपने चलता है कि कैसे अंदर आ गया, जैसे गुरु ने हमें दिया है। और बहुत प्यारा फैमिली है। परमात्मा आपके परिवार को इतना ही खुश, तंदुरुस्त और आध्यात्मिकता की ऊंचाई बुलंदों पे ले जाए, ये हमारी प्रार्थना है। और ये हम सबके लिए प्रेरणादायक है। आप दोनों के माँ बाप को मैं बहुत बहुत वंदन करता हूँ बार बार, क्योंकि उनके संस्कार आपके व्यवहार में, आपकी बातों में, आपके जीवन में दिख रहे हैं। और ये हम दिखाना चाहते हैं अपने ऑडियंस को कि हम भी ऐसे अपने माँ बाप को आदर से देखें, प्यार से देखें और ट्रीट करें, तो हमारे जीवन में भी स्वर्ग इसी धरती पे बन सकता है। हम भी अपने गुरु के संस्कारों को अपने जीवन में उतारें, तो हम उस स्वर्ग के आनंद को, खुशी को महसूस कर सकते हैं। बस इतना सिंपल है। लेकिन थोड़ा ओपन माइंड और थोड़ी गंदगी हमें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि संसार में से बहुत सारे कुसंस्कार और स्वार्थ और ईर्ष्या और घृणा जैसी बहुत सारी चीजें हम लेके आते हैं। माइंड गेम प्ले करते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है, स्पेशली गुरु कार्य में आ गए तो ये अगर कम हो जाए तो ये सुख, स्वर्ग भी यहीं पे है और नर्क भी यहीं है। मैं तो ये कहता हूँ ये सुख हमें मिल सकता है। इतना प्यारा परिवार, इतना प्यारा प्रेम जो 4 जनरेशन के बीच में पलता है, अमेजिंग। मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि हमारा समर्पण अमेरिका का जो परिवार है, हमने ऐसा बनाया है जहां पर इस भूमि पर इतनी सारी नेगेटिविटी थी, लेकिन हम सिर्फ लेके आए थे गुरु चैतन्य को। हम ये मान के आए थे कि मैं नर्क में भी जाऊंगा तो वहां पे स्वर्ग बना सकता हूँ, अगर मेरे गुरु मेरे साथ है और मैं मेरे गुरु को संपूर्ण समर्पित हूँ। तो ये परिवार हमारा इतना आत्मीयता भरा बनाया है। और मैं तो कहता हूँ बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। कोई अगर बुरी नजर लगाए तो उसका मुंह काला हो जाएगा और वो बाहर निकल आएगा। इसलिए बुरी नजर मत रखो हमारे ऊपर, हमारी आत्मीयता बढ़ेगी और बढ़ती ही रहेगी। और यही हमें सारे संसार में करना है। समर्पण की आत्मीयता की ध्वजा हमें वसुदैव कुटुंबकम बनाकर दिखाना है। हम सब साथ में रहें, प्यार से रहें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे के साथ सहकार से कार्य करें, क्योंकि ये इतना बड़ा कार्य है, एक व्यक्ति का है ही नहीं। और इसमें मालिकी या उत्तराधिकारी बनना की जरूरत नहीं है, इसमें समर्पण करने की जरूरत, जो है वो भी दे देना है। पाना नहीं है, पकड़ना नहीं है, छोड़ना है। बाय द वे आई हैव गुड न्यूज फॉर यू कि आपका ये जनवरी का पहला सेशन है और मेरा पहला गुरु कार्य से रिटायरमेंट में ये प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि ये ट्रस्टीशिप की मेरी जिम्मेदारी थी। स्वामी जी ने अभी नए ट्रस्टीज अपॉइंट किए हैं और बहुत खूबसूरत साधकों की टीम आई है, बहुत एनर्जेटिक एक्साइटिंग टीम है, बहुत आगे अच्छा होने वाला है समर्पण अमेरिका में। तो आपका परिवार बहुत प्यारा है। एंड अभी आगे कुछ खुशी, कुछ
अच्छे अच्छे न्यूज आ रहे हैं, उसके बारे में हमें बताइए। 2011 में जैसे गुरु पूर्णिमा में हम गए, तो जैसे ही आश्रम में पांव रखा तो वहां पे रजिस्ट्रेशन किया, और फिर वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया कि मेल को इस तरफ जाना है, फीमेल को इस तरफ जाना है। रिस्पेक्टिव बैचेस दे दिए एंड देन वी वर शोन टू आवर रिस्पेक्टिव अरीना कि चलो जाना है। नाउ द थिंग इज दैट आई एम एन इंट्रोवर्टेड, माय फादर इज आल्सो इंट्रोवर्टेड। सही है। दोनों ऐसे, हम दो को साथ रहना है। These all people they moved to the Yeah. different location. Or he didn't know anyone there other than his father. I was practically living in Rajkot. गांधीधाम सेंटर्स तो अटेंड ही उतना नहीं किया था, तो और किसी साधक से कोई परिचय पहचान ही नहीं थी। नहीं। और वहां पे शेड्यूल इस तरह का था, शेड्यूल वाज वेरी हेक्टिक, so we have to hurry, take a bath, and then he was not accustomed to that rough life. I would say tough schedule, very tight schedule, common bath and all that. So and yeah, he felt it like a punishment, that what is this, but I have to roam here and there just to take bath and just to sit for 2 hours. Actually the publicity of the Guru Purnima was very much successful, and 11,000 people attended that Guru Purnima. So we have to stand in queue for having lunch, dinner. So long queues for taking bath and for the food and everything. And as of now, you would have known my background. I was a pampered one, and every facility that was available to me even before I knew that I required it. So like coming from that background and without any mental preparation, and with the expectation of having a good family time. Now, I didn't know the definition of family, what it was, but that was probably the soul family. But I couldn't realize it at that time. So whenever time we used to meet for 2 minutes or 5 minutes, accidentally we used to see each other somewhere. Our lines were crossing, overlapping in the corridors or in something. the exhibition and all. सही है। And there was a very heaviness in his face, and I was could extremely see angry. Angry, very much angry. So what is this? What you have brought me into? Like Swamiji says, तुम क्या करने के लिए लाए थे, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे स्वामीजी के डायलॉग अभी मेरे को कभी ये ध्यान व्यान छोड़ो, मैं कभी आश्रम में पाँव नहीं रखूंगा। And I was alone thinking all sort of things, and I very clearly remembered कि भैया किधर लाके इन लोगों ने रख दिया, और पता नहीं क्या बोल के लेके आए, और क्या करे और क्या करेंगे। And I had left my department, तो भी कैलकुलेशन था, ये 3 दिन मिल गए अभी अगले साल, तो ये 3 दिन यहाँ पे कहाँ पे आ गए। तो वो बातों में एक विचार ये भी आ गया था कि इस बार आ गया तो आ गया, आज के बाद अभी ये आश्रम पे पाँव भी नहीं रखना है मुझे। क्या बात है, इसी के ऊपर एक गाना हो जाए। क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में। देखो मोहब्बत कहाँ से कहाँ ले जाती है, लेकिन उस रास्ते में कहीं गुरु भी मिल जाता है, मोहब्बत का पूरा डायरेक्शन बदल देता है। कहते हैं ना, नजरें बदल गई, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, कश्ती बदल गई तो किनारे बदल गए। तो स्वामी जी कहते हैं ना कि आप दुनिया को देखते हो इसलिए आपको बुराई दिखती है, ये अच्छा नहीं है, ये गलत है, ये सही नहीं है, ये इंसान ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसी है, आपको बुरा दिखता है। लेकिन मुझे तो कोई बुरा नहीं दिखता है, मैं तो सारी दुनिया में घूमता हूँ, मुझे सब सच्चा ही दिखता है। तो आपकी नजर को बदलने वाला, कश्ती को बदलने वाला कोई वहां पे था, जो आपकी आत्मा से इनकी आत्मा को तो जोड़ ही रहा था, लेकिन आपकी दोनों की आत्मा को खुद की आत्मा से भी जोड़ रहा था। वो परमात्मा, वो शिव कृपानंद स्वामी गुरु बन के उस वक्त पे आपके सामने बैठा था राज सिंहासन पर। और हम इतने पामर हैं, हम इतने अज्ञानी हैं कि उसके दरबार में जाकर भी, उसके सामने बैठकर भी उसे पहचान नहीं पाते हैं। इसके लिए भीतर की यात्रा जरूरी है। इंट्रोवर्ट होना एक बात है और इनवर्ट जर्नी शुरू करना दूसरी बात।
समझ रहे हो ना? इंट्रोवर्ट होना या खामोश रहना या अपनी बातें दूसरों से कम शेयर करना एक बात है, लेकिन अपने भीतर उतरना दूसरी बात है। और इसी में आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। तो गुरु ने, क्योंकि आपने पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे होंगे, उसका फल देते गया। आप तैयार थे या नहीं थे, उस वक्त पे आपको तैयार करते गया, आपको दाने डालते गया, क्योंकि उम्र का और समय के स्थिति का भी महत्व रहता है। और जो जो आपसे आगे करवाना था उसके लिए आपको तैयार करते गया। ये मुझे दिखता है आपकी स्टोरी में, कितनी सुंदर Exactly. स्टोरी है। और Exactly. बेटा आने के लिए तैयार हो या नहीं हो, माँ तो खिला ही देती है, चल बेटा खा ले। और Yes. ये सास बहू की जो जोड़ी है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। पिता पुत्र की तो मुझे ऐसे लगा, तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। वैसी बात है, ये लोग तो बोलते ही नहीं है लेकिन मन ही मन गीत गाते रहते हैं। लेकिन सास और बहू की जो जोड़ी है ना, बहुत मजे ला रही है। पूरी ड्रामा में डायरेक्टर तो वो दोनों ही दिख रहे हैं मुझे। एक्चुअली वो गुरु पूर्णिमा के आसपास का वक्त था ना, तो इट वाज मोर लाइक कि मे बी शी वाज न्यू इन द फैमिली, मतलब अभी तक लीगली नॉट मैरिड, लेकिन लाइक आई वाज द ऑड पर्सन आउट, दे ऑल वर वन, वो मेंटल थिंकिंग एंड इन देयर बिलीफ एंड एवरीथिंग। अभी आई वाज द ऑड वन because I was having the gala time. I enjoyed the whole Guru Purnima. I didn't want to meet him also. Matlab, I was on another level that I used to have darshan of Swamiji, whom I have seen in video. So I was very much grateful for that. And in Guru Purnima also, on the day of Guru Purnima also, I had an amazing anubhuti. So हाँ, I think my soul to soul connection was there, and ऐसा हो गया। yes, I had a vision doing this chanting at the time of Guru Pujan. That there is a, I didn't know all this Guru Shakti Avan and Divine Child and ये सब कुछ भी तभी concept पता नहीं था क्योंकि we were new to Samarpan. But I had a vision of a small child that is smiling at me and it is roaming in universe. So I didn't know the meaning of that, but now I reconnect it with that. Maybe that hinted me to attach with inviting or joining the Guru Divine. Shakti. Yeah, So maybe it can be my imagination, but I can I feel that that was Anubhuti नहीं, because there was no, no I was not thinking anything about it. So why that vision came to me? So that's the only explanation to me that was that, hinting to the future life I was going to have. so this is where the difference comes from those yogis or those sadhaks who are practicing to the level where their third eye chakra is open and they have literally reached to the crown chakra. उनको दिखता है, यानी कि ये 360 डिग्री वाला जो विजन है ना, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, तो उनको दिखता है। आप बोलते हो ना, तो जो जागृत है, जो पहुंचा है, उसे दिख जाता है। मैं आपको कहता हूँ कि स्वामी जी से जब मैं 2001 में पहली बार मिला ना, आई वॉज लाइक दिस, शायद स्वामी जी प्रोबेबली इट इज लाइक दिस, दैट्स व्हाई। स्वामी जी नहीं, प्रोबेबली नहीं, यही है, स्वीकार कर, मान जा, मैं तुझे कह रहा हूं कि यही है। तो गुरु उस स्तर पे बात करता है कि जहां पे हमें शंका कुशंका है अज्ञान की वजह से या अल्प ज्ञान की वजह से, गुरु को संपूर्ण ज्ञान है। तो गुरु कहता है तुम मान जा। और जो आपको विजन दे रहा है गुरु पूर्णिमा के दिन, वो गुरु शक्ति आपके जरिए धरती पे आना चाहती है। तो शादी हुई या ना हुई वो तो दूसरी बात है, शादी के लिए संयोग भी तैयार कर रहा है वही गुरु, और आपको मिला भी रहा है परिवार से वही गुरु, और शादी भी करवाएगा वही गुरु। वही गुरु अवतरित होके भी आएगा एक दिन, वो आपको स्वप्न में दिखा रहा है। ये तो दिन के सपने हैं, रात के दिन के सपने नहीं है, ये तो दिन के सपने हैं जो आपको उस 11,000 लोगों के सामने दिखता है। Okay, so those who don't know, I just want to tell the story that Swamiji, while traveling from the Burma-Bhutan border, came across one cave where he ended up staying, and he come across two yogis who looked like 24-year-old, but they were 800 years old yogis or practicing meditation, and they said that our gurus
who are not living on the earth at this time, they are waiting to come on the earth, but they need suitable parents, you see. And we want you to go to the society and find out such young, good, pure souls, and who are ready to become parents. So that is one of the couple that we are talking to, and who was getting that indication. I am repeating again: Sanket, Sanyog, Samarpan, Mukti. That indication, that signal was given through the vision to Muniraji about the baby that is walking, and that baby is no one but the divine Guru soul. Okay, so as a soul, it want to come and enter in their life. So for that, first, according to Indian tradition, they have to get married, and all these things has to complete as a social formality. So many things are happening. I am trying to show you the picture, and I'm trying to show you the subtle part of the Guru's play, Guru's Leela that is happening in their life. And understand, if this can happen in their life, this happens in my life, then it can happen in anybody's life. And this is how we have to connect our intellect, our sensory perception, and our spiritual understanding of the life, of the reality. This combined together is the happy, soulful living. This combined together will be leading us not into attachment, not into grievances or unhappiness, but this will bring us into the pure joy. Okay, that is 24/7. You can experience that, and you don't have to worry about little things of the life. Everybody go through the problem, everybody go through the situation as they are also going through, but this experience is very, very important, because that becomes a valuable sanskar, what we call one of the 16 different sanskar in a woman's life is to conceive with the intention to become a mother of a divine child, of a divine soul. This is very, very powerful. Garbha Dharana Sanskar, or the divine value of inviting the divine souls. And that is what we call Guru Shakti Avahan in the Samarpan family. Okay, so this is very powerful thing, and this happened through the vision on the Guru Purnima is amazing. आप आगे बढ़ाइए अभी. So at that point of time during Guru Purnima or maybe afterwards, I was the one who was pitied in the family spiritually. स्वामीजी कहानी कहते हैं कि जैसे 4 घोड़ों की गाड़ी है, एक घोड़ा है वो बदमाश है, उसे नहीं जाना, लेकिन बाकी 3 दौड़ते तो भी दौड़ के पहुंच जाते मंजिल पर. तो everyone was totally convinced कि भाई he is the burdensome, he doesn't want to progress spiritually, but because of all the family members progressing, his progress is also happening as a byproduct. So those were the days when I was considered to be pitiable. सही है. और देखो आपको कितनी बड़ी सजा मिली. आप बोलते हैं आगे मैं कभी इस आश्रम में पाँव नहीं रखूंगा, और यहाँ 11,000 लोग कह रहे हैं अपनी जमीन अपनी आसमान बनाओ. Guru Purnima. Irony of the situation, he is now the trustee of that very ashram. That's it. ये बड़ी सजा है. यही सजा थी और यही आशीर्वाद भी था. Blessing in disguise. सही है. तो ये गुरु की लीला है भाई, ये इसमें मजा है. वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत अच्छी बातें आ रही है. आगे क्या हो रहा है देखो. तो गुरु पूर्णिमा जिसमें इतना मैं बोर हुआ था एक तरह से अगर कह सके तो, ऑनेस्टली आई यूज दिस वर्ड बिकॉज आई थिंक देयर इज नो फिल्टर टुडे. तो आगे इवन गुरु कृपा में बैक टू बैक 3, 4, 5 बहुत सारी गुरु पूर्णिमा मैनेज करने का भी अवसर मिला, जो शायद कल बात करेंगे. और एक वक्त पे ऐसे माना गया था कि समर्पण में अगर गुरु पूर्णिमा मैनेज करनी है तो इसको पूछो. क्या बात है. तो लाइक टुडे व्हेन वी रिफ्लेक्ट बैक, तो कहाँ थे और कहाँ आ गए. स्वामी जी, आई थिंक ही कैन यूज माय एग्जांपल एज द वर्स्ट केस सिनेरियो. And it's a big thing for me, even if I'm being used as the example for the worst case scenario. Yes. तो यही तो मजे की बात है. Yes, come a long way. हाँ, हम 0 थे. ये सुन लो जरा बात. हम 0 थे, गुरु ने
अपने दरबार में बुला के हीरो बना दिया। हम जीरो थे, गुरु ने अपने दरबार में बुला के हीरो बना दिया। हम साधक थे, हम समर्पित होके फिर से हीरो से जीरो बनना चाहते हैं। हम साधक हैं, समर्पित होके जो कुछ भी है अपने नेक्स्ट जनरेशन के साधक को देकर फिर से जीरो होंगे, तभी मुक्ति का मार्ग खुलेगा, तभी मोक्ष का दरवाजा खुलेगा। ये हमारी साधना है, ये हमारा प्रेम है, और इसी तरीके से संसार चलते आया है। परमात्मा इसी तरीके से चलाते आया है। देखो, जो प्राणी है, जो पशु है, जो जीरो है, उनके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाथी को मण दे देता है, कीड़ी को कण दे देता है, खाने की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी है, उसको चिंता है, मैं कल क्या कमाऊंगा, कैसे खाऊंगा, कैसे लोगों को इम्प्रेस करूंगा। ये बात है। तो हम हीरो बनना चाहते हैं, इसलिए हम दुखी है। हम जीरो बन सकते हैं, तो फिर वो जिसने हमें बनाया है वो हमारी फिक्र करेगा। जैसे आप लोगों को मिलाता भी है, दिलाता भी है, हंसाता भी है, रुलाता भी है। ये परमात्मा की, गुरु की लीला है। तो इसलिए आत्मा बनो, एंजॉय करो, बहुत मजा आएगा। सही है ना? Question. So what is the most interesting अनुभूति you had that you would never forget? आप एक सुंदर अनुभूति की एक बात कर दो अभी। हाँ, वैसे तो अनुभूति तो स्वामी जी जैसे कहते हैं एक साधक एक बुक लिख सकता है, बहुत सारी हुई है। I will tell the most interesting one that had affected my life the most, कि गुरुकार्य और उसकी तो सब बातें करेंगे, but after joining and doing Guru Purnima and after years of joining, I got to know the concept of Guru Shakti Avan. So we enroll ourselves in that process, and I conceived. And at that time, I was by destiny, I would say that my baby would get the blessing that way. That by destiny, I was appointed as a Adhyaksh for Prachar. So I have conceived for 12 weeks. 12 weeks pregnancy was there, and our Adhyaksh, our ashram Adhyaksh was Dhaivat Mehta at that time. So Swamiji was at Sindhavadar ashram, Gurudev, and Swamiji called upon Jignesh Bhai to discuss about Samarpan ashram Kutch. We got the news that Jignesh Bhai is going to meet Swamiji. So we, as a Prachar head, I submitted my portfolio and the Gurukarya, whatever is done under my head. So I handed him the file, and next morning he was going to have the meeting. Next morning he was leaving for ashram. Then 12 o'clock at night, midnight, I got a call from him that Swamiji has also asked to all Adhyaksh that was the time where committee was made, and there was one chairman for whole ashram, and under him there were 5 committee departments that would take the responsibility of different sections. So I was to manage the Prachar committee. So I was Adhyaksh of Prachar. So we 5 Adhyaksh and Jignesh Bhai, we 6 were called by Swamiji. Swamiji said that you take all heads also with you. So Jignesh Bhai and no one knew about my pregnancy, because that is a process that we don't have to declare to anyone till 4 months are completed. Yeah. So they didn't knew that I was pregnant. So I was very excited. Okay, my baby will get the blessings of Swamiji, and like that we went to Sindhavadar ashram by car. So our meeting was in morning 10 o'clock or 11 o'clock. We went there, and there was Swamiji's days were full, very hectic, and back-to-back meetings were there. So we reached ashram by 9:30 or so, but we were to wait a whole day. We waited for the whole day, and lastly we were the last ones to meet Swamiji. So we spent a whole day at ashram, and 5:30 p.m. There is a Gulab Tegri in Sindhavadar ashram where you have to
some steps are there, and you have to Yes. go there. So we went there, and the sitting arrangement was such that Swamiji was sitting just opposite to me, and Swamiji took 3 hours. For 3 hours, there is very less discussion about Samarpan Ashram Kutch. Swamiji, whole of the time, we were laughing. We were laughing in such that he made us relaxed, and like he was sending the vibrations through, make all of us happy. So everyone in the ashram, even at Guru Shakti Dham, that is very far from Gulab Tekri, they also could hear our laughing. So it was on another level for 3 hours. And after that, at the time of leaving, Swamiji saw me and told me that Dhyan se jana. So he knew, Swamiji knew that I am pregnant. No one other knew. And Jignesh Bhai thought that Swamiji मुझे कहा कि ध्यान से चलाना देखो. Like, so I was, that was very sweet. I could feel that here Swamiji knows that I know, and everyone is having their own version. So I was happy. So after that, in December, we were called for a meeting. So Swamiji thought that, okay, I have given her the vibrations. Okay, so he was free. But we don't know what Paramatma is trying to do. So after 2 days only, there is a Kisan Vikas Shibir in Amreli, in Saurashtra only. So 12 December was the date. So 3 days workshop was there, 9, 10, 11. Yeah. So after on 6th December we went to Sindhavadar Ashram, and we came back on the same night. So Dhaivat was going to attend that Amreli Mahashibir because Ashwin Bhai Kodyatar, and that is our Paschim Bharat Prabandhak right now. So we just managed a Gandhidham Darshan Shibir, and Swamiji made a good praise of that. That their management, Kutch management is good. So they asked him to help and invite for the Shibir also for Amreli. So he was going there alone. Then we discussed it that, okay, why not I also join him? He's going there alone, and we can go together. And even I am pregnant, so in Shibir, my baby can also get the vibrations. And it's good to have good, because we are advised to read good things, do good things, attend good satsang gathering. So this is like a soul satsang. So I was also excited to attend. So we both went together at Amreli. We went by car, and we went there. And there was a first day of the Shibir. There is evening time was there. 6 o'clock Shibir was going to start, and we all were sitting in audience. I was sitting in audience, and we have not informed Swamiji because we had Swamiji's contact number, but we didn't use it for personal reasons, or only when we used to communicate for the means of Gurukarya only. We knew that what level he is working. We cannot use his time for personal things. Yeah. So we didn't inform him that we are going there. But there was a time where we know there is an announcement that कुछ क्षणों में स्वामी जी पधार रहे हैं, और there is a chanting by Guruma that starts to play. Dhun starts to play, and the Dhun was playing in the background, and Swamiji has arrived in the green room, and just before I could see, the seconds before I could see Swamiji on stage, I got a message from Gurudev that why do you have come here? तुम यहाँ पर क्यों आए हैं? So I was shocked that how did Swamiji know that I have come here? Okay, फिर मैंने सोचा वो तो परमात्मा है, सब जानते ही, अंतर्यामी है. But I told him कि okay, I am pregnant and all, तो बेबी को अच्छा वातावरण मिलेगा, इसलिए स्वामी जी आई थी. मैंने सोचा, और गुरु कृपा में कुछ तकलीफ नहीं है, सब कुछ सही है. Then स्वामी जी just replied me that तुझे तकलीफ इसीलिए नहीं हुई है क्योंकि मुझे हुई है. I was totally speechless, and I felt like crying.
what I've done और स्वामी जी किस लेवल पे प्रोटेक्शन देते हैं और उसी के within seconds स्वामी जी came on stage and he delivered a pravachan. Very beautiful. And then Swamiji told me that he knew that after Amreli, he was going to come to Kutch Ashram. And Kutch Ashram, there was a program, Khat Murat, and there is a Samarpan Nagar, so plot allocation program was going to be held. And because I was a part of committee and no one knew that I am pregnant, so I was actively managing that event. I was going to do anchoring in that program. But Swamiji said me straight no, that यहाँ पर तो आ गई है, अभी कच्छ में मत आना. Like he wanted, he knew that the baby need a protection. That is very sensitive period. So very much speculations were made because we both were very active part of that event and we both were absent in that event. And we couldn't tell the reason. And we because couldn't tell Guru them. Shakti Avan was like not to be discussed in Right, public. So the Yeah. people thought suddenly what happened to this couple? Did they have any bad experience or they were speculating? Why suddenly they are Yeah. not getting involved and not even replying or telling? Yeah, someone why was they- telling that this couple have misbehaved with Swamiji. So Swamiji had said them to, because Swamiji said that you don't have to be in that committee also. So I resigned from committee because I was the head of Prachar. So Swamiji said that it is not good to have chitt of people on you on this time. So Swamiji made me resign. And Swamiji said in the meeting that she will not work. I had talked with her, and you take her husband in the committee. Instead of her, you take him. And like we were in a fix, like the head of the committee chairman, Jigneshji, like he was a very good friend and he continuously took our support in all of the activities. They're a very good team for Gurukarya. And now simply when he's asking what happened, we like can't tell him the reality also. And like he was speculating what happened. Tell me whatever is there, I will remediate it, I will correct it. He even told us that if you have any like arguments or any issues with Swamiji, then also he was ready to mediate because he didn't want to lose us. Because my performance was above the par in that Yes. committee. So he was not ready to leave me. He's star player. So Yes. he tried to convince me to get me back, but we couldn't do And he- anything about it. Because knew Guru that- Agya was there. I also didn't want to leave. I want to work till the end. But Swamiji's Agya is everything for me. So Yes, I yes. left it then and there only. So Very beautiful. Very Very beautiful. difficult explaining him that we don't have any problem, but we can't like she doesn't have any problem as such. She had to convince, but she can't continue. And Ashwin Bhai was like Amreli, we were coming from Amreli to Gandhidham by car. So Ashwin Bhai was going to come Kutch. So he accompanied us in car. He came to our house and he left stayed at the from house. our house to ashram with our parents and we were together at home only. He was And then at ashram he was searching for us. कि यार धैवत भाई मुनिरा की गाड़ी जो आने वाली थी पीछे क्या हुआ? तो नहीं आया तो क्यों नहीं आया? So like it was a So, very funny situation this also. is- Swamiji has created a mystery. And And yes, we were and I- also listening to rumors like we did Gurukarya in the exhibition on day one or the day above, before the Shivir, I don't recall. And Swamiji, like we were explaining, we gave during lunch time, yeah. So the volunteers, because the flow of audience was coming, so we relieved the volunteers for their lunch. And afterwards, when the volunteers of Saurashtra came, we handed the exhibition over to them, and then we went for other Gurukarya also. So afterwards, after those volunteers came, I think probably Swamiji came for around in evening or so. yes. So some people saw us in the afternoon explaining the exhibition. So people even correlated that in exhibition, maybe these people misbehaved with Swamiji, or maybe in exhibition they like said something to Swamiji probably that angered Swamiji,
And Swamiji immediately stripped them of all their ranks, all the Gurukarya, and now suddenly they are nowhere to be seen. Even in Kutch, if they can come to Amreli and do the exhibition volunteer Gurukarya, and why suddenly after a few days they are not even doing their duty of the Kutch event? So there are lots of speculation going on, and we were getting rumors from everywhere, and We couldn't do anything about it. and we enjoyed all those rumors. Yes. Like we enjoyed people's creativity. To what lengths can people? But I Not got only to know that why Swamiji was so much protective about it, because just after that, 4 weeks after that, 16 weeks, we have to do 3D, 4D scan of baby. How is baby is not having any anomalies in it. That is a routine screening part. yes, I don't have any complications or as such. So in Gandhidham, 3D, 4D was not available at that time. So we had to go Ahmedabad. So I went Ahmedabad, and the doctor was doctor inserted his probe, and I could see the look on his face. He was just so freaked out, so shocked. I could see that something is wrong. So then the doctor just immediately he took out the probe and he called my doctor that the door to baby's birth is open. At the 16 week is very early time. We cannot do a delivery at 16 weeks. Baby is not survivable age. And he called my doctor. My doctor was on vacation. She was not Wow. available. So yes, somehow I took the medicine just to relax my uterus, so the baby can be protected. And he advised us that you can get admitted here. But we chose not to get admitted, and we contacted Swamiji, and Swamiji said take rest. So we went to our home, and I rested for 1 week without my doctor, and after that I visited my doctor, and she do the procedure, and that can held the pregnancy for more time. And 28 weeks, my 28 weeks were complete. There was the first day of Navratri. The first day of Navratri, Swamiji has given the date for my Srimad Garb Sanskar, that are done on 8th month generally, but Swamiji has given me the date of 7th month only. So okay, Yes. we follow the Swamiji's command. So we did the ritual of Garb Sanskar on first Gudi Padwa, and on 8th day of Navratri, my water broke, and Oh. my baby was delivered. 28 weeks old. It is very premature, very underweight, and we went to Ahmedabad. My baby was born. She was the smallest one. She was 2.5 months before my date of delivery, Uh-oh. premature. And many babies were admitted at the same time, that were 30 weeks old, 32 weeks old. But with the God grace, my baby was born so strong. At 28 weeks, she didn't need any injection. She didn't need any oxygen. She survived on her own with the room air Wow. that we are This is breathing. amazing. Yeah, and all other babies beyond her age were given surfactant injection to help the lung to develop. तभी फेफड़े इतने develop नहीं होते हैं premature babies में, तो उनको सांस लेने के लिए surfactant सब देना पड़ता है, फिर वो complication, infection वो सब शुरू हो सकते हैं. But she didn't need that injection, and Swamiji also said that सब अच्छा सोचो, सब अच्छा ही होगा. Maybe the baby had brought her along with her the past karmas to get rid of just immediately after birth. But I personally feel that this all was because of Guru's grace only. Otherwise, that was a very difficult time, and yeah, I myself has also not seen that premature baby. Now the prematurity has become common, but 6 years ago, 28 weeks baby to be delivered, and without any support, life support, she was surviving on her own, and सब smoothly Guru's grace से हो गया. So that is my most special अनुभूति. And the last icing on the top, that when the pediatrician they discharged her, afterwards we came to know that she had spent exactly 45 days in ICU. ICU. She was 45 days. She was admitted on 8th Atham,
And on Buddha Purnima, she was was Yeah, discharged on Buddha Purnima. 45 days she spent ekant mein. Yeah. तो उन्होंने बुद्ध जो पूर्णिमा कर्मों के Swamiji हिसाब किताब grace. पूरे कर रही होगी वो। And then she came. Even a pediatrician in Gandhidham are amazed कि you are not given the surfactant. मुझे बोला कि नहीं आपको पता नहीं होगा, दिया तो होगा ही, 28 weeks पे तो रूल ही है, देना ही पड़ता है। मैंने बोला नहीं भाई, मेरा बेबी है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इतना तो जानूंगी ना कि उसको सर्फेक्टेंट दिया है कि नहीं, उसके प्रिस्क्रिप्शन में भी कहीं नहीं है। तो this was like अनुभूति, and this was the reason Swamiji was trying to hint me. I think that I couldn't get, obviously सही because she अपने स्तर पर है, और that way it also try to give me energy and also सही avoid the public eye, because after that the baby was very much in the public eye. That may be the reason. I think the sensitive period of pregnancy, you have to protect yourself and baby from. So the left-sided photograph, the above one is of the Shrimant, day 1 of Navratri, and below that is the photo of the elder daughter. Yeah, that is, we cannot tell her by seeing that she was born 28 weeks. No. Yeah. So that is Mala, Yes, Mala. Her name is Mala, given by Swamiji. and the other one And is she is the lucky one because due to Mala, in future, going according to the timeline, Swamiji actually visited our house. क्या बात है, Because Very of nice. her, everybody at the house got a darshan. एकदम एकदम पापा की बेटी लगती है ये। Yes. बहुत खूबसूरत, Yeah, बहुत in खूबसूरत। nature wise also, she is on Dhaivat. She is the calmer one. She loves to read books, and she's introvert. She can spend a day alone. She क्या has बात no. है, Yeah. She is artist. She created this Artist, card अरे वाह। 2 years ago और or something. And और we let her दूसरा explore her creative side also. सेकंड वन मम्मी पे गई है, उसका नाम क्या है? Yes, she is exactly like me. Naughty one, sporty, dominating, outroverted. तो उसका नाम क्या है? Mitali. She is Mitali. मिताली। अरे वाह, बहुत सुंदर नाम है, माला और मिताली। M&M। M&Ms. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो ये तो मुनीरा, माला और मिताली सब ट्रिपल M हो गए आपके घर में, दैवत Yes. भाई। Yes. बहुत बहुत They can सुंदर। use one same gold pendant written M. They can use We have one interchangeably. pendant. We keep it changing. वेरी नाइस, It has वेरी been नाइस। gifted by one of the relative, and they said all three of you can use it. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं कुछ चीजें अपने ऑडियंस को कहना चाहता हूँ इस अनुभूति से। So many times Guru says or guides from one level of energy, again in indicative language, not in the direct language, logical word that you and I want to hear. Guru is not here to please you with the sugar-coated words. Guru is here to give you what is right for you, what is needed in your spiritual progress. And it may come not just from physical body of Shiv Krupanand Swami, but from another sadhak also. Remember that through this kind of discourse or program also, or Anubhuti also. So there is something somewhere that is going on from one direction to another, but it reaches where it's supposed to reach. That is called Sanket. Okay. When Muniraji went to that program in Amreli, Swamiji, before just going on the stage, calling her, is showing you that in so many thousands of people, if Swamiji has the attention to experience the energy of suffering or problem of negative attention on one sadhika in thousands of people, that is a very different level of attainment or siddhi. Understand this, okay? This does not come with just knowing the medical science like both of these doctor knows. It is beyond the medical science understanding. How come me being a doctor is failing to understand what this person
who is not at all a medical professional, is able to understand and feel and guide me. Here, this is what I want you to say, why spirituality is higher and above everything. Guru is telling her before going to the stage, you might be good, you might be feeling right, but it is because somebody is putting you in his umbrella. Somebody is protecting you. And you are not feeling the pain, or you are not suffering anything, because I am suffering. So when a pregnant mother goes into the public place, go through the adversity and take the physical, mental, emotional stress, that also affect the baby inside. It is not about just negative attention or this or that. That is a secondary thing. Because कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना, छोड़ दो उसको. Apart from the people, we have to look at certain things, what we are carrying. And this is what I have been telling the parents of those who were devoted and who became volunteer for Guru Avahan. They are not capable to understand, they are not sincerely taking the guidance of Swamiji's words. They think that we are surrendered and we are doing this, but Guru's indication, Guru's guidance is from different point of view. And we have to, unless and until we don't match the frequency of our soul's energy, we will fail to understand. And here the role is more important of a mother than the father, because father just planted the seed and his job is over, but mother has to nurture that seed. So that role is very, very, very important. And that is where our logic or our knowledge of medical science is not enough. Protecting that baby infant inside, okay, is much delicate thing when you are bringing such a sensitive energy. Here we are not understanding that this is not an ordinary guest who came in our life. This is amantrit guest. Okay, this is not uninvited guest. Atithi nahi hai, ye amantrit mehman hai. That needs special attention. उसको राजा की तरह, रानी की तरह ट्रीटमेंट देना पड़ता है, क्योंकि वो परमात्मा की, गुरुओं की शक्ति है. और मैं आपको आज इस सोल सत्संग के मंच से कह रहा हूं, ये जो आत्माएं आ रही है ना, उनको भौतिकता का कुछ लेना देना नहीं है. यानी कि आप उसके साथ खेलोगे, उसके साथ बात करोगे और आईफोन थमा दोगे, फोन थमा दोगे, वीडियो दिखा दोगे, उससे वो शांत होने वाला नहीं है. उसकी तो एनर्जी ही अलग है, उसका तो चैतन्य ही अलग है, उसका तो मकसद ही अलग है. सो समटाइम्स आप स्वामी जी से बात करो ना, तो कभी कभी लगता है कि स्वामी जी तो बहुत बूढ़े इंसान की तरह बात करते हैं, क्योंकि 800 साल पुरानी आत्मा है, उसका विजन, उसका फोकस अलग है. अभी स्वामी जी ने जनवरी में कहा, 1 जनवरी स्पीच पे, गुरु आचार्य नहीं है, आप उसके आचरण को मत देखो, आज उसके व्यवहार को मत देखो, गुरु क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या कर रहा है. उसकी शक्ति, उसके चैतन्य से मैच होने की जरूरत है. बहुत से लोग फिर उल्टा सीधा समझ लेते हैं और मिसकंसेप्शन हो जाता है. तो गुरु प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसको उस शक्ति को प्रोटेक्ट करना है. व्यक्ति के साथ कुछ लेना देना नहीं है. और साधक अगर ऐसी घोषित करते हैं कि इन्होंने गलत किया इसलिए उसको रिजाइन करवा दिया या उसको रिजाइन करना पड़ा, ये भी हमारी बेवकूफी है ना. ये भी हमारी बेवकूफी है ना, कि हम बिना सत्य को जाने, बिना परिस्थिति को समझे किसी को जज करते हैं. We should not judge any sadhak or non-sadhak in the life, because we don't know what that person is going through in that situation. Okay, so because that also builds the karma and that also prevents us from our spiritual progress. So couple of things that we need to understand: we are not in a entertainment industry to entertain others with gossip and rumors and he did this, he did that, accusing each other. We are in the joyful journey of our soul.
उसमें हमें खुद को भी सहन करना पड़ता है, दूसरों को भी समझना पड़ता है, और एक दूसरे का सहारा बनना पड़ता है, एक दूसरे को साथ देना पड़ता है। कहाँ मैं कमजोर हूँ वहां दूसरा साथी मुझे साथ देगा, जहां वो कमजोर है मैं साथ दूंगी। These two souls have very beautiful journey of soul. They are becoming such a pure instrument in bringing the Guru energy and doing the Gurukarya on this earth by the grace of Guru, because they are coming with the lot of good karmas, lot of blessings, lot of wealth of punya. That is why they are instrumental in this process. गुरु एनर्जी अगर आई है तो उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, गुरु एनर्जी अगर आई है तो उसको सुरक्षा देना पड़ेगा। I have met parents in America who became the instrument of bringing the Guru energy. The parents don't like me because I am talking always straightforward, not sugar-coated things, straightforward, the way Swamiji talks or the way I am always talking. They don't like me. But those energy of the Guru in that child, they love me because they understand the vibration. They come and get trapped into my aura. They come and want to play with me. They hug me. They play with me. They talk to me. I have witnessed that. Quite unfortunate thing that the parents are unable to maintain that spiritual level because of the material, mindful, game playing attitude. Let us understand this is the energy. This is the Guru Chaitanya. This is the divine energy that we have been gifted by the grace of Shiv Kripanand Swamiji. If he does not come in our life, we don't even understand what we are handling and what we are asking for. So मैं बहुत सिंसियरली प्रार्थना करता हूँ उन माँ बाप को जो चाहते हैं या बन चुके हैं ऐसे पेरेंट्स, कि अगर आपकी आध्यात्मिक स्थिति उस समर्पण के लिए तैयार नहीं है ना, तो कृपया मुसीबत मत झेलिए, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा स्वामी जी को तकलीफ होती है, और अभी जीवंत है शरीर में स्वामी जी, बहुत तकलीफ होती है। गुरु कार्य में भी मैं अपना खुद कार्य कर रहा हूँ। आई टोल्ड स्वामी जी आई डोंट नीड पोजीशन, बिलीव मी। 2001 व्हेन आई मेट स्वामी जी, आई टोल्ड स्वामी जी मुझे पोजीशन नहीं चाहिए, मैं विदाउट पोजीशन कार्य करूंगा। 16 साल के बाद जब मेरा कर्म पूरा करने का वक्त आया, गुरु दक्षिणा देने का वक्त आया, 16 साल के बाद गुरुदेव ने मुझे पोजीशन दी, और 7 साल में जो करना था मैंने कहा मेरा टाइम है 7 इयर्स, जो गुरु की दक्षिणा देके ऋण पूरा करना था मैंने कर दिया। लेकिन गुरु की चेतना का अपमान होता है, गुरु की शक्ति का अपमान होता है, तो बहुत दुख होता है। मुझे नहीं, मेरे गुरु की आत्मा को, कि इन बच्चों को मैंने चेतना दी, इन बच्चों को मैंने आशीर्वाद दिए, ये क्यों अंदर अंदर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समर्पण एंड अदर पाथ ऑफ द मेडिटेशन और रिलीजियस पाथ? नो, वी आर यूनिक। इसको आगे 800 इयर्स तक ले जाना है। माइंडसेट अच्छा बनाओ, भावना अच्छी रखो, एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ, उसको जो करना है करने दो। हम माध्यम है, उसने बोला ये करो, कर दिया, उसने बोला उठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये बहुत जरूरी है। और थोड़ा समर्पण आएगा ना, तो स्वामी जी के दिल में क्या चल रहा है, स्वामी जी की आत्मा क्या कहना चाहती है, अंदर से सुनाई देगा। बाहर शब्दों में भी कोई पूछने की, समझने की, सुनने की जरूरत नहीं है। बाकी दुनिया बड़ी क्रूर है, सदियों से अधर्म के मार्ग पे चलती आई है, और स्वामी जी ने भी बार बार कहा है कि मैं गंगा की तरह हूँ, हर तरह का अच्छा बुरा, पवित्र अपवित्र पानी आएगा, मुझे सबको स्वीकार करना पड़ता है। तो आप गंगा के घाट पे पॉजिटिव आत्माओं के साथ रहो ना। ये बात, ये संदेश आज के लिए बहुत उचित था, जरूरी था, इसलिए इस अनुभव के माध्यम से गुरु को कितना कष्ट होता है ये समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ। गुरु को कष्ट हो रहा है, जो ड्रामा चल रहा है ना अभी संसार में, समर्पण परिवार में, उससे गुरु को कष्ट हो रहा है। और गुरु को कष्ट होता है तो गुरु की आत्मा के साथ जुड़े हुए लोगों को भी कष्ट होता है। गुरु रो नहीं सकता, गुरु बोल नहीं सकता,
गुरु कंप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन गुरु के बच्चों को भी उतना ही कष्ट होता है जैसे एक बेटी को प्रेगनेंसी में कष्ट होता है तो गुरु कहता है कि तू यहाँ क्यों आई। वैसे ही एक गुरु को कष्ट होता है तो हजारों मील दूर उसके आत्मपुत्र को भी कष्ट होता है, उसको रोना पड़ता है, शब्दों में समझाना पड़ता है। इसलिए मैंने गुरु के सामने कंप्लेन करके कहा नवंबर रिट्रीट में, मंगल मूर्ति खामोश रहेगी, बोलेगी नहीं, लेकिन किसी न किसी को बोलना पड़ेगा गुरु के चैतन्य को समझाने के लिए। वो कार्य आप और मैं करेंगे, स्वामी जी के आत्मपुत्र, आत्मपुत्री, आत्म संतान। और ये धरोहर 800 साल तक चलती रहेगी, क्योंकि वो आत्माएं उतर रही है। उन आत्माओं को हमें यह ज्ञान पहुंचाना है जीवंत रूप में। कृपया समझिए, कृपया इस शक्ति का आदर कीजिए, वरना इतने सालों की 800 सालों की मेहनत और तपस्या डुबाने के लिए हम बेवकूफ माध्यम न बने। कृपया प्लीज समझिए इसको। जय बाबा स्वामी। सॉरी मुनीरा जी, दैवत भाई, मैं थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे ही भाई बहन नहीं समझ पा रहे हैं, और कुछ चीजें ऐसी है गुरु को भी बहुत बुरा लगता है कि मैं क्यों अभी बोलूं, मैं क्यों अभी इसमें इंटरफियर हूं। और गुरु के आजू बाजू के लोगों को भी समझने की बहुत जरूरत है कि हम किस तरह की ऊर्जा को प्रवाहित कर रहे हैं और किस तरह की ऊर्जा लेकर गुरु को कष्ट दे रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। What is the next part? आई थिंक अभी टाइम आप देख लीजिए। आज की आपका तो कितना टाइम हो गया? अरे बाप रे, 12 आप लोग, आपका तो 12 बज गया। चलो No, we are very much fine. we are very much fine, but नहीं, our लेकिन team needs to take a rest. They कल are का constantly- प्रोग्राम भी है, कल का प्रोग्राम भी है, और कल हम बहुत सारी चीजें लाएंगे। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि हम एंड की ओर जा रहे हैं, और ये हो गया। एक ब्यूटीफुल पॉइंट है, एक वीडियो है जो सोनल जी के हाथ में मैं दे रहा हूँ, एंड दे आर गोइंग टू शेयर विथ यू रेस्ट ऑफ द पार्ट। ओके सोनल जी, आ जाइए। थैंक यू वेरी मच मुनीरा जी, दैवत भाई, बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी में। मुझे गाने का भी मौका मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। हम हंसते हैं, खेलते हैं, रोते हैं, लेकिन हम आत्मा से सदैव एक है अपने गुरुदेव के साथ और समग्र समर्पण परिवार के साथ। ये आत्मीयता का मार्ग है। हम जो कुछ भी महसूस करते हैं, इसमें हमारे गुरु का चैतन्य बहता है, और हम प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दे, सद्भावना दे, समभावना दे, कि हम एक दूसरे में समानता से देख सके, और क्षमा भावना दे। ये मेरी प्रार्थना है, और गुरु के प्रति सदैव हमारे हृदय में, आत्मा में समर्पण रहे। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। फिर मिलेंगे हम लोग कल इसी समय पर, इसी समय पर, इसी बात। Yes. thank you so much for having us. जय बाबा स्वामी। Just a couple of minutes. I know it is really late for you, but we'll just end the session in 2 minutes, maybe. Sure. So just want to share this with our audience as usual, that if you liked the session so far, this is just part of it. This is probably the beginning of it, what led to something really, really extraordinary, which will be shared tomorrow. So this was the part 1. So if you like such stories, please share with us any sadhaks you know that have been in proximity of Swamiji and have received the Guru Chaitanya and have become what they have, just like Dr. Dhaivat ji and Dr. Muniraji. So please pass on their information to us, and then we will bring them here in the session and inspire others just like that. So moving on to the next part, which is a little thank you from today to celebrate the journey of a blessed soul and blessed couple, to show what they have done, achieved in the first part of their lives, and sharing that part with this gratitude towards you both. So let's play this video.
Thank you. so Thank much. you once. Yes, please go ahead. You were saying something. Thank you so much for this wonderful surprise. Yes, thank you to you for inspiring so much, and so much energy was flowing today in the session. The whole time we were on Sahasrar, and it was amazing how the session went through, and time just we didn't have an account of time during the whole thing. So thank you once again. And we'll do the last part and invite Swamiji for blessings and end the session with that note to go to part 2 tomorrow. आप सबको खूब खूब आशीर्वाद। आप सबको खूब खूब आशीर्वाद। Stop share and we can stop live and